स्लोअर वन था, उंगलियां घुमाई बॉल के ऊपर, जिस तरह हार्ड बॉल में सीम के ऊपर से उंगलियां फेरी जाती हैं। मोहम्मद समी का बड़ा किरदार नज़र आता है मलिर मलंग्स की अच्छी परफॉर्मेंस में। उनके साथ ड्रिल्स भी करते रहते हैं, बॉलर से बात भी करते रहते हैं। और उनके साथ वलीद भी खड़े थे, तौसीफ अहमद के साहबजादे। अब तक उन्हें मौका नहीं मिला इस मैच में, इस इवेंट में। टीम अच्छी होगी इस वजह से अब तक मैनेजमेंट उनकी जानिब नहीं देख पाई। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर माजिद गोली की, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, डक आउट नहीं कर पाए उसको। 4 ओवर के बाद जी 82 पे 3। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, रजा भी अब अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक इलियास ने अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए, जब उनके टॉप ऑर्डर बहादुर अली, तैमूर मिर्जा आउट हो गए थे, ऐसे में रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, एहसन चिट्टा की भी विकेट इब्तिदाई 3 ओवर्स में गिर गई थी। उसके बाद अच्छा सेटल किया है इलियास जानी और रजा ने अपने आप को क्रीज पर, और 10 पे 30 और 8 पे 20 रन बना चुके हैं इलियास और रजा।
12 रन ऑलरेडी दे चुके हैं छोटा अली 4 गेंदों पर। और रजा, वेरी वेल प्लेड रजा, परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, जबरदस्त किस्म का ड्राइव, 4 रन हासिल किए यहां रजा ने। टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव थी ये रजा की जानिब से, हालांकि अच्छा वाइड यॉर्कर बॉल था, उसको भी कमाल अंदाज में आप देखिए कितना जल्दी लपके हैं बॉल की तरफ, फौरन जज किया लेंथ को और शानदार अंदाज में स्ट्रोक खेला यहां पर। खूबसूरत कवर ड्राइव, फिर भी खुश नहीं है वो अपने आप से। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, अब तक स्ट्रोक ऑफ द इनिंग भी आप इसको कह सकते हैं। जिस तरह की बैटिंग हमने अब तक देखी है गुलशन गौहर की, अच्छी हिटिंग देखने को मिली, लेकिन एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था जिसे टाइम करके 4 रन हासिल किए। मेरे ख्याल है हारून रशीद, सादिक मोहम्मद जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, इस शॉट को बहुत इंजॉय किया होगा। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन पेस बहुत था इस गेंद में, बाउंड्री की जानिब जाती हुई फील्डर वहां पहुंचे। इस दौरान में 2 रन आसानी से लेने में कामयाब होंगे रजा और इलियास। और ये ओवर का इख्तिताम हुआ, सेंचुरी भी मुकम्मल हुई गुलशन गौहर की, 3 विकेट के नुकसान के 5 ओवर मुकम्मल, 100 फॉर 3। जी वर्सेस MM, आप ये बराह रास्त मुकाबले देख रहे हैं DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से, जहां आज मुकाबलों का 7वां दिन है। आज का पहला मैच, जहां 2 ऐसी टीमें मध्य मुकाबले हैं कि दोनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। इलियास और रजा का गुलशन गौहर के लिए क्रीज पर खड़ा रहना बड़ा कॉन्फिडेंस देगा इनकी टीम को। उबैदुर रहमान नए बॉलर हैं, आखिरी ओवर कराएंगे मलीर मलंग्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंक करती है तैमूर मिर्ज़ा और बहादुर अली पर, और साथ साथ एहसन चिट्टा पर गुलशन गौहर की टीम। बट उनके जल्द आउट होने के बाद इन दोनों का एक मैच चेंजिंग इनिंग्स खेलना और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है गुलशन गौहर को। और इस बार अंपायर का सिग्नल देखना होगा, काफी वेस्ट साइड से ऊपर गेंद, नो बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। इस तरह फ्री हिट भी होगी, भाग के 1 रन भी मिला और नो बॉल के 2 रन भी मिले, तो 3 रन भी मिल गए, बॉल भी नहीं हुई और अगली गेंद फ्री हिट होगी। तो जो लैक ऑफ डिसिप्लिन हमें पहले ओवर में नजर आया, कुछ इस इनिंग का इख्तिताम भी मलीर मलंग्स की जानिब से उसी तरह किया जा रहा है। इस स्टेज पर अगर आप नो बॉल भी कंसीड करते हैं, वहां पर कैच भी हो जाता है, विकेट भी नहीं मिलती और फिर एक फ्री हिट भी मिल जाती है, तो यू हैव एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट यू। और इस बार कवर की जानिब खेले फील्डर, चूंकि सर्कल के अंदर थे। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 कीमती रन हासिल हुए रजा और गुलशन गौहर को। बेसिकली इस एक गेंद पर 6 रन आ गए नसीम राजपूत, 2 रन आपको नो बॉल के मिले और उसकी अगली गेंद पर फ्री हिट पर 4 रन भी आ गए। 7 रन आ गए, क्योंकि उस गेंद पर भी भाग के 1 रन बना था। टेप बॉल में होता है ये जनाब। वेरी वेल प्लेड, शानदार स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा छक्का लगा है यहाँ पर। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी जिसको सामने की जानिब स्ट्रेट हिट लगाई, 6 रन हासिल किए रजा ने। क्लीन हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त रजा, अच्छे पक्के बैटर हैं और पूरे शॉट खेलते हैं अपने, अच्छी बैक लिफ्ट है, सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक मेकिंग करते हैं। बड़ा टैलेंट है इस लड़के में, कहां छुपा के रखा था गुलशन गौहर ने इनको। ये गौहर नायाब बड़े दिन के बाद दिखाई दिया, वरना वो तैमूर बहादुर अली यही पूरी इनिंग खेल जाते हैं, नीचे के बैटर्स को ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वेरी वेल प्लेड रजा।
वेरी वेल बोल्ड, वेरी वेल बोल्ड। शानदार बॉलिंग राउंड द विकेट आकर चेंज ऑफ पेस के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किया। साइड भी चेंज किया अपना और एंगल भी चेंज किया यहाँ पर उबैद ने। अब देखें बाहर की तरफ निकाला बॉल को, रीच करने की कोशिश की रजा ने, बट आखिरी वक्त में डिप भी किया बॉल। अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं उबैद। और एक और लेग स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। बैट टच हो गया इस गेंद को। इस तरीके से थोड़ा सा अनलकी रहे यहाँ बैटर और लकी रहे बॉलर की, खासी लेग स्टंप से बाहर गेंद थी। इसके बावजूद सिर्फ 3 गेंदें ही हुई हैं और 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में, तो बड़ा ओवर है ये गुलशन गौहर के लिए। मजीद 3 गेंदों पर और कितने रन बना पाएंगे। हर रन के साथ मैच मलिर मलंग की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का, खुशी दिखाई दे रही है गोवास के डग आउट में। फलक शेर से भी हमने कंफर्म किया, नसीम राजपूत 141 हाई स्कोर है इस टूर्नामेंट का जो क्लिफ्टन पॉपुलर ने स्कोर किया। अब वो तो नहीं बनता, बट ये भी मुनासिब स्कोर है। एनीथिंग अबव 120 इज गुड। वेरी गुड स्कोर दानिश, और मिमरान और 1-2 विकेट हासिल की तो फिर मसला हो जाएगा। इस बार हवा में ज्यादा खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना होगा कि वो गेंद को थामते हैं या नहीं और कैच लेने में कामयाब हुए। इस तरह इनिंग का इख्तिताम हुआ यहाँ गुलशन गौहर की इस विकेट के साथ। 119 फॉर 4 आफ्टर 6 ओवर्स। आई थिंक खासा चैलेंजिंग टास्क है दानिश। बिल्कुल अच्छा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मलिर मलंग ने अभी तक इस टूर्नामेंट में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और हेड ऑन फेस किया है। यहाँ पर आप देखें अच्छी डिलीवरी थी, थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस भी हुई, सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, एलिवेशन ज़्यादा मिल गया यहाँ पर रजा को और अपनी ही बॉल पर अच्छा हाई कैच लेने में कामयाब हुए यहाँ पर उबैद। मिक्स्ड बैक ओवर था ये। तो 6 ओवर के बाद जी 119 पे 4, 120 रन के खसारे के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज करेगी यहाँ पर मलिर मलंग्स की टीम। नसीम राजपूत एक बहुत बड़ा टैलेंट का पूल यूबीएल अमीन कराची टेबल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान भर से टैलेंटेड प्लेयर्स को ड्राफ्ट किया गया है और इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। ज़बरदस्त प्लानिंग की है मैनेजमेंट ने। और कुछ प्लेयर्स जो दुबई खेलने गए हुए थे वो भी अगले 2 दिन के अंदर पहुंच रहे हैं, तो और टीमें स्ट्रांग हो जाएंगी। ये तैमूर मिर्जा जो आउट हुए आज इब्तिदा में ही, टीएम की विकेट हासिल कर ली थी। बहादुर अली भी बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सके और जल्दी उनको भी कैप्चर किया था यहाँ पर। ये उनके आउट होने का मंजर, शानदार कैच जो विकेट कीपर से मिस हुआ उसके बाद लिया। और ये एहसन चिट्ठा भी आउट हो गए थे। तो ये 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद, की विकेट्स के बाद रजा ने और इलियास ने एक अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए कायम की और अपने एक रेस्पेक्टेबल नहीं बल्कि चैलेंजिंग टोटल तक पहुंचाया। ये देखें शानदार हिटिंग, इस बार लॉन्ग ऑफ की जानिब जोरदार छक्का, एक और एक्स्ट्रा कवर की जानिब स्ट्रोक, इस बार कट किया था। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। ये मिड विकेट की जानिब जोरदार छक्का, एक मरतबा
lost 3 wickets very early. And the reason why they were successful was that they were playing the ball on its merit. They were not looking to swing everything down the leg side because that would have ended up as a dot ball. Instead, they played a few shots over extra cover. We saw a few shots being scored over backward point, because of which they got 4 runs as well. And I think they have ended up with a very good score. Daud Khan is going to be opening the batting for Maleem Malangs, as he has usually done so far in this tournament for the men in green. And his partner Mimran is also in a supreme touch. So both of the batters have got a huge responsibility on their shoulders to start well here, as we see Hassan Lefty, the left-arm quickie, will start the proceedings from Gulshan Johors with the ball. I'll tell you what, this promises to be an exciting encounter, because whoever wins this match tonight is going to be at the top of the points table, because so far both of these sides have won their previous 3 matches. And boy, oh boy, what a batting performance it was, especially from the middle order of Gulshan Johor. But now they've got runs on the board. They need to curtail the opposition so that they can get a lead in the second innings. Take a look at this beautiful view of the ground. So it's all set here for the second innings. Nicely bowled outside edge, and a wicket of the very first ball. Drama already, and it's Pathan who has just come and gone. Daud Khan just did not even want to leave. He was looking at the pitch as if that ball just seemed away after pitching from the right-hander. It was a length delivery. We have seen that the Daud Khan has been dismissing the ball on that length to all corners of the ground. This time got a thickish outside edge, and Gulshan Johors could not have asked for a perfect start than this. Well, he's gone without troubling the scorer. They are not for one. Osaka cricket tapes being used to wrap these tennis balls for this Karachi Tape Ball Premier League Season 3. One of the leading brands when it comes to providing tapes. As I still remember, even in our childhood, we used to use these Osaka cricket tapes. Meanwhile, Kaleem, the new batter, in at number 3. Maleem Malangs have lost their first wicket of the very first ball of the innings. Well, we saw some similar thing happening for Gulshan Johors as well when Taimur Mirza was dismissed in the very first over. But they got few runs on the extras. I think at least 16 extra runs they got in the very first over of their innings. Predominantly wides were bowled by Majid Goli, was not getting it right. At the moment, it's Hassan the bowler who's got it right from the very word go. Now look at that. He was trying to go leg side. No connection whatsoever. It's a good line, especially when you're coming from over the stumps, being left armour. Yeah, it is. Especially when the bowler is bowling the first ball to a new batter. Especially when you're targeting the body, it becomes difficult for the right-hander. Because if the ball is directed at the stumps, middle stump or the off stump, the natural swing is obviously going to be on the leg side. They came out with a different plan tonight, Maleem Malangs. We usually see Ali Chota and the fast bowler Majid Goli bowling their quota of 2 overs straight away on the trot. But tonight, they just bowled 1 over and then they came back to bowl the 4th and 5th over. Because of which, I think the middle order got the momentum on posting a decent total on the board, because if they would have continued bowling their remaining 2 overs, who knows, they would have rattled the opposition. Maybe they were looking to test their skills, have a bit of experiment. Down the leg side, we'll have to re-bowl that. This is the problem we have seen. It's not for the first time. We have seen in the first innings, in the first over as well. Yeah, it was an attempt at slower delivery which went way down the leg side. Once again, a left-arm seamer. After getting a wicket of the first ball, now giving away a few runs on the extra. Pretty interesting field setting as well. Both mid-on and mid-off are up, as if they are inviting the batter to go big straight over the bowler's head. They have to keep that field because only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle in the first 2 overs. And this time he drills it hard, but straight to mid-on. No run. This is good bowling. Good, intelligent bowling. Persistent with that line. Cramping the batter for space. Well, yeah, but it has been signaled as a no ball, so it's going to be a free hit on the next ball.
was a lane delivery once again. He was looking to muscle it down the ground. He hit that hard. He timed it well enough as well. You see clearly overstepping the left arm seamer. Now that was a no ball by a long way. Just landing over that popping crease into his delivery stride. So it's going to be a free B now. Free hit for Kaleem. Wouldn't have asked for a better start here, Kaleem. Get a free B and dispatch it downtown to get yourself off the mark. Yeah, I mean, it was a free hit. At least bowler could have tried and put up an effort on that delivery. Could have at least tried a yorker on a bouncer. Instead, he bowled length, that too outside the off stump. And they're going to do that. Even if the batter is struggling, he's going to dispatch the ball. That ball hit the side screen on the fall. Yeah, look at how he just cleared his front leg and whacked it straight over the head of the bowler. Full toss through the offside, goes over covers. That will run away to the boundary for 4. Once again, easy pickings, overcompensating on that occasion. Hassan lefty, this time bowling a full toss outside the off stump. He just blazed it through extra cover there, Kaleem. Proper cricketing stroke, you can say, in modern day cricket. Playing the ball on its merit. And he knew there was no fielder out there on the offside, so it was comfortably played in the air and found the gap. Didn't try to overhit that, just timed it exquisitely. And away it went in no time to the boundary. So he moves to double figures with that boundary. There you see a few of the organizing committee members. Goes down the ground, goes hard, goes long, goes flat, goes all the way. Tell you what, that was not high off the ground. That just went over the mid-off fielder's head, but still it was hit so hard and so flat that it carried all the way. Brutal power this from Kaleem. That really was a skimmer that hit the advertising hoardings. Actually, one bounce to the advertising hoardings, but it really clattered into the advertising hoardings. That was some strike. Carried on the fall. This guy can hit the cricket ball, the tape ball, which they're playing at the moment. Yeah, he was struggling for the first 2 deliveries that he faced, then got a no ball, a free hit, which he dispatched for a 6, and since then he has never looked back. Kaleem has looked a completely different batter. Down the leg side, we'll have to bowl that again. This is not going to help their cause because a single has been taken as well. Good awareness by the batters. It has been pretty even Stevens for both these sides, not only in this game but throughout the tournament as well. It's a beautiful trophy of this UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3, something all these 8 teams are fighting for. But at the end of the day, it's only be just one team that is going to be emerged as victorious. The HA Dabangs obviously being the defending champions. I still believe it's still pretty early days in the tournament, still lots of games remaining, but few teams have literally stood out. He goes massive this time through the onside. It's handsome and it's into the stands. Well, no half measures when you talk about Mimran. He has been scintillating so far in this tournament for Mali Malang. Once again, the first delivery that he was facing, and he had no hesitation in keeping the ball down. It was a short up jab, and look at how high and far the ball went into the stands. Wonderful way of opening your account. A 6 of the very first ball. Flick of the wrist with all the power he has and sending it into the stands to finish the over. 29 for 1 after 1.
29 for 1. Maleer Malang still trailing by 90 runs, but they've got a very good start. Unfortunately, the captain couldn't click, was dismissed of the very first ball, but Kaleem has taken on from there. Mazullah, another left-arm seamer, is going to be bowling the second over for Gulshan Gohars. And it was Maleer Malang who in one of the game against, I think it was against DHA Dabangs, where they conceded a lead of 40 runs, but they came back strongly and managed to win that game comfortably. That must have given them so much confidence moving on to the next games forward. Now, they have been very dominant in this competition so far, have been Maleer Malang. There you see those VIPs in Harun Rashid, Mushtaq Mohammed, the former Pakistan captain. Obviously, they have a big hand into this competition. Sadiq Mohammed also alongside. These are the minds behind the Karachi Table Premier League. A dream that they saw 3 years ago. And look at how far we have come forward. It's just the third edition of Karachi Table Premier League, and it's already a very huge hit, not only in Pakistan but throughout the globe. This time nicely bowled, and a single will be taken down to mid-wicket. So Kaleem has started off his innings brilliantly, and he needs to carry on in the merry way, especially in the absence of the captain, who has gone pretty cheaply in the first over. Yeah, even in this shortest format, the table format it is, partnerships are very crucial. We saw that in the first innings as well, Gulshan Gohars, when they lost 3 wickets very early, but they set up a very good partnership for the 4th wicket between Ilyas and Raza. That helped them score past 100. That's hit hard, and it's handsome. It's going all the way. It's gone. Well, he's just dealing in sixes, Mimran. He got to face one delivery in the last over. That was dispatched for 6. Once again, it was a length delivery. Maybe a full toss it is, asking to be hit. He's not going to miss out, especially when he is such a dangerous mood, Mimran. Now, bowling full toss to Mimran is just like asking for punishment. This time, length delivery, a better result for the bowler. Only going to be 1. Yeah, better option. Maybe he was expecting to get it much more bounce on that occasion. Got to him at a decent height, Imran. But a desired result for the fielding side. Just a single. Well, I get the feelings, Ishan. They know that the batters are batting very deep into their crease, and they're trying to execute those yorkers. And by doing that, when they miss their margin, they bowl those full tosses. Mostly. Have a look at that. That was a full toss too, but this time it was down the leg side. And I don't think it has brushed anything in the way through. We saw so many extra runs being given by Maleer Malang in the first innings. Even Gulshan Gohars have given away so many. It's just the second over of the innings. We saw a no ball, a wide in the first over. 2 wides already in this one. Just get the feeling they're trying to, get the batter out by bowling them round their legs. We've seen that in the previous editions as well. Full toss hit away on the leg side, past the fielder at square leg. It's running away. The fielder is after the ball. Yeah, I didn't get the desired connection to his liking, the batter on that occasion. Kaleem is going to be on strike at the score of 19. Even in cricket ball, to bowl these no balls and wides is not acceptable. There was a time when there wasn't a free hit in cricket ball. But after the invention of the T20, the laws have been changed. And mostly the laws went against the favor of the bowlers. How well did he play that? Didn't connect as he would have liked, but still ran away to the boundary to third man for 4. Yeah, this is good batting. The idea was right to play it on the backward, in fact, on the offside. Because the ball was angling across the right-hander. He was trying to play it in front of square, got a thickish outside edge, but since there was no fielder down at deep third, it's going to be an easy boundary for the right-hander. Yeah, if you flash at it, flash hard at it. Never tried to keep it down and got a very good result. Boundary. Kaleem is looking good. Mars needs to finish well here. Went for 18 of his first 5 deliveries.
Full toss he bowls, and he's lucky enough to get away with that. It's only going to be a single to finish that over. So after 2, it's 48 for 1. Right then, it's 49 for 1 after 2, and they still trail by 70 runs. And they've got 4 overs to get those 70 runs to match the first innings total, which the opposition made, Gulshan Gohars. Mimran is going to be the batter on strike. He has been in very good form. He's lost his partner, the captain Daud Khan, but still, I would say the kind of start which Kaleem has got up till now, up till this point, they have to get these runs if they carry on for another couple of overs or so, both of these batters. One more thing I would like to point out between these two sides. Yes, they both these sides have won their previous 3 matches, but I would still rate Maleer Malangs a little higher than Gulshan Gohars, because not only they have got really good batters, but their bowling has been on point as well. Whereas if you talk about Gulshan Gohars, usually it's their batters who have made them win those matches, especially Taimur Mirza and Bahadur Lefty. Nicely hit. That is smashed away over long on. Huge heave and gets the connection. He doesn't really move his body much, Mimran, whenever he's looking to clear the field. There you see minimum use of the body. It's just strong hands. And it was not a full swing as well. So that shows not only he have power in his wrist, but even in his shoulders and arms, they are so powerful. And whenever he hits them, he usually stay hit. And have a look at that bat speed. That was just as good as somebody like Adam Gilchrist. Such a fast hands and great swing of the bat. He goes again, this time over square leg, and it's a monstrous. It's another one. Second 6 on the trot here. Well, there is no stopping Imran tonight. So far, he has struck 4 maximum, each one being the bigger than the previous one. It was similar delivery. This time he decided to go towards square leg, and once again the ball traveling a mile. And how easy does he makes it look? Unbelievably easy. It was a big hit, huge hit. Seems to be very much prepared for this type of line and length. Enjoying himself. He has been in very good form so far. Yeah, that's why I was mentioning as well, because Hassan, if you compare the bowling side, these two sides, obviously Majid Goli and Ali Tota have bowled really well as compared to what Hassan has done, because he's just bowling length and he's being punished. Oh, nicely bowled this time, going across the right-hander. Gets the inside edge, no run, a rare dot delivery. Yeah, he was in 2 minds whether to hit that on the offside or on the leg side. Was lucky enough that the inside edge did not hit the stumps. But a good comeback just from Hassan. And he's bowled it quick as well. That was a quick delivery. I get the feeling that there was no connection by the batter merely because of the pace of the delivery. This time he goes too long on. One hop to that fielder who does well to stop the ball. A change of pace this time from Hassan, although Mimran waited for it. But I just get the feeling he was a little too late in getting closer to the pitch of the ball. That's why it did not go that high, went flat. And the long on fielder did really well. Not only he stopped the boundary, but he made sure that they do not come back for the second run. Well, whenever we see the ball hitting the bat, we are in business here in the commentary box. I can tell you, Zishan. Always sense something happening. It's that kind of a game so far. We have been mentioning it before as well in Karachi Table Premier League. It's never a dull moment. You have to be on your toes
not only as a player but as a commentator as well. Don't mute yourself. You gotta be proactive. Oh, was there a nick? He's gone across the line, but it was a good delivery. Good comeback delivery by Hassan. Yeah, he knew bowling it straight is not going to work, so he bowled it wider outside the off stump. And Kaleem has been a little off strike in the previous few deliveries. That's why I think he found it difficult to connect the ball, because majority of the strike has been with Mimran in these last 2 overs. Well, there's a stump mic as well. When the ball bounced, I heard a sound. It wasn't a woody sound, but I got a little excited. It wasn't an outside edge. It was miles away from the bat. That is for sure. This time it's a sound of the bat, which is a cracker. And it's a boundary over extra covers. Yeah, great shot selection this from Kaleem. It was of low full toss outside the off stump. This time he did not swing that on the leg side. Instead, he did comfortably over extra cover. A boundary to end the over with. 3 done. It's 66 for 1. And it's time to change voices. It's going to be Rana Ishfaq and Farooq Riaz. Remaining 18 deliveries, and they will have to be playing as quickly as they have played so far to get the lead. And good evening, Farooq. Good evening, Rana. Good evening, everyone, wherever you are. It's Mimran's show at the moment, 26 of 7, whereas Kaleem is 29 of 11. They are going great guns. And it's such a vital partnership for the man in green, Maleem Malang. They are still 53 runs behind, and at the moment it's pretty much even Steven. Mars will bowl from the pavilion end now. Mars has given away 20 runs so far. This one is in the air, but it dropped just in front of the fielder. Then it bounced over him. That one took a steep bounce, and single has been taken. Mimran and Kaleem are going well. This is possibly Mimran's day. He was so lucky. He could have gone anywhere. He was completely not in control. Tried to heave it over long off and landed safely. Now it's time for Kaleem. So it's part and parcel. It's carrying chances in T-ball cricket. It's part and parcel of this format. They have to take risk. And they have to go after the bowler. And in between, the bowler can create a chance. Very well bowled. Very well bowled. He delivered a dot ball almost from nowhere. And dot balls are always very precious balls. The margin of making a contact was quite minimum because he was relying on a flick here. It was pretty much within the stumps. So just a swing of the bat. Sometimes you see the batsman connect so beautifully, and the flick of the shot takes the ball beyond the boundary. So not a bad start here from Mars. Just one of it so far. He has given away just 1 run in 2 balls of this over. Now batsmen must be thinking about play a big stroke here. And he played one. He played one magnificently. And it has gone way back. What a terrific 6. Here comes the prediction of big stroke. Here comes a big stroke in reality. What a big shot that is. It was on the slot, on off stump. And good wrist work, real power and class from Kaleem. What a fine strike that is. That will make him feel better. These batters don't spare balls like this. That one pitched a bit up and he gave it a go. Captain Kaleem is on 35, Imran has 27. It is in the air, but it will go over the top of the fielders and will go down to the boundary as well. Through the offside this time around. Runs are coming, and they're coming in every part of the ground. Big cheer from the camp of Maleem Malang. He just lifted towards
cover region. He was trying to heave it or pull it towards the onside. In the end, intelligent shot, late adjustment, but very effective. Chase was on, but ball was quick enough and traveled to the boundary for 4. He looked pretty innovative. He changed his mind at the last moment and just showed his back to the ball. And ball traveled and traveled quickly as well. Way down the leg side, way down the leg side. That's a cardinal sin for a bowler to bowling a wide, because penalty is not 1-2 actually. Huge support here for Mali Malangs. Every run is being cheered. There's a couple of runs added as a result of a wide. So pressure is certainly on the bowler. 13 of it so far, as Kaleem just 11 away from a well-deserved half century. We have seen number of quick fire 50s, and certainly looking for 50 or something beyond 50 here. He has got the chance, he's got the platform. These two teams are not putting a foot wrong here. Another wide. They have won all the matches that they have played so far. Gulshan Gohos and Mali Malangs. And as I mentioned in my earlier spell with FS, that one has to lose. But let's see who will be the one. It was just above the head height, and bowler is not happy with the decision. They try to fox him with extra pace and extra bounce. It was quite clearly above the head, and umpire wisely extended his arms. So it is turning out to be a long over. Yeah, that was a very fair call by the umpire, because that went above his head. They are watching the mobile with all the focus which they could. Oh my God. We have seen the era of letters as well. That's why at times I take a back when I see these kinds of things. This one is in the air. Fielder is coming. Oh, he came under the ball came in his hands and then popped out. A catch has gone down. Nothing going in Ma's favor at the moment. He created the opportunity, extra bounce, and almost he got his man. It went miles up in the air, fielder covered a lot of ground. He came from long on. He kept his eye on the ball. It was never easy. In the end, he dropped it. He positioned himself well, but could not complete the job. He had to cover a lot of territory, which he did pretty well. But at the end, couldn't quite able to finish that one on a high note. Kaleem has gone up to 41. He's playing his strokes regularly, throwing his bat almost at everything. And they are in a very good position to take the lead. Single will be taken anyways. Come what may, they have taken a single. And this will end the over number 4. It's 84 for 1. $84 for 1, 2 overs to be bowled to finish this innings. And still it's pretty even, Stephen. 35 to get to level the score of Gulshan Gohar. And it is pretty possible in the next 12 balls. Yeah, both teams needing a good over. Bowling side would love to have an over of 10 to 12 runs. And the batting side would love to have an over of 20-25 runs, to create their chances to get a lead. Mohammad Sami is the head coach of Mali Malangs, a former test cricketer. I saw him playing few months back. He's still extremely quick, and as quick as any young bowler. Wasif will bowl over number 5. Is the one who's given the ball. This match, I think, has a tussle between these two sides. Both sides will look to defeat each other.
This one is on the leg stump. Again, bowler making the Cardinals in and again getting the punishment. Pick-up shot to start with Kaleem. That's a wrong line from Wasif, not much pace behind him, and just more than an inside edge to get the pick-up shot. Safe shot in the end, and the boundary to start the over. So Wasif is a kind of bowler, he certainly can be targeted. He doesn't seem to be quick, and Kaleem will be highly excited to take him on. Kareem is not too far away from his 50. He needs only 4 to get what would be a terrific half century. Let's see if he can get it. Another one reading out some messages. And there you go. There you go. Go and fetch it back. The moment it left the bat, it was a 6 short yard. Wow. What a sublime half century, and what a way to bring up a wonderful half century. 18 ball he consumed, he got to 52. As I told, the kind of pace he has, he can be targeted, and what a shot that is. Outside the off stump and pitched up. It was enough for Kaleem to free his arms, and what a good shot that is. Launched it way back. Lovely innings. That was sent in the eastern part of the ground, or eastern area of the ground. We are sitting in the western area of the ground. Bit of relief for the bowler. A leg bye called by the umpire. They're certainly on the driver's seat. Still, they are 24 runs away to level the score. But as far as the partnership is concerned, it is threatening. And Kaleem, look at the strike rate, just under 300. It has been sheer entertainment from him. 5 boundaries, 4 sixes, and still we can expect few more big shots from him. As 9 legal deliveries to be bowled. It has been nicely poised so far. Oh, he has got that away and got that away over Boyd mid-wicket. 6 more runs coming from the bats of both the batsmen now. 2 top-class shots in this over. One from Kaleem, one from Mimran. This was a flat one. He totally heaved it, cleared his front leg, and some catching practice for the man beyond the boundary. A complete heave here from Mimran. What a partnership it's turning out to be, and confidence is on once again. These 2 batsmen are going hammers and tongs here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. And bowlers are looking clueless. Wasif has given away 16, and he's still got 2 deliveries to bowl in this one, and then they will have another over as well. This one is played into the leg side. They take 1. This is all what they were going to get. There is still a possibility for Mimran to get to his half century as well. 34 he got. If he gets 3 or 4 balls, he can certainly take on the bowler to get to his magic numbers of 50. 100 is up as well for Mali Malangs. Oh, this is a colossal one. Straight down the ground. He dispatched exactly where it came from. What a good hit. Goodness me, delightful. Absolutely magnificent. What a way to finish the over. Change of angle, it didn't work in the favor of bowler, and it's a colossal hit. Lots of runs leaked here, and 5 overs have been done and dusted. 108 for 1. Kaleem is telling his opposition what he's made of. 58 of 20 deliveries. He's going all guns blazing. He's tonking them about. He's hammering them about. And Mimran is doing a good job as well. He has 34 of 10 balls. So bowlers getting spanked here. They are still trailing by 11 though. Let's see if bowler can bowl a good over here. So far, it has been a high-scoring contest. Safi Khan will bowl the last over. He will be under tremendous pressure. Wasif bowled the previous over, who got a real hammering.
Now Safi will be challenged, and Mimran is on strike. 16 away from his half 100, and it is still quite possible, Rana. It is possible. 3 sixes will do. Even 4 boundaries can do it as well. Our production team working really hard to make it possible. We are going throughout the world. It is a Geo Super's production. He started off with a full toss, I reckon. And let's see, it is called leg by. I think bowler got away with that one. That one would have been a no ball as well and would have been put away as well. Naseem Rajput having a conversation with former Pakistan Test cricketer Harun Rashid, represented Pakistan in the '79 World Cup and then served in PCV for many jobs. He got away with that. Safi with the first ball, it was a bad line, so it turned out to be single. Oh, he's hit it in the air. It is going, and gone over long off for another 6. Plenty of catching practice, but not for the fielders, but for spectators and officials beyond the boundary. It's a lovely shot over wide of long on. Width provided. He could have struck, smash it, but it went over wide of long on. Fine shot indeed. This is turning out to be a wonderful display of batting in tape ball cricket. Kaleem he's into the 60s now with an immaculate strike rate. Kaleemullah is playing his strokes with vertical bat as well. Most of the time we see batters play their strokes with horizontal bat, or they go across the line, they target the cow corner. But this boy is playing a magnificent knock and hitting the ball straight down the ground as well, with good follow through and good back lift as well. Well, 6s over extra cover or backward point or over long off are always pretty to watch. And Kaleem has smashed some lovely shots. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फार्मर एसोसिएशन ने इस डेल्फा का इनेकाद किया, जो जॉइंट वेंचर है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड डेल्फा का। Assalamu alaikum and a very good afternoon everyone and welcome to the Delpha Cattle Show second edition 2022. अल्हम्दुलिल्लाह आज डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फिशरीज एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेल्फा ऑर्गेनाइज करती है एक जॉइंट वेंचर बदर एक्सपो सॉल्यूशन के साथ। उसका हम सेकंड एडिशन का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं सिंध में, जहाँ पे कुछ हमने एक्सपोज जरूर कराए हैं, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लाइव स्टॉक रिलेटेड काम करते हैं, जिनके पास लाइव स्टॉक रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनको जोड़ने में डेल्फा का एक बहुत बड़ा किरदार है। बदर एक्सपो ने एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इवेंट जो ये हर वीक या हर मंथ इस शहर कराची में मुनक्किद करते हैं, जिससे उम्मीद की एक किरण हम सब के दरमियान पैदा होती है। डेल्फा सीजन 2 का बाकायदा इफ्तिदा होने जा रहा है और ये इफ्तिदा करेंगे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट गवर्नर ऑफ सिंध मिस्टर मोहम्मद कामरान खान टिसोरी। ये हमारा सेकंड टाइम है कि जो हम इस डेल्फा की जो नुमाइश है इसके अंदर आए हैं। फर्स्ट में भी आए थे और सेकंड में भी आए। बहुत अच्छी एफर्ट है डेल्फा और बदर एक्सपो की। ये बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करता है, बूस्ट करता है। हम तो देखो ना कि रोशनियों का शहर मिसिंग है, ये देखो ये हम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हमको लग रहा है कि रोशनियों का शहर वापस आ रहा है। और ये जो डेल्फा कैटल शो हुआ है इसमें सब लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे कस्टमर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं सीज़न 1 की वजह से। अभी ये सीज़न 2 में हमने स्टॉल लगाया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सबसे पहले तो मैं बदर एक्सपो को और उसके रूहे रवां जोहेर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि मैंने तो अपनी लाइफ में किसी पब्लिक प्रोग्राम को, पब्लिक शो को इतनी पॉपुलेशन मैंने कभी नहीं देखी।
मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मिस नादरा मुश्ताक ने, जो कि फर्स्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया मैनेजर रही हैं और उसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, आपका एक बहुत लंबा वक्त जो है वो क्रिकेट को कवर करते हुए गुजरा है, लेकिन ये जो तजुर्बा है बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ज़ोहैर नसीर साहब और उनकी एंटायर टीम को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि उन्होंने वो गेम जो कि समझ लें गली कूचों में हम देखते थे खेलते हैं बच्चे और रिकग्निशन नहीं मिलता, उनको ला के आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो दुनिया में देखे जाएंगे, उनकी रिकग्निशन होगी। क्योंकि हर प्लेयर चाहे वो गली में खेल रहा है चाहे मोहल्ले में खेल रहा है, वो चाहता है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए। नादरा, आपने भी कभी गली मोहल्ले में क्रिकेट बिल्कुल खेली है? मैंने बिल्कुल खेली है और डांटें भी बड़ी खाई हैं। और उसमें तो ये भी होता था, जब हम टेप बॉल खेलते थे तो उस वक्त किसी के घर में चली जाती थी तो फिर वो डर के मारे हम अंदर नहीं जाते थे, कहते तुम उठा के लाओगे वरना। अच्छा, मोहल्ले में ये होता था जब आप खेलें ना तो वो बॉल आपको वापस ना करते थे, वो रख लेती थी आंटियां। Exactly. तो ये गेम बड़ा मजेदार है। नहीं रखती बच्चों की बॉल अगर आ जाए? नहीं, मैं रखती नहीं क्योंकि बच्चे खेलते नहीं, अब पहले खेलते थे। जावेद मियादाद साहब अभी अनाउंस कर गए हैं कि प्लान किया जा रहा है बदर एक्सपो। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी KTPL सीज़न 3 की 7वीं रात और बड़ा अहम मुकाबला जारी है गुलशन गौहर्स और मलीर मलंग्स के दरमियान। दोनों टीम्स अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। ये दोनों अंपायर्स जो इस इनिंग्स को अब ऑफिशिएट करेंगे, नई बॉल्स जो कि वेल टेप्ड अप हैं ट्रिको ओसाका टेप के ज़रिए से, वो उन्होंने शो की कैमरा को। हमारा कैमरा क्रूज भी हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं। स्पाइडर कैमरे के शॉट भी दिखाए जा रहे हैं। जियो सुपर की बेहतरीन प्रोडक्शन जो कि पूरी दुनिया में जा रही है। और ये वो टीम जो फील्डिंग के लिए मैदान में दाखिल हो रही है मलीर मलंग्स की, और अच्छे अंदाज में लीड हासिल करने में वो कामयाब हुए। दोनों टीमों ने अब तक ये शो भी किया है कि वो वाकई नाकाबिल शिकस्त टीमें हैं, वो वाकई अब तक की इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम्स हैं। लेकिन देखना है कि अभी एक इनिंग्स बाकी है गौहर की, एक इनिंग्स बाकी है मलंग्स की। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में FS मलिक। खुशामदीद। शुक्रिया राना इशफाक। जिस तरह हम देख सकते हैं दोनों ओपनिंग बैटर्स जो हैं वो मैदान की जानिब बढ़ रहे हैं। तैमूर मिर्ज़ा और उनके साथ हैं बहादुर लेफ्टी। 17 रन्स की लीड हासिल कर रखी है यहाँ पे मलीर मलंग्स ने। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी इनकी पिछली इनिंग्स में, खिलाफ तवक्को इन्होंने आखिर पे खेल पेश किया है। 119 जब बनाए थे गुलशन गौहर्स ने पहली इनिंग्स में, तो कभी भी ये नहीं सोचा जा रहा था कि ये 17 रन्स की लीड हासिल कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर तैमूर मिर्ज़ा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छे राइट हैंडेड बैटर। जी हाँ, पहली इनिंग्स में कुछ खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, मगर इस इनिंग्स में ख़ुद भी चाहेंगे और उनके चाहने वाले, उनकी टीम भी तवक्को करेगी उनसे कि तैमूर मिर्ज़ा अपना टिपिकल खेल पेश करें। बहादुर अली भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, न सिर्फ टीम के कप्तान हैं बल्कि बाएं हाथ के एक बड़े जारहे मिजाज ये बैट्समैन हैं। तो दो बहुत अच्छे बैट्समैन विकेट पे हैं। और बॉलिंग क्रीज पे माजिद गोली MG, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और माजिद गोली को कहा गोली इसलिए जाता है कि ये गेंदें फायर करते हैं बजाय करने के, और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। अंपायर आपकी स्क्रीन पे तीसरी इनिंग्स का खेल शुरू।
फार एंड की जानिब से ग्राउंड के मशरकी हिस्से से दौड़ना शुरू करेंगे माजिद गोली और उनके सामने नन एल्स बट तैमूर मिर्जा। पहली गेंद तैमूर मिर्जा ने अपने हाथ दिखाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा जोरदार छक्का। तैमूर मिर्जा ने कहा कि लीड भी उतारनी है और एक टारगेट भी देना है और इसके लिए जरूरी है कि मैं आते ही अपने रंग में आ जाऊं। ये खासा होता है राना इशफाक बड़े प्लेयर्स के कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर देखा जाए तो पहली इनिंग्स में सेम गेंद जो है ये लॉन्ग ऑन के हाथों थमा बैठे थे, लेकिन अब की बार उन्होंने 6 रन हासिल किए। तैमूर मिर्जा वर्सेस माजिद गोली, मुकाबले के अंदर मुकाबला, कॉन्टेस्ट विद इन द कॉन्टेस्ट। अपने स्टेप्स लूज किए, दोबारा जाएंगे माजिद गोली बॉल करने के लिए। कराची ट्रे बॉल प्रीमियर लीग का ये मुकाबला जो कि एक बड़ा मुकाबला है, वो वापस जा रहे हैं बॉलिंग पे, तो तैमूर आगे गए, हल्का सा पिच को उन्होंने गार्ड किया, अब दोबारा आ रहे हैं अपने स्टांस पर। ओह माय गॉड, एक जबरदस्त मुकाबला बैट और गेंद के दरमियान मुतवक्के है। जी हाँ, आप कह सकते हैं 2 ऑफ द बिग गन्स विल बी लुकिंग टू फायर एट ईच अदर। भले ही आप माजिद गोली हैं, भले ही आप वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, नर्वस तो होंगी। बिल्कुल, तैमूर मिर्जा के सामने डग आउट है यहाँ पर गुलशन गौहर्स का, और दूसरी जानिब तैमूर मिर्जा भी जानते हैं कि माजिद गोली अच्छी बॉलिंग करते हैं। माजिद गोली, तैमूर मिर्जा का जोरदार शॉट, गेंद स्टिल हवा में है और अब नीचे आ रही है, और जब नीचे आई है तो बाउंड्री से काफी रोज बैक है। बड़ा खूबसूरत और जोरदार छक्का। इस बात में कोई शुबा नहीं राना इशफाक, जब इनका बल्ला चलता है तो यकीनन आग उगलता है। बहुत ही लंबा छक्का यहां पर काउ कॉर्नर के ऊपर से। तैमूर मिर्जा जब हिटिंग करते हैं तो फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तूफानी बैट्समैन हैं, खतरनाक बैट्समैन हैं। माजिद गोली को कुछ अलहदा से सोचना होगा, कुछ अलग हिकमत अमली बनानी होगी इनके खिलाफ। ऑन द अदर सेंस बेरहम बल्लेबाज हैं, इनके पास कोई रहम नहीं है बॉलर्स के लिए। मिर्जा ने स्पॉट ट्राई किया, गेंद को मशरकी हिस्से में जो समंदर का एरिया है कहीं वहां पटक देना चाहते थे, मगर कनेक्ट नहीं कर सके प्रॉपरली। बैट जरूर लगा है मगर कोई बैट का बॉटम पार्ट या कोई थिक एरिया लगा है और फिर गेंद उनके सामने ही रह गई। जहां नॉर्मली डॉट नहीं करते ऐसी गेंद को, इनके रेडार में थी, इनके जोन में थी, हिटिंग जोन में इनसाइड एज हुआ। वापसी थोड़ी सी अगर कही जाए माजिद गोली की जानिब से तो गलत नहीं होगा। बैट्समैनों की रीच या पहुंच जिसे हम कहेंगे उर्दू में, वो बहुत ज़्यादा है इन अच्छे बल्लों के साथ, और फिर फिजिकली बड़े फिट हैं, खासतौर पे ये बड़े नाम टेप बॉल क्रिकेट के। और इस गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड पे, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की जानिब रवां दवा है और कुछ टप्पे खाकर बाउंड्री से बाहर 4 रन। इस मरतबा प्रॉपर मिडल नहीं किया था, लेकिन स्विंग ऑफ द बैट इतनी तेज थी कि इनसाइड हाफ ऑफ द बैट लगने के बावजूद गेंद जो है वो 4 रन के लिए चली गई। तैमूर मिर्जा अपने तमाम तर रंगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। घूमे बहुत अच्छा थे, अपने एक पांव पे स्विवल किया उन्होंने, और क्योंकि जिस तरह आपने कहा मिडल ऑफ द बैट नहीं थी, लेकिन स्टिल चौका लगा। जोहर नसीर साहब इस मुकाबले से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लियारी लेजेंड्स का हिस्सा भी हैं और रूहे रवां हैं KTPL के, मौजूद भी हैं KTPL के। तीसरा एडिशन, मुसलसल तीसरा साल बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने। लेग स्टम्प से बाहर, विकेट कीपर तो कलेक्ट नहीं कर पाए मगर फाइन लेग ने किया, लेकिन वाइड बॉल के दौरान इसका क्या किया जाए जब बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते करते एकदम वाइड कर देते हैं। हालांकि इस ओवर में तो कोई बहुत अच्छी बॉलिंग हुई भी नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था पहली इनिंग्स में भी, बिल्कुल अपनी लाइन से चूके हुए थे, हटे हुए थे अपनी लाइन से। इस मरतबा बहुत अच्छी बॉलिंग की है अभी तक तो, पहली 4 गेंदें, लेकिन अब ये एक लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल की है। फिनिश अच्छा करना होगा यहाँ पे माजिद गोली को। इस गेंद को रोककर खेले ऑफ साइड में। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम ने कमेंट्री बॉक्स का मंजर दिखाया था, तो FS मलिक बाकायदा बूटेड सूटेड होकर तैयार होकर बैठे हैं, और इनका जो ड्रेसिंग का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। आई लव इट। जी हाँ, जब आपने जियो सुपर पर लाइव आकर कमेंट्री करनी होती है तो आपको ड्रेस्ड अप तो होना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ आपसे मशवरा लूँ कि मुझे
8 p.m. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, अपने टाइम दिया। हमें ये बताइए कि आप KTPL 1 का एक्सपीरियंस क्या रहा आपके साथ? वेल KTPL 1 का अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कुछ नया फॉर्मेट देखने को मिला क्रिकेट का, बहुत ज़्यादा लोगों में जोश था, जो क्राउड हमें सपोर्ट कर रहा था उस एरिया का, बहुत अमेजिंग था। इसी की वजह से हमने सोचा कि वाई नॉट सीज़न 2। और सीज़न 2 ये है कि सीज़न 1 में हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट दिस टाइम इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि विल टेक द कप। हमारे पास जो एक यासिर है जो कैप्टन, हमने उसको रिटेन किया हुआ है, और दूसरी चीज़ एक छोटा विकी एक बैट्समैन है, उसको हमने हायर किया और उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल टेप बॉल को लेके तो बहुत मेमोरीज़ हैं। इनफैक्ट लास्ट नाइट ही मैं एक मैच खेल के आया हूँ, और टेप बॉल की मेमोरीज़ इतनी है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक मेमोरी याद होगी, बट ये है कि इट्स एन अमेजिंग फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। मुझे हार्ड बॉल से ज़्यादा टेप बॉल में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बैट्समैन अपनी मर्ज़ी से बहुत शॉट्स मार रहे होते हैं। फ्रीडम होता है। जी जी बिल्कुल फ्रीडम होता है। स्पेशल थैंक्स टू ज़ोहैर भाई और जितनी भी मैनेजमेंट है उन्होंने, और जावेद मियादाद साहब, इन्होंने इस गेम को इतना ऊपर ले आए हैं अब कि मेरे ख्याल से इसी में से हम कोई ना कोई टैलेंट निकाल के इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। माशाल्लाह KPTL तो बड़ी मशहूर हो गई है, हालांकि सेकंड लीग है, और ज़ोहैर साहब के ये कारनामे हैं माशाल्लाह कि कराची की जो रोड की क्रिकेट है ना, जो गलियों की क्रिकेट है, उनको ये टीवी पे लेके आए। वो लड़के जिनको चांस नहीं मिलता, आप देख रहे हैं बेचारे, हर लड़का गलियों में खेल रहा होता है, रोडों पे खेल रहा होता है, जिनके पास कोई ग्राउंड नहीं होता, उनको ग्राउंड प्रमोट किया ताकि इससे हर प्लेयर को चांस मिलता है। और ये टीमें जो बनी हैं, इससे है कि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है माशाल्लाह, लोगों को, प्लेयरों को, अच्छे प्लेयरों को पैसे भी मिल रहे हैं, और प्लेयर भी नुमायाँ हो रहे हैं। हो सकता है इन प्लेयरों में से हमारे को टेप टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर निकलें, वही सब ज़ोहैर साहब को दुआएं दे रहे होंगे कि रोड की क्रिकेट को कितना ऊपर लेके आए माशाल्लाह। ये तो बड़ी बात है ना कि रोड के प्लेयरों को आप इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और टीवी पे लाइव के साथ कमेंट्री, कुछ छोटे छोटे गाँव में से देखो प्लेयर आ रहे हैं, वो बड़े शौकीन हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। असल क्रिकेट है ना हार्ड बॉल की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, उसमें टाइम चाहिए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टाइम होता है कि आप ये क्रिकेट को आप गली में भी खेल सकते हो, प्रैक्टिस गलियों में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इसके लिए ग्राउंड चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के साथ आप स्पोर्ट्स में ले आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे आप देखो, कोई पान गुटके में लगा हुआ है, कोई सिगरेट में लगा हुआ है। ये चीज़ों से दूर करने के लिए आप स्पोर्ट्स में बच्चों को ले आएँ, पढ़ाई के साथ आप ग्राउंड में बच्चों को निकालें, ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जिस तरह पहले जीती थी, अल्लाह ने हमारी मदद की थी और हम टीम जीत के ट्रॉफ़ी लेकर गए थे। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भी हम जीतेंगे, और क्योंकि इस मरतबा हम पहले से ज़्यादा हमने मेहनत की हुई है दोनों टीमों पर। क्लिफ्टन गाजी में भी हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, और गुलशन गौहर में भी हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात को पता होगा, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी फ़ाइट देंगे, और जिस तरह हम पिछले साल जीते थे इस मरतबे भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। आप देखें कि जब ये आइडिया फ्लोट हुआ था, ज़ोहैर नसीर साहब ने, जब बदर एक्सपो के CEO हैं, उन्होंने जब ये आइडिया फ्लोट किया था, तो हमें उनकी एक्सपर्टीज़ पर और उनकी इदारे की एक्सपर्टीज़ पर पूरा यकीन था, क्योंकि बदर एक्सपो ने जो भी आज तक कोई काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सबका सब हिट ज़रूर हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है तो काबिल तहसीन है। तो हमें ये ज़रूर पता था कि अगर ये इतना बड़ी सोच ज़ोहैर नसीर साहब ने सोची है कि कराची के और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, कि जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और ये अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर उनको मुहैया कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो है कल को किसी न किसी बड़ी टीम में जाकर खेल सकें। तो मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि ये अगर ज़ोहैर नसीर साहब कर रहे हैं और बदर एक्सपो कर रही है, तो ये जो KPTL है ये ज़रूर कामयाब हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि सेकंड सीज़न 6 महीने के बाद होने का मकसद ये है कि KPTL बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में से भरपूर पजीराई है, और पूरे लोग खुशी से देखते हैं इसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहैर नसीर साहब ने जब सीज़न 1 स्टार्ट किया था तो बिलीव मी कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये 40 साल 45 साल पुराना ट्रेंड लेके आ रहे हैं, और जिसके अंदर हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, जावेद मियादाद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब फर्स्ट सीज़न की लॉन्चिंग इन्होंने की थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीज़न 2 में खड़े हुए हैं यहाँ पर, और पब्लिक भी देखें, और ये जो नए बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया और एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूँ इस बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो अल्लाह करेगा तो इस सीज़न 2 को और भी बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से हम कर सकेंगे, और थर्ड फिर आएगा। और अभी मैं वेलकम करता हूँ हमारे कौंसल जनरल यूएई, और इन्होंने अभी ऑफ़र की है कि दुबई के अंदर भी आप ये इवेंट करें, तो ये बड़ी खुशशाइन बात है कि ये ज़ोहैर साहब की मेहनत की और उनकी काविशें हैं जो आज हम यूएई पे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल इसको फिर यूरोप कंट्रीज़ में भी, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी इस ट्रेंड को लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत ज़्यादा होपफुल कि हमारे जितने भी यूथ है और यंग जनरेशन है कि जिनको, जैसे अभी शाहिद भाई ने आपको सुना होगा, कहा कि मैंने अपने करियर का आगाज़ इसी स्टेडियम से किया था। मैं कहता हूँ हमने रोडों से किया था। हारून भाई का मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये रहते तो हम इनकी क्रिकेट देखने के लिए जाते थे। जो रोड वाली क्रिकेट होती थी, हमें घर से मार पड़ती थी कि कहाँ गए थे, हमने कहा मैच देखते। बोला धंधा नहीं करना है तुम्हारे को, जो मैच देखते, जब बच्चे होते थे हम भी, लेकिन माँ बाप हमारे, हम चूँकि मेमन है ना, तो मेमन में सबसे बड़ा है कि पढ़ो साथ साथ काम भी सीखो। तो हम उस ज़माने में हारून भाई के मोहल्ले में रहते थे और वहीं हमारी दुकान भी थी, तो हम इनका जब देखने जाते थे तो हमें बड़े घर से बड़ी मार पड़ती थी। पर मार पड़ते पड़ते देखें आज हम भी बड़े हो गए, और हारून भाई ने इस इवेंट को इनके साथ कोलैबोरेशन करके कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं अगेन ज़ोहैर साहब का और पूरी टीम का, प्रेसिडेंट जावेद मियां साहब का, तौसीफ़ अहमद साहब का, सादिक मोहम्मद साहब का, और ख़ुसूसी तौर पर शाहिद अफरीदी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस बेड़े में हमारा साथ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम और कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। और शाहिद भाई, मैं आपकी हम आबाद के थ्रू, तो अभी मैं ख़ुद पर्सनली गया हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट की इजाज़त लूँगा शाहिद भाई, कि हमने बड़ा काम किया है अभी, और आबाद डे टू डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम सैलाब ज़दान की मदद भी कर रहा है। और मैं ख़ुद पर्सनली अभी मीरपुर ख़ास हैदराबाद ख़ुद होकर आया हूँ, और अब हमारा अगला टारगेट शिकारपुर है, सखर है, खैरपुर है। तो आबाद तो अपनी तरफ से कर ही रही है, हम आपके साथ, मैं बज़ाते ख़ुद शाना बशाना आपके साथ हूँ, और मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का अतिया पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक्सपीरियंस के अलावा देखें, ये समझता हूँ कि बदर एक्सपो सोल्यूशन की, ज़ोहैर नसीर की, और उसके अलावा KTPL की पूरी जो मैनेजमेंट है, उसकी बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है उनका, और बड़ी अच्छी काविश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो क्रिकेट के शौकीन हजरात हैं, या जिनके पास टैलेंट मौजूद है, या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, आप ये समझें कि ग्राउंड्स में धूप के अंदर गुजार दी है, और उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को किस तरीके से आगे लेके जाएं। टेप बॉल मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन को, अगर फाउंडेशन पे ही किसी को जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत इजी और बहुत टाइमली क्लिक कर जाता है। क्रिकेट में मैं समझता हूँ 2 चीज़ें बहुत, क्योंकि हम क्रिकेट के, हम खुद बहुत ज़्यादा शौकीन रहे, तो पहले कभी खेलते थे लेकिन ख़ुद कभी नहीं खेल पाए प्रॉपर्ली, तो आज हम खिला रहे हैं एज अ फ्रेंचाइज ओनर, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ नेशन को सर्व करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो कोशिश होती है कि हम अपने मुल्क के नाम रोशन करने के लिए अपनी टीम को, जो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। कोई शक नहीं है, सीज़न 2 क्या सीज़न 10 भी होगा तो इंशाल्लाह हम साथ होंगे KTPL के। देखें, ये भी एक, आप इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं कि ये भी एक, जब आप 300 की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, आज आप 700 की करें, तो इट मीन्स कि प्लेयर्स के अंदर चाहत है कि वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। दूसरा, जब हम इसको सारे सूबों में करेंगे, अभी तो हम KTPL कराची टेप बॉल कर रहे हैं, जब हम मेज़बानी करेंगे और दूसरी भी प्रोविंसेस की, और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद इसमें हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, और उसमें एक चीज़ ये भी है
कि हमारे पास एक से एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी और भी बहुत सारे जो है वो खेलों में मौजूद हैं, मगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इस तरह की कोशिश और इस तरह की काविशें रहीं तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम अच्छे अंदाज से अपने फ्यूचर को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और अपने नौनिहालों को हम बेहतर अंदाज से कोई अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म देके उनसे हम उनको आगे भी बढ़ा सकेंगे और उनसे हम अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ख़ास तौर पर शाहिद आफरीदी और उसकी फाउंडेशन का कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और उसके साथ साथ टेप बॉल टेनिस को जो कि शाहिद खुद भी खेलता था। मैं तो जब क्रिकेट खेला करता था तो ये हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ मैं जब भी क्रिकेट खेल के आता था तो शाहिद को मैं देखा करता था कि बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे होते थे। तो उस वक्त तो हार्डली ये 13-14 साल के होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं आगे जाकर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत नाम करेंगे और वो आपके सामने है। तो शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जो दीगर मेहमान गिरामी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट यही था कि हमने टेप बॉल क्रिकेट को एक स्ट्रक्चर देना था। टेप बॉल क्रिकेट के बहुत प्लेयर्स हैं, जब हमने डेटाबेस इकट्ठा किया तो 400 से ज़्यादा के प्लेयर्स जो हैं वो आपको मौजूद थे पूरे पाकिस्तान में जो कि अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये स्ट्रीट्स पे या छोटे छोटे मैदानों पे खेलते थे। तो बदर एक्सपो में ज़ोहैर नसीर साहब ने इस आइडिया को फ्लोट किया, कहा कि क्यों नहीं हम इस क्रिकेट को हम स्ट्रक्चर्ड कर दें और आप हमें एक स्ट्रक्चर बना के दें जिसमें हम इसको बड़े मैदान में लेके जाएं, अंडर लाइट्स, लाइव टेलीकास्ट। तो ये सारी चीज़ें के पीछे जो है वो मैं फील करता हूँ कि बदर एक्सपो की जो टीम है अंडर ज़ोहैर नसीर, उनका बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने आज इसको ये सेकेंड एडिशन जो है वो होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा होगा। और जो मुझे उसमें और जो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स जो हमारे साथ मिले हैं, चाहे वो DHA दबंग हो या गुलशन गौहर हो, जौहर जवान्स हो, जितनी भी टीमें हैं, इन सब लोगों ने, जितने भी इनके ओनर्स हैं, इन्होंने जिस अंदाज में आके हमें ज्वाइन किया और हमारा तकरीबन 50% काम इन्होंने ले लिया, जो कि मैं समझता हूं कि टेप बॉल टेनिस के लिए और उन प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हमने उन टेस्ट क्रिकेटर्स को, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स थे हमारे साथ, उनको ज्वाइन इन किया कि ताकि उनके नामों के साथ हमने उनको मेंटोर्स बनाया। पहले साल वो कैप्टन थे, अब वही प्लेयर्स हसन रजा, मोहम्मद समी और इस तरह के और जितने हमारे फैसल अतर हैं, नवीद लतीफ़ हैं, इन्होंने हमें अब एज मेंटोर इन टीम के साथ लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम एफर्ट है, सब लोगों के इसमें बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने टेप बॉल टेनिस का वर्ल्ड कप करवाना है। तो 2024 में हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से हो जाए। तो इस टूर्नामेंट के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम कोई 4 नेशन या 5 नेशन टूर्नामेंट किसी बाहर के मुल्क में करें, ताकि वहाँ भी जो टेप बॉल टेनिस खेलते हैं उनको में इकट्ठा करने के बाद अगर हम वर्ल्ड कप करा देंगे तो आई थिंक टेप बॉल टेनिस प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने टेप बॉल से क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि आपका स्टार्ट इसी क्रिकेट से होता है, उसके बाद फिर आप कन्वेंशनल क्रिकेट में चले जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए हम ये फील करते हैं, और अब माशाल्लाह जैसे शाहिद ने ज्वाइन किया हमें और उसके साथ यूनस ने ज्वाइन किया, जावेद मियादाद हमारे साथ हैं, तो जब इतने बड़े नाम अगर मिल जाएं तो उसके बाद क्रिकेट ने तो बेहतर ही होना है और इंशाल्लाह आप इसको बेहतर होता देखते रहेंगे। आपका एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जिस तरह से प्लेटफॉर्म टेप बॉल का ये ट्रेंड चल रहा है। स्पेशली क्रेडिट जाता है KTPL बदर एक्सपो सोल्यूशन को, जो सीज़न 1 तो बहुत ज़बरदस्त करवाया और सीज़न 2 जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें लेजेंडरी नो डाउट दुनिया को पता है कि जावेद मियादाद साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं और उसके बाद तौसीफ अहमद साहब हैं, सारे लोग हैं माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो इंटायर टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि हमारे दौर में 90s में अगर आप देखें तो टेप बॉल का इतना रुझान नहीं था, मगर जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है, फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं ये आइकॉन प्लेयर्स हो गए और जितने भी तैमूर मुर्जा, ये बेसिकली हार्ड बॉल खेलते रहे मगर हार्ड बॉल में इतना चांस नहीं मिला इनको, तो वापस रिवाइज हो गई इनकी लाइफ एज ए टेप बॉल में। और जहाँ पर अगर बात करूँ तो ज़ोहैर नज़ीर साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, फ्रेंचाइज़ें बनाई हैं, फ्रेंचाइज़ के ऑनर्स हैं वो साथ में होते हैं सारे लोग।
अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें ये कि ये सक्सेस होगा इवेंट इंशाल्लाह सीज़न 2 और ड्राफ्टिंग आज होने जा रही है, तो उसमें लेट्स सी देखते हैं कि किस तरह के प्लेयर्स पिक होते हैं। और लास्ट टाइम तो बड़ी अच्छी टीम थी क्लिफ्टन गाजी, वो विन करी है इस टूर्नामेंट को। इस दफ़ा देखते हैं कि अच्छी ड्राफ्टिंग होगी तो अच्छे प्लेयर चूज़ होंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी लोगों को। कोशिश आज यही होगी कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पिक करें और गुलशन गौहर की टीम है उनको बेस्ट विशेस बोलूँगा। जो हमारे ऑनर्स हैं सारे वो बड़ी मिल के मेहनत भी कर रहे हैं, तो अच्छी पिकिंग होगी, अच्छी चॉइस होगी तो अच्छी टीम बनेगी। टेप बॉल जो हो रही है तो ज़ाहिर बात है कि उसमें एक अपना इनिशिएटिव होता है, लोग देखते हैं इसको, एंजॉय भी करते हैं क्रिकेट को। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो है इसके व्यूवर्स होंगे, इसके लोग होंगे, अच्छी जो है वो प्रोफाइल बनाएं अपने प्लेयर्स जो खेल रहे होंगे टेप बॉल में, और ये ड्राफ्टिंग होगी तो सीज़न 2 के लिए तैयारियाँ हैं। एंजॉय करें टेप बॉल को। अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का, और बहुत खुशी होती है कि सारे पुराने क्रिकेटर्स भी सब यहाँ पे हैं और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हैं। और मेरे पहली बार यहाँ पे आया है, बहुत अच्छा स्टेडियम है और आई थिंक जो जिस चीज़ के लिए हम ये पैसे जमा कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने एज अ कंपनी भी इसके लिए काफ़ी सारे एफ़र्ट्स किए हैं और अच्छा है कि यहाँ पे और लोग आ रहे हैं और इस इवेंट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू पैसे रेज होंगे। तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन और थैंक यू फॉर पुटिंग द इवेंट टुगेदर। थैंक यू शाहिद भाई। बड़ी खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात ये थी ये पौधा जो लगाया, मगर इससे लोगों ने एंजॉय किया और इसीलिए आप देखें कि आज और पहले में कितना फ़र्क है। लोग बड़ा यानी इंटरेस्ट लोगों ने लिया, बच्चों ने लिया, सबने क्रिकेट का मज़ा आया खेलने में भी, देखने में भी। तो अगर इस तरह की लाज़मी बात है कि एक तरीके से ये हेल्दी एक्टिविटीज़ है। लोगों हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है लोगों के पास इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है जैसे दुनिया में कितनी चीज़ें हैं। तो ये क्रिकेट खेलना 10 ओवर 20 ओवर्स की क्रिकेट और ये टेप बॉल, इसमें हर आदमी खेल सकता है चाहे जो भी है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं है, डर नहीं है, आपको लगने का नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इंजॉयमेंट क्रिकेट। अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और आप जानते हैं तो ये ऑर्गेनाइज़र है ना, तो ऑर्गेनाइज एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना वो बड़ी एक आर्ट है। तो आप कोई भी इवेंट को करें तो वो आपको पता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो क्रिकेट के लिए वाई नॉट, उन्होंने देखा कि पैशन लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और फिर नाइट क्रिकेट और फिर ये टेप बॉल इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट, तो बड़ी इंजॉयबल है। और आप देखेगा कि ये बहुत जल्दी है ना पूरे पाकिस्तान में जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। मैं बदर एक्सपो को एक तो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ कि 4-5 साल से मैं इसके साथ हूँ, इस ग्रुप के साथ, और इनकी बड़ी खिदमात हैं बहुत सारे मामलात में। सबसे पहले ये जो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग है, ये एक फाउंडेशन है उन बच्चों के लिए ग्रो करने के लिए जो कि क्रिकेट में हिडन टैलेंट है। अगर ये हिडन टैलेंट हम बाहर लेकर नहीं आएंगे तो ये किस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ज़ुहैर नसीर साहब और जो ये ग्रुप का हारून रशीद साहब हैं, उसके अंदर जावेद मिर्ज़ा साहब बड़े नाम हैं, इन लोगों का बहुत किरदार है इसके अंदर, जो कि इस ग्रोथ दे रहे हैं उन बच्चों को जिनका टैलेंट जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंडली ये जो लीग हो रही है, इससे हम ना सिर्फ एक अपने जो इर्द गिर्द माहौल है उसके अंदर एक खुशगवार क्रिकेट की सेरेमनीज़ कर सकते हैं और क्रिकेट को फ़रोग़ दे सकते हैं, बल्कि हम जो यूथ है हमारी कराची की, हमारे पाकिस्तान की, उस यूथ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर अ बेटरमेंट। ये जो टेप बॉल को इन्होंने जो ग्रोथ दी है, ये ग्रोथ मतलब इट्स वेरी गुड कि ये चीज़ इंटरनेशनली हाईलाइट की जा रही है कि टेप बॉल क्रिकेट भी हम जो है उसके अंदर भी अपना एक मेयार बना सकते हैं।
तो आई थिंक वाकई ये ज़ोहैर साहब की कैपेबिलिटी है जो इस चीज़ को ऊपर लेकर आए। पहला सीज़न अच्छा था, बहुत ही अच्छे हमने अच्छे प्लेयर्स देखे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि टेप बॉल में भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं। तो एक दो प्लेयर्स मुझे बड़े अच्छे नज़र आए, जिनमें फास्ट बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, और ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अब जिस तरह की क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर होती जा रही है, तो वी नीड प्लेयर्स लाइक हार्ड हिटर्स, और जो अच्छा बॉल को बैट के ऊपर लेते हैं, और फास्ट बॉलर्स, वी नीड फास्ट बॉलर एज वेल। सो मेरे ख्याल से जो पहला सीज़न था उसमें भी एक दो प्लेयर्स हमें मिले, और इंशाल्लाह जो आज देख रहे हैं आप जिस तरह का महफिल यहाँ जमा है, अच्छी ड्राफ्टिंग हो रही है, तो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्काउटिंग यही होती है कि आप डिग आउट करते हो अपने नए टैलेंट को, तो नया टैलेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है। स्ट्रीट क्रिकेट पे भी आप अगर आप कहीं जा रहे होते हो, आपको कोई अच्छा बैट्समैन नजर आता है, आप रुक के ज़रूर देखते हो कि यार बड़ा अच्छा खेलता है। तो इसी तरह अब क्रिकेट लाइव होगी, टीवी पे लोग देखेंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म लड़कों को मिल रहा है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर आएँ। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मैसेज यही है कि ऑलवेज़ वर्क हार्ड, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास अगर चांस जब मिलता है तो आपके पास ग्राउंड में परफॉर्म करने का एक मौका मिला है आपको, तो आप ये सोचें कि उस मौके से मैं फ़ायदा होता हूँ। आप थैंक यू बोलना चाहेंगे बदर एक्सपो के, उसने इतना अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, और ज़ोहैर साहब का जितना बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया बदर एक्सपो का, और क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है ये, और उसमें इतना टाइम निकालना और इस तरह इवेंट को मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इन्होंने सारे टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को गैदर किया है, लेकर आए, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ज़ोहैर साहब की बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है इसके अंदर। KTPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत भी है, और कराची वालों के लिए मैं एक स्पेशली पैगाम दूंगा कि इसके अंदर जितना अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहें वो करें, क्योंकि हमें बहुत 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 टाइम के बाद हमारे ग्राउंड दोबारा रौनक में नज़र आए हैं, और जितनी हमारी फिज़िकल फिटनेसेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, उनके हवाले से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना इनके लिए खुशाइन है। दूसरा ये कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि KTPL सीज़न 1 जब गया था माशाल्लाह से, तो लोगों ने इसको बहुत अच्छा अप्रोच किया, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, और सीज़न 2 जिस तरीके से अभी हम स्टार्टअप देख रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि 16 to 31 इस वक्त ग्राउंड फुल नज़र आने वाला है। तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कभी सोचा था कि टेप बॉल भी इस लेवल पे जाएगा कि वो टेलीवाइज्ड होगा और इंटरनेशनली टेलीवाइज्ड होगा? इसके लिए हम सबसे पहले थैंक्स करते हैं बदर कमर्शियल वालों का, जिन्होंने इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। दूसरा हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत माने जाने लेजेंड हैं हमारे जावेद मियां साहब, तो जिन्होंने इसको होम ग्राउंड आके इस पिच को ओन किया है, और हमारे स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो जितना अच्छा अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम इस वक्त कराची के लिए, कराची क्रिकेट के लिए, और स्पेशली एक स्पेशलिटी है कि पहली बार टेप बॉल एक इंटरनेशनल लेवल को टच करने के लिए जा रहा है, जिसमें आज आपने स्टार्टअप देखा है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ मर्ज हो रहे हैं, और हमारा आगे भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ब्रांड्स आपके साथ लगे रहेंगे। कराची और पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर कोई पहला नाम आता है और सबसे बड़ा क्रेज़ होता है, वो चाहे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो सब इस वक्त पहले क्रिकेट को अप्रोच करते हैं, और क्रिकेट के हमारे जितने भी माशाल्लाह से सुपर स्टार्स हैं, उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत वो है, बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला आगे जाके इंशाल्लाह ताला सबके लिए खुश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुज़म्मिल अतहर है, और हमारी टीम है जौहर जवान। KTPL में हमारी ये पहली शमूलियत है
और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस दफ़ा 2022 के अंदर KTPL का पार्ट बने हैं। जौहर जवान एक टीम नहीं है, बल्कि ये एक करेज और एक जज्बे का नाम है जिसको हम कराची की आवाज़ बना के KTPL के अंदर हमने इसको एंटर किया है। हम चाहते ये हैं कि इस जौहर जवान को ना सिर्फ ये कि ये आगे जाए, बल्कि KTPL इटसेल्फ ये आइंदा सालों के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला जाए और पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसी तरीके से पाकिस्तान से एक क्रिकेट काउंसिल आगे बढ़े जो KTPL या पाकिस्तान टेप बॉल एसोसिएशन के नाम से हो और इसको लेकर ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा, हम सब की यादें हैं टेप बॉल के साथ, तो आपकी क्या यादें हैं टेप बॉल के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में जो बच्चा जवान हुआ है आज और इस वक्त अबव 30 है, मेरा ख्याल ये है कि हर बच्चा टेप बॉल के उस एरा से गुजरा है। चाहे आप उसके अंदर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ले लें या मेरे जैसे लोग जिन्होंने अंडर 16 कराची से खेला लेकिन उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर क्रिकेट को कैरी नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त की ये ज़रूरत है बहुत बड़ी कि टेप बॉल जिसने सारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में जन्म दिया है, जिनका पहली सीढ़ी और पहली जो दरसगाह उनकी क्रिकेट की रही वो टेप बॉल रही, आज उस खेल को इग्नोर ना किया जाए और उसको पाकिस्तान के गोशे गोशे में इस एसोसिएशन के ज़रिए, KTPL के ज़रिए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस क्रिकेट को हम लेकर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, जहाँ तक देखा जाता है कि हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं या हम हार्ड बॉल की बात करते हैं तो टेप बॉल को वो वैल्यू नहीं मिलती। आपके ख्याल में KTPL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि उस हिडन टैलेंट को सामने लेके आ रहा है? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक किसी ने इस टेप बॉल के ऊपर काम नहीं किया इस तरीके से जिस तरीके से बदर एक्सपो ने पहली दफ़ा काम करना शुरू किया। तो काबिल सताइश है ये चीज़। अगर ये काम पहले शुरू हो जाता तो शायद हार्ड बॉल के इक्विवेलेंट कोई जो है वो एसोसिएशन, कोई कुछ ना कुछ पैरेलल इससे शुरू हो चुका होता। तो मैं समझता ये हूँ कि जो इग्नोरेंस पहले दौर के अंदर रही उसकी वजह यह रही डेफिनेटली कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो हार्ड बॉल को प्रमोट करती थी, तो किसी ने आज तक इसको प्रमोट नहीं किया, अदरवाइज शायद ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता था। तो अब जबकि ये प्रमोट होना शुरू हुई है, जियो स्पोर्ट्स, BTV और बहुत सारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर ये दिखाया जा रहा है, तो मैं समझता ही हूँ कि वक्त आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि बदर एक्सपो ने जो काम शुरू किया है उसकी बुनियाद के ऊपर ये टेप बॉल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े खेल के तौर पे जाना जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप जितने एंथुसियास्टिक हैं कि फ्यूचर में आप भी जो है ना वो ट्रैक सूट पहन के खेल रहे होंगे ग्राउंड में यकीनी तौर पे। जी, मैं अपनी टीम का पार्ट हूँ और ऑल्दो कि मैं कैप्टन नहीं हूँ बट आई एम अ टीम प्लेयर और मैं आपको इंशाल्लाह इसके तमाम मैचेस के अंदर उसी किट के अंदर जौहर जवान की आपको नज़र आऊँगा और ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं जौहर जवान का ना सिर्फ के टीम ऑनर हूँ बल्कि मैं इसके एक खिलाड़ी के तौर पे अंडर द मैनेजमेंट ऑफ नवीद लतीफ़ भाई और जो हमारे कैप्टन हैं सैयद नासिर, उनके अंडर के अंदर मैं एक टीम प्लेयर के तौर पर भी खेलूँगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? जी, मेरा मैसेज ये है कि अगर लोगों को इस फ़िरक़ावारियत से, इस स्ट्रेस से, इस फ्रस्ट्रेशन से निकलना है तो उसका रुख सिर्फ दो जगह हैं, एक किताब और एक खेल का मैदान। ये इन दो जगहों को आप दोबारा से आबाद कर दें, आपकी वो जगहें जो दहशतगर्दी की आमाजगाह बनती हैं वो सुनसान हो जाएंगी। जैसे जैसे आपके ये ग्राउंड आबाद होते चले जाएंगे, ये दहशतगर्द अपनी मौत आप मरते चले जाएंगे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी इंटरनेशनल इवेंट पे आई हुई हूँ। जिस तरह की ये ड्राफ्टिंग है, जिस तरह के कहना चाहिए जो कंप्यूटर का वर्क क्या कहलाता है, वो जो पूरे ड्राफ्टिंग का एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है, जिसने बनाया है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना इसमें सोचना चाहिए कि आप बाहर से लोगों को क्यों हायर करते हैं। आपको तो अपने लोगों में इतना टैलेंट है, आप उनको यूटिलाइज करें ना। जब इतना अच्छा हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रहा है तो वाई नॉट आवर पीपल, बाहर के लोग क्यों आएंगे।
तो रमीज़ राजा साहब को मैं ख़ास तौर पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों जिन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ। और इस केटीपीएल के जो इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और सारे यहाँ पर लेजेंड्स भी नज़र आ रहे हैं, लोग भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना इतने लंबे लंबे प्रोग्राम से लोग अमूमन बैठते नहीं हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ 3-4 घंटों से एक समा बंधा हुआ है। क्या कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि जी वो टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट इतना बड़ा हो जाएगा कि टेलीवाइज हो रहा होगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, आप यकीन करें मिसबा, जब मैं गलियों में जाती थी कवर करने के लिए, जब लड़के खेल रहे होते थे पोलो ग्राउंड में, कितना 10 या 15 रुपए का टिकट लेके लड़के क्रिकेट खेलने जाते थे, सड़कों पे लोग खेल रहे होते थे, नाइट मैचेस हो रहे होते थे, घरों में गेंदें जाती थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना, मुझे नहीं लगता था कि दोबारा कभी हो पाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है उससे इतने ज़्यादा ज़िंदगी आसान भी बना दी एक तरह से, लेकिन उसका जो फ्लेवर होता है ना असल चीज़ का, एक मैनुअल होता है, एक ऑटो होता है। जो मैनुअल है वो आप गेंद को हाथ में टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और एक होता है आप मोबाइल पे खेलते रहें। तो वो वाली चीज़ जो हमारा बचपन था ना, वो एक तरह से दोबारा रिवाइव हो रहा है। मैं कहती हूँ रिमिक्सिंग हो रही है, गाने बन रहे हैं, रिवाइव हो रही हैं चीज़ें, पुराने पुराने गाने नए बन रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं नया हो सकता। और ये बदर एक्सपो ने और केटीपीएल ने जो है वो सच करके दिखा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अपना इस दफ़ा हमें एज ए मेंटोर उन्होंने अपना ज़िम्मेदारी हमें दी है, तो एज ए मेंटोर, बल्कि एज ए प्लेइंग मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर थोड़ा कम होती है, लेकिन एज ए मेंटोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एज ए मेंटोर इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके टेप बॉल का नाम सुन के जहन में क्या आता है? टेप बॉल के नाम से कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि टेप बॉल, लेकिन इसके साथ क्रिकेट ज़रूर आती है, बस ये बहुत बड़ा एक जो एज है कि क्रिकेट क्रिकेट है, वो टेप बॉल में हो, वो हार्ड बॉल हो, वो वाइट बॉल हो, वो रेड बॉल हो, तो चूँकि क्रिकेट ही हो रही है और क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एज ए मेंटोर या एज ए प्लेयर या एज ए कोच जैसा भी हो, वो हम एज ए क्रिकेटर हम उसके लिए हाजिर हैं। मैं समझता हूँ ज़्यादा बहुत बेहतर है कि आपके इतने एक्सपीरियंस का यूथ को फ़ायदा होगा, उनको आपकी मेंटोरशिप में लर्निंग होगी और वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एक्चुअली ये जो बदर एक्सपो के ज़ुहैर भाई और बदर एक्सपो वालों का जो ये आइडिया है वो है भी, और इनके साथ टेस्ट प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स अटैच करने का उनका मकसद भी यही था कि जो टीमें अनडिसिप्लिन्ड, और टेप बॉल आपको पता है कि वो गलियों में और छोटे ग्राउंडों में, पार्कों में खेली जाती थी, वहाँ पे डिसिप्लिन का बड़ा फुकदान होता था। तो ये जो टेस्ट प्लेयर्स और ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो टीम के साथ लगाए हैं, वो इसीलिए लगाए हैं ताकि क्रिकेट के जो अमूज हैं, जो उसके आदाब हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वो लड़कों को बताई जा सकें, ताकि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएं या अच्छे लेवल पे जाएं तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से वो जानते हों और इनको पता हो और नॉलेज हो, वो उनके लिए भी आने वाले दिनों में आसानी होगी। तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से अगले प्लेटफॉर्म पे भी आसानी होगी। जी, ये बदर एक्सपो की बहुत बड़ी कोशिश है, और बहुत बड़ी कोशिश पर तो मैं नहीं कहूँगा, ये अब वो प्लान है जो कामयाब हो चुका है। अब ये कोशिश नहीं रही, तो ये तो अब फिजिबल भी है और आपके सामने सारा कुछ हो भी रहा है, और ऑन द ग्राउंड सारी रियलिटी जो सी है वो मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि वाकई ही बहुत बड़ा, ये देखें जो लड़के खेलते बहुत अच्छा थे, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके अर्निंग के कोई मौके नहीं थे, उनको काम भी करना पड़ता था, जॉब्स भी करनी पड़ती थी, और साथ में शौक़ भी पूरा करते थे। लेकिन अब ये है कि अगर आप प्रोफेशनल टेप बॉल को अपनाते हैं और प्रोफेशनल इस फील्ड में आते हैं, तो आप प्रॉपर एक अपनी अर्निंग भी कर सकते। वो प्लेयर्स जो स्ट्रीट क्रिकेट में ही खेलते थे, स्ट्रीट क्रिकेट में ही ख़त्म हो जाते थे, अब वो दोबारा से इस सर्किट में इन हो गए हैं, और वो प्रॉपर अब बाकायदा वो क्रिकेटर भी खिला रहे हैं, और क्रिकेट के बाकायदा वो स्टार्स भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले तो ये है कि इतना कामयाब पहला वाला जो टूर्नामेंट गया है, हाँ, तो और जिस तरीके से इंतज़ामात हुए थे, तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी एक लोकल क्लब लेवल के अंदर इतना शानदार तरीके से उसको प्रेजेंटेशन मिलेगा। और इस दफ़ा तो पहली दफ़ा से भी ज़्यादा अच्छा
गेटअप है, प्रेजेंटेशन है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी फ्रेंचाइजर्स जितने भी थे वो काफ़ी खुश गए लास्ट टाइम, तो इस दफ़ा उन्होंने वापस खेलने की हामी भरी है। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, और इस किस्म के टूर्नामेंट अगर हो रहे हैं और इससे कोई ना कोई क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलेगा। आप क्या समझते हैं टेप बॉल का फ्यूचर कितना ब्राइट है? टेप बॉल ही तो जो है जो बेसिक सिखाती है, क्योंकि उससे डर नहीं लगता, और जब बच्चा खेलता है तो उससे ये डर नहीं लगता, तो वो बेसिक्स उसकी बेहतर होती है, तो उसकी वजह से हमें प्लेयर मिलते हैं। तो इसका फ्यूचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बेहतर होता गया, क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे कि रोड के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है, तो उनकी कोई वो नहीं थी, आवभगत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टेप टेप बॉल क्रिकेट की वजह से बेसिक्स अच्छी हुई, बेसिक्स अच्छी होने की वजह से वो क्रिकेटर हुए, वो क्रिकेटर को फिर हमने जो चूज़ किया, तो अब वो टेलीविज़न पे आ रहे हैं। अब जितने भी जो रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं और जो सीमेंट के ऊपर खेलते हैं, वो अब अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये इवेंट जो है वो इतने अभी जो टेंशन का दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर हमें ख़ास तौर पे इस इवेंट के ऐसे इवेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। तो बस मैं भी यहाँ पे इनको प्रमोट करने के लिए आई हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी आएँ और इसको एंजॉय करें जिस तरह से मैं एंजॉय कर रही हूँ। यार हर खेल जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जिस तरह से हम लोग अभी एक खेल की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट उसमें एक नुमाया कामयाबी रखता है। तो उसी तरह से बस ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई खेल को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं DH दबंग को सपोर्ट कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है? बिकॉज़ मुझे उनके सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरे साथ इस वक्त शहबाज इस्लाम साहब हैं जो कि बहरिया बुल्स को हेड करते हैं, ओन करते हैं। शहबाज साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बताइए कि आपके को क्यों ख्याल आया कि टेप बॉल में पार्टिसिपेट किया जाए? देखिए, टेप बॉल तो हम सब खेलते हैं। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमारे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग टेप बॉल खेल रहे होते हैं। टेप बॉल वो क्रिकेट है जो कि प्रॉब्ली पूरे पाकिस्तान में जिसने क्रिकेट खेली है उसने टेप बॉल क्रिकेट खेली है। सो आई थिंक, और ये यंगस्टर्स की क्रिकेट है, तो इसलिए दैट इज़ द रीज़न में हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। KTPL पाक कराची का एक बहुत प्रीमियर टूर्नामेंट है, लीग है, और इसमें हमने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया है विद द नेम ऑफ बहरिया बुल। हम समझते हैं कि हम सब मिल के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे और हमारे मुल्क के, हमारे शहर के क्रिकेट को फ़रोग़ दे सकेंगे। कभी आपके जहन में था कि टेप बॉल इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि ये एक सैटेलाइट TV पे लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, बल्कि उसकी ड्राफ्टिंग भी लाइव ब्रॉडकास्ट होगी? नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ की है, और इसका क्रेडिट बदर एक्सपो को जाता है कि ये जिस तरीके का यहाँ पे इस वक्त मैं अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, दिस इज़ एन एक्सलेंट, और ये उन क्रिकेटर्स के लिए भी बड़ी अच्छी है जो यहाँ पे जिनकी ड्राफ्टिंग हो रही है, एंड दे आर गेटिंग इट टू एन इंटरनेशनल लेवल, माशाल्लाह। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द क्रिकेट ऑफ एटलीस्ट इन कराची। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना, वो हमारी बाइंडिंग फोर्स है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, नेल्सन मंडेला ने तो अपने रग्बी के ज़रिए पूरे साउथ अफ्रीका को मिलाया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिकेट वो एक वाहिद स्पोर्ट्स है हमारे मुल्क का, बल्कि शायद वो वाहिद इवेंट है जिससे पूरी टीम एक मिल जाती है। सो आई थिंक इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिकेट के गेम को फ़रोग़ दें, और उसमें टेप बॉल क्रिकेट का तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आपने बताया कि यकीनी तौर पर वो तमाम प्लेयर्स जो कि नेशनल लेवल पे जाके नहीं खेल सके या डोमेस्टिक नहीं खेल सके, उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, या अपनी स्किल को प्रेजेंट करने का।
इट इज़ बोथ वेज. यस यू आर राइट, लेकिन ये भी उन यहाँ पे यंगस्टर्स भी आएंगे जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जावेद मिर्ज़ा, हारून रशीद, तौसीफ भाई, ये सब होंगे, तो दे विल विटनेस इट. और इनमें से भी ये कहना कि सिर्फ के जिनको चांस नहीं मिला वो ये खेल रहे हैं, हो सकता है यहाँ से भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर्स निकले जो जाके आगे हमारी नेशन को रिप्रेजेंट करें. कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आई थिंक ये इवेंट हम सबका इवेंट है. कराची के लिए ये बहुत ज़रूरी इवेंट है और हम सबको मिलके चाहिए कि इसको पार्टिसिपेट करें, इसको देखें. जो लोग आएंगे, पूरे मुल्क से लोग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें. ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे आएँ एंड मेक दिस इवेंट अ सक्सेसफुल इवेंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. सबसे पहले मैं ज़ोहर आपका शुक्रिया अदा करूंगा. और हकीकत में मुझे जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मैं कोई PSL के इवेंट पे आया हुआ हूँ. वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड. थैंक यू सो मच. मेरे लिए काफ़ी सारी खुशी की चीज़ें हैं. दूसरी चीज़ ये खुशी की है कि मैंने अपने क्रिकेट प्रोफेशनल इस ग्राउंड से शुरू किया. डॉक्टर मोहम्मद अली tried to up the ante, but just get the feeling that in the middle stages of the innings, both Majid Goli and Ali Chota were pretty exceptional. Yes, they were trailing by 17, but excellent bowling, especially by Fazal Afridi towards the end of the innings. Picked up 2 wickets, castling the stumps of both the batters. Did not concede many runs either. They lost another wicket because of the run out of the final ball of the innings, and now they have finished on 99 for the loss of 4 wickets. So not a big chase it's going to be for Mali Malangs, who will have to chase just 82 runs in the last innings. That's the batting display of Gulshan Kohar. Taimur Mirza scored 16 of 6 before he was dismissed. Bahadur once again being the top scorer. Ilyas batted well as well at number 3. Ehsan scored 3. Raza was dismissed of the very first ball courtesy of a run out. Talking about the bowling lineup, once again 2 new ball bowlers, Majid Goli and Ali, were exceptional. Majid Goli picking up a wicket and Fazal Afridi picking up 2 wickets in the last over, not allowing the opposition to go past 100. So the target for Mali Malangs when they will come out to bat in the 4th innings is going to be 82, and they will be having their allotted 6 overs. Time for a change in the commentary box. I'm going to be replaced by Naseem Rajput and senior journalist Yahya Hussaini. वेलकम यहिया. ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला और जिस तरीके का कमबैक हमने देखा मलीर मलंग्स का अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग साइड. पहली इनिंग में 118 प्लस टारगेट उन्होंने चेस भी किया, फिर लीड भी हासिल की, और अब कोई बहुत बड़ा टारगेट उनके सामने नहीं है. 80 प्लस रन जो उन्हें चेस करने होंगे. इस लिहाज से देखा जाए तो 3 जीत हासिल करके आ रहे हैं मलीर मलंग्स और 2 जीत हासिल कर चुके हैं यहाँ गुलशन गौहर. ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन जिन पे बड़ी जिम्मेदारी होगी. टीम कैप्टन दाऊद पठान और उनके साथ इमरान आए शायद बैटिंग के लिए, जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग की थी पहली इनिंग में. DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी, जहां पर कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 12वां मुकाबला और 83 रन की इस मैच में जीत के लिए ज़रूरत होगी मलीर मलंग की टीम को. और अगर इनकी पहली इनिंग की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये रन्स इतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि पहली इनिंग में इन्होंने 136 रन स्कोर किए थे. 119 के जवाब में गुलशन गौहर के 17 रन की बरतरी भी हासिल की थी, और कलीम ने 65 रन स्कोर किए थे और 49 रन स्कोर किए थे इमरान ने. तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो चांसेस मलीर मलंग के ही हैं, और ये DK बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जो कि कप्तान है मलीर मलंग के. और नसीम, आप बता रहे थे कि अब तक नाकाबिल शिकस्त है मलीर मलंग इस टूर्नामेंट में.
दोनों टीमें अगर देखा जाए तो दोनों टीम्स जो है वो नाकाबिले शिकस्त, और इमरान ने पहली इनिंग में ज़बरदस्त बैटिंग की थी मलंग्स के लिए। डीके जो कप्तान है मलिर मलंग के, और आधे ही गेंद को उन्होंने उठा दिया है और गेंद एक फलक बोल छक्के के साथ तमाशाइयों के दरमियान पहला छक्का पहली गेंद। जबरदस्त बैटिंग, टीम कैप्टन फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दिए दाऊद खान पठान, और इस बार डीके ने शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया, और हालांकि इस लैंड इतनी बुरी नहीं दी है भाई। और आप 83 रन चेस कर रहे हो, पहली गेंद पर छक्का लग जाए, और मास की अगली गेंद इस बार निस्बतन आहिस्तगी के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि गेंद उनके पांव से टकराई, लेग बाय का ये रन्स होगा, और अंपायर का इशारा कि ये लेग बाय का रन्स है। तो 83 रन के ताकुब में 7 रन पहली 2 गेंदों पर नसीम, और इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता। बिल्कुल यही है, लेकिन अच्छा कमबैक मास की जानिब से दिखाई दिया। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद अच्छी यॉर्कर लेंथ पे उन्होंने गेंद की, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक डॉट बॉल इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर जहां 4 छक्के लग रहे हो, एक ओवर में 5 छक्के लग रहे हो, वहां पे 2 डॉट बॉल की बहुत अहमियत हो जाती है। मास के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर इमरान मौजूद हैं, जिन्होंने पहली इनिंग में बड़ी चारेहान और तूफानी 15 गेंदों पर 49 रन की इनिंग खेली थी, और आधे ही गेंद को उन्होंने खेला, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथ में बर्ख रफ्तारी के साथ, और इस बार रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों ने इरादा तर्क किया। ये देखना होगा, अगर ये डायरेक्ट थ्रो होती तो शायद दाऊद खान पठान आउट हो सकते थे। खासे क्रीज से बाहर आ गए थे दाऊद खान पठान, और थोड़ा सा उन्होंने अंपायर से टाइम लिया है। इमरान के साथ जाकर वो बात कर रहे हैं कि पहली 2 गेंदों पर 7 रन हासिल कर लिए हैं, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा और आपका क्रीज पर रहना ही गुलशन गौहर के लिए दबाव का सबब होगा, तो गैर ज़रूरी रन ना लें, गैर ज़रूरी शॉट ना खेलें। और इस बार फील्डर के ऊपर से, पहले ऐसा लगा कि फील्डर गेंद को कैच कर लेंगे, लेकिन दूसरा रन भी मुकम्मल किया। आमतौर पे डीप कवर नहीं होता, जो पावर प्ले होता है उसमें फील्डर ज़्यादातर जो है वो कवर के अंदर होते हैं, तो जो भी स्ट्रोक आप कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब हो जाते हैं उस पर आपको रन्स मिलते हैं। रन्स की ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे वो किसी भी शक्ल में मिले, वाइड, लेग बाय, बाय, 4, 6 रन बनने चाहिए बस। और मोस्टली रन्स बनते हैं इस तरह का गेंद। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक कोई डॉट बॉल हो जाए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट करार दी जाती है। इस तरीके से ब्रिलियंट कमबैक कहूँगा नसीम में, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का खाया माज ने, और उसके बाद अगली 4 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने जो है वो 4 रन कंसीड किए हैं, 3 रन दिए हैं, तो इस तनाजुर में तो अच्छा कमबैक है मास का। इस ओवर में आखिरी मर्तबा, और इस बार बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है गुलशन गौहर के खिलाड़ी ने। ये कैच हो सकते थे, और ये बड़ी क्रूशल विकेट होती। इमरान अच्छी फॉर्म में है, विकेट कीपर देखे कैच के लिए गए, और हाथ में आके दूसरी अटेम्प्ट में ये कैच छूट गया, बड़ी की विकेट होती। मास खुश नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, लेकिन कैच जरूर छूटा, लेकिन नसीम रन नहीं बना यहाँ पर, ये एक अच्छी बात है। पहली गेंद पर छक्का और अगली 5 गेंदों पर महज 3 रन, तो गुलशन गौहर जो दबाव में आ गई थी डीके के पहले ही छक्के के साथ, दाऊद खान जो कि कप्तान हैं मलीर मलंग के, उसके बाद अगली 5 गेंदों पर अच्छी रिकवरी उन्होंने की है। वेरी वेल बोल्ड माज ने जो जैसे आपने कहा या पहली गेंद पे छक्के के बाद जो स्ट्रॉन्ग कमबैक, और 8 रन पे उन्होंने अपना ओवर ख़त्म किया, और आखिरी बॉल पे तो विकेट भी तकरीबन वो लेने में कामयाब हो गए थे। अनलकी रहे कि वो कैच विकेट कीपर नहीं ले सके, और इमरान की विकेट होती है जो बहुत ही क्रूशल है इस स्टेज के ऊपर इस मैच में, क्योंकि इमरान अगर 3 ओवर 3.5 ओवर भी खेल गए यहाँ पर, तो फिर गुलशन के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा, जिस तरह की फॉर्म उनकी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा नसीम राजपूत ने, क्योंकि मलीर मलंग ने पहली इनिंग में 136 रन किए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी कलीम आने वाले बैट्समैन होंगे जिन्होंने 22 गेंदों पर 65 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और इमरान जो कि इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पर, उन्होंने 15 गेंदों पर 49 रन स्कोर किए थे, 2 चौके और 6 छक्के।
हसन लेफ्टी की इस गेंद को पुल किया, प्रॉपर टाइम नहीं कर सके, फील्डर पहुंच रहे हैं वहां पर और ये अपॉर्चुनिटी भी जाया हो गई। ये इस तरह के कैचेस अगर ड्रॉप होंगे तो फिर मैच जीतना खासा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, बॉलर बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा नसीम, 2 गेंदों पर 2 कैच ड्रॉप हुए हैं और ये कैच होना चाहिए था। और इस तरह की क्रिकेट में जहां पर जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जोश और जज्बा भी है। बिल्कुल गेंद के नीचे आ गए थे लेकिन अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर सके और गेंद उनके हाथ में आकर जो है वो निकल गया। तो डीके दाऊद खान जो मलीर मलंग के कप्तान हैं थोड़ा दबाव में होंगे क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर आ नहीं रहा है सही तरीके से। हसन, यही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे वो गेंद को। डग आउट में खुशी दिखाई दी गुलशन गौहर के एक डॉट बॉल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा और फिर 2 गेंदों पे 2 अपॉर्चुनिटीज जाया कर दी दोनों बैटर्स। और ये अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम दिखा सकें तो शिकायत की है इमरान ने गेंद के हवाले से और अंपायर ने गेंद मांगा भी, जो कि इस वक्त स्टंप्स को जो है वो ठीक कर रहे हैं। बेल्स उन्होंने रखी, इमरान का बैट वापस किया। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बॉल में कोई फॉल्ट है क्योंकि बैट के ऊपर बॉल आ नहीं रहा है नसीम। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इस चीज़ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। हर गेंद पे बैटर्स टेप चेक करते हैं, तो इसको खासा हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब और पूरी मैनेजमेंट कमेटी ने कंट्रोल किया। और इस बार भी सही तौर पर टाइम नहीं कर पाए लेकिन रन बनाने का मौका है और उसको अवेल किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं नसीम, क्योंकि अगर इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो डेफिनेटली यहाँ पर दबाव जो है वो मलीर मलंग के ऊपर मजीद बढ़ जाएगा। बिल्कुल दबाव इस वक्त हमें चेहरे पे दिखाई दे रहा था। गुलशन गौहर के को ऑनर है यूनुस शाहू उनके चेहरे पे, क्योंकि टीम ऑनर्स और जफर अब्बास भी पहुंच गए। जेडीसी के रोए रवा जो टीम ऑनर है मलीर मलंग्स के, और आपने क्राउड का शोर भी सुन रहे होंगे उनके डगआउट में, जिस तरीके का ढोल भी बज रहा है, जश्न का भी समय। बिल्कुल डायनामिक पर्सनालिटी है जफर अब्बास और बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज डगआउट में जितना शोर है मैंने इससे पहले टूर्नामेंट में देखा नहीं है इतना शोर। एक एक गेंद के ऊपर हौसला अफजाई हो रही है। हसन इसी दौरान अपनी अगली गेंद करने के लिए तैयार हुए और इस बार ड्राइव किया है, खूब खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 2 टप्पे खाने के बाद 4 रन। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, देख लिया था फील्डर सर्कल के अंदर है, इसीलिए ये जफर अब्बास भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दी है जब उनका बैटर कोई स्ट्रोक खेलता है। और उनके डगआउट का शोर इस वक्त हमारे नाजरीन जरूर सुन रहे होंगे। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई, पूरा फायदा उठाया पावर प्ले का। और नसीम चूंकि फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर मौजूद नहीं थे, अगर फील्डर बाउंड्री लाइन पर होते तो ये 1 रन से ज्यादा बनना नहीं था। ये पावर प्ले चल रहा है और ये 2 ओवर का पावर प्ले मुकम्मल होने को है। हसन इस ओवर में 5वीं मर्तबा और इस बार गेंद को उठा दिया है, किसी शक को शुबे के बगैर ये इस इनिंग का दूसरा छक्का होगा। कैच मिस करेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। यहाँ पर मिमरान का कैच ड्रॉप किया था विकेट कीपर ने और मिमरान ने पहली इनिंग में भी शानदार बारी ली थी। और अगर मिमरान, मैंने कहा 3.5 ओवर तक रुक गए, 4 ओवर तक रुक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ गुलशन गौहर को कमबैक करना। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जहां आपने पीछे गेंद की है, बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम मिला है तो बैट्समैन ने गलती की नहीं है, क्योंकि जो बैट का ब्लेड है वो तो गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ा है और गेंद जब बल्ले पर टकराती है और गेंद के अंदर जो है वो गैस भरी है तो फिर वो आसमान की बुलंदियों को छूती हुई दिखाई देती है। डीके 2 छक्के लगा चुके हैं, सामना करेंगे हसन का और ये तीसरा छक्का होगा। बुलंदो बांग छक्का, डीके का कप्तान इनिंग खेल रहे हैं। इसी के साथ 2 ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। वेरी वेल प्लेड मिमरान। जैसे हम यही बात कर रहे थे कि मिमरान ज्यादा देर रुक गए तो फिर ये शॉट खेलते में नहीं रुकते, फिर टीम के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। 2 ओवर मुकम्मल हुए, मलीर मलंग 28 बगैर किसी नुकसान के। एक्सपेंसिव ओवर था ये, 19 रन इस ओवर में हसन ने दिए, 2 छक्के उनको और 1 चौका लगा उनको और पहले ओवर में 9 रन बने थे। तो ये मैच बहुत हद तक अब मलीर मलंग की तरफ टिल होता हुआ
लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कहना कबलस वक्त होता है। तो मिमरान ने एक बार फिर पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी अपने जलवे बिखेरते हुए, और याद रहे पहली इनिंग में उन्होंने 6 छक्के मारे थे और इस इनिंग में अब तक 2 मार चुके हैं। और ये सारे छक्के दिख रहे होंगे या 84 से जायद ममालिक में इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की ट्रांसमिशन जारी है। फैरका, एक्सपी, एमबीसी, विलो टीवी कनाडा, अमेरिका दोनों जगह दे रहे हैं। सब सहारा एंड जियो, ये सारे वो ममालिक भी नीचे उनकी फहरिस्त दिखाई दे रही है। कतर से लेके इजिप्ट से लेके टेप बॉल क्रिकेट को अफगानिस्तान में और हर जगह पे एंजॉय किया जा रहा है। और जहां पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल ज़बरदस्त स्पोर्ट्स चैनल ये नशरियात दे रहा है। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं 2006 में जिसकी शुरुआत हुई और आज हर जगह सिर्फ T20 क्रिकेट की बात हो रही है, तो असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद से T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम के ग्राउंड से। इसी दौरान माज अपने नए ओवर की पहली गेंद के साथ, लेकिन डीके जो कप्तान हैं मलीर मलंग के, उनको कोई प्रॉब्लम है, गालिबन साइड स्क्रीन के सामने कुछ मूवमेंट है और उन्होंने अंपायर की तरफ देखा। अंपायर ने माज को कहा कि आप बॉल ना डालें। 4 ओवर में 55 रन दरकार है। या आप इस मैच का फिनिश देखिएगा। पहली इनिंग आपने देखी होगी, ये है वजह जिसकी वजह से मैच रुका हुआ है। ये भी मलंग है अपनी तबीयत में, इनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। जफर भाई के साथ तो नहीं आई क्योंकि आज वहां सब मलंग हैं। और अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल होगी तो फ्री हिट भी मिलेगी, और जफर अब्बास ने पहले ही तालियां बजा दी थी। चेहरे पे इत्मीनान दिखाई दे रहा है। वैसे जफर अब्बास बहुत समझदार, वो आते ही जब टीम की ग्रिप मैच पे बहुत मजबूत होती है। मैं अभी मुलाकात हुई नीचे जब वो आए, मैंने कहा जब टीम के मैच पे ग्रिप हो जब ही आपकी आमद होती है। नसीम, जिस तरह आपने बताया कि वाइड बॉल पर 2 रन है, 1 रन नहीं है, रिवायती अंदाज में जो क्रिकेट होती है, तो क्या नो बॉल पर भी 2 रन है? जी आया, नो बॉल पर भी 2 रन है। ये फॉर्मेट है ताकि एक्स्ट्रास को कंट्रोल करें 6 ओवर में ये तमाम प्लेयर्स। और इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके डीके जो कप्तान है मलीर मलंग के, और माज ने जल्दी रिकवरी किया। नो बॉल किया था उन्होंने, और ये भी याद रखने वाली बात है कि मिमरान और डीके दोनों ही के कैच ड्रॉप कर चुके हैं गुलशन गोहर के खिलाड़ी, और अगर यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है मलीर मलंग को तो उसमें उनकी नाक़िस फील्डिंग का बड़ा मरकज़ी किरदार है। और जिस तरह नसीम ने बताया कि 55 रन की दूरी पर है जीत से और 23 गेंदों का खेल बाकी। क्योंकि पहली गेंद 9 हुई थी तो अब 53 रन रह गए डीके मास को, और इस बार वाइड होगी बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है मास का, ये इनके की बॉलर हैं। पहला ओवर उन्होंने पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद सिर्फ 8 रन पर ख़त्म किया था, लेकिन यहाँ पहले 2 नो बॉल के रन, फिर 2 वाइड बॉल के रन, 2 एक्स्ट्रा बॉल भी उन्हें करनी पड़ रही हैं, और एट द सेम टाइम वो अपनी टीम को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे क्योंकि बोर्ड पर बहुत ज़्यादा रन दिखाई नहीं दे रहे। या बिल्कुल कैचेस पकड़ने होंगे, गैर ज़रूरी गेंदें करने से इज्तनाब करना होगा गुलशन गोहर को, और इस बार गेंद को उठा दिया है डीके ने, जिनका ये दूसरा छक्का होगा। तमाशाइयों के दरमियान जाकर ये गेंद गिरी है। ये डगआउट में इत्मीनान देखें आप, जफर अब्बास उनकी टीम, और जिस वक्त ये टीम्स आई थी उस वक्त या मैं आपको एक बात बताऊं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मलीर मलंग पिछले सीजन में नाकाम तरीन टीमों में शामिल थी और ये टीम चौथा मैच जीतने के करीब है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये टूर्नामेंट सिंगल लीग पर है नसीम या डबल लीग पर? ये सिंगल लीग पे टूर्नामेंट है, हर टीम 7 मैच खेलेगी। बड़ा क्रूशल मैच है, एक मैच हर टीम के लिए, क्योंकि 4 या 5 मैच जीत के आप सेमीफाइनल में। और इस बार इतना अच्छा टाइम नहीं किया, लेकिन चूंकि फील्डर से बहुत गेंद दूर थी और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर फील्डर को धोखा दे गई, उनसे आगे निकल गई और ये चौका, बैक टू बैक बाउंड्री। हार्ड बॉल का शॉट था, क्या ड्राइव खेला है यहाँ पे दाऊद पठान ने। अगर आप देखें तो जमीन पे शॉट टेप बॉल में बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन एक जबरदस्त किस्म का ड्राइव यहाँ पर। जिस तरह ये तमाम बैटर्स खड़े होते हैं, यही आप सही कह रहे हैं, अंदाजा नहीं होता, लेकिन ये इतने अपने शॉट्स में पक्के हो चुके हैं। ये ड्राइव प्रॉपर और जबरदस्त, बहुत दबाव में है मास। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, इस ओवर में 14 रन दे चुके हैं।
और ये It's 9 p.m. The joint venture of Badar Expo Solutions and Dairy Agriculture Livestock Farmers Association, that is DELFA, is being held in collaboration with the Sindh Board of Investment. And the main objective of DELFA is to enhance the knowledge of farmers and skills by adopting modern techniques for value addition, which in turn would contribute to the national. दो ओवर में 20 से ज़्यादा रन अगर आप दे दें तो फिर मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। गेंदों का खेल बाकी है और मलिर मलंग इस टूर्नामेंट में अपनी एक और कामयाबी से करीब और बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कप्तान दाऊद खान और उनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम फातिमा और आज जो है मैं बचत एक्सपो में आई हुई हूँ, एक्सपो सेंटर कराची में। But he misses. You are rightly pointed out, Zishan, but the moment they are कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखुसूस गरीब तबके की TK and Mimran. Daud Khan unfortunately lost his. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद पर। Getting a feeling that these runs might not be enough for someone like Malir Malangs. Shot picked away on the leg side. One bounce and into the fence. There is no stopping him tonight, that's for sure. well, he has taught that all right. That really was a big hit. One bounce into the boundary. This is bat of Patan. Now rightly mentioned the power of Patan. It's the strength of Pathans. Not only you see Pathans in every other field in Pakistan, but especially when it comes to cricket, even the professional cricket and now in tape ball cricket, they are almost everywhere. Down the leg side, might be given as a wide. It hasn't been. It was very close to the body and he was also shuffling across the stumps. Talking about Daud Khan, I wonder if he's known as Power of Karachi because he belongs to Karachi in tape ball circuit. He is a bashing player. There is no question about that. And he has some power to offer when he does his stroke making. Well, you will see Punjabis in Punjab, you will see Sindhis in Sindhi, but you will see Pathans almost in almost every corner of Pakistan. That's for sure.
They've been the main pillars of Pakistan cricket. There is no question about that. You talk about the great Imran Khan, won the World Cup way back in 1992 for Pakistan. Yunus Khan was a Pathan too, who won the T20 World Cup in 2009. Shot pulled away with disdain by DK. This time the ball is going to go way over the fence. Oh, that was in his zone. Have a look at that. Off the back foot, very powerful. Daud Khan sends it for another maximum. Just a matter of time now before Maleer Malangs chase down the remaining runs. The required run rate is not an issue. They still have 10 wickets in tank. Slower one. Missed it completely. Wasn't expecting the lack of pace on that delivery, Daud Khan. SN Chitta behind the stumps. There you see the owner of Maleer Malangs, Mr. Zafar Abbas of JDC Foundation, must be really happy. You can see the pride smile on his face. He's been a really good supporter of his team. He has been in almost every matches for Maleer Malangs, no matter how late they finish. But he has been there as a very strong support. As a supporter, you always want to be on the winning side. Another slower one. It's up in the air and it's... In fact, that has been stopped. Might have gone to the boundary. Jumped in the air. Tried to take that catch with one hand, but he just deflected the ball to the boundary ropes. We'll have to see whether it landed beyond the boundary ropes or before that. Well, at first sight, I would say the fielder thought that he was in business. But it was timed so well by Pathan. He's got maybe fingertips on it, and yes, it has gone over the bar, over the boundary. It's a maximum. Yeah, these are one of the very hard catches because you not only have to control your balance when you are jumping in the air, but you also have to make sure that you take that catch. And if you cannot complete the catch, then at least you can deflect the ball back in the field, which clearly he couldn't do so. They got a 6 of the last ball, so it's 67 for no loss after 4. .67 for no loss after 4, just 16 more needed. We talk about the required run rate, it's just 8 and over. When it comes to T20 cricket, 8 runs and over, still the bowling side feels that yes, we are in the game, but when it comes to tape ball cricket, I mean, it can even be done within 1 over. Well, the era, Zishan, in which we are witnessing cricket, 8 runs per over is even a possibility in test match cricket. Forget about tape ball. Wasif starting the 5th over. Once again, he has been belted on the leg side. That has landed on the roof. That really has been smashed. It was short, it was there to be pulled, and my word, how well did he pull that, did Mimran? That's huge. That's out of here. Once again, using his hands without using his body much. There was hardly any movement of the body when he was looking to pull that. Still, look how far that ball went. Just 10 remaining. Slower one. Beat and all ends up. They've been really unlucky, the bowlers, because we have already seen 2 catches being put down. That could have created the difference as well in this run chase. Both these openers were given a chance earlier in the innings, and since then they haven't looked back. Yeah, actually, when things are not happening for you, not going your way, then your fielders have the responsibility to back the bowlers. This is what it didn't happen for Gohars. It's hit hard, it's hit on the leg side, it has hit all the way for 6. Taimur Mirza was out there at fine leg, but the ball just kept going over him. Well, now they're boundary away from a 4th victory on the trot. Something very special. Maleer Malangs, I can tell you, they've started the tournament as the underdogs. Down the wicket he comes, makes it into a full toss. He tries to hit it over extra cover. He does that.
It's going to bound at least twice before it just trickles past the boundary rope. And with that, Malir Malangs have managed to win this game comfortably by 10 wickets. Talk about dominance. Batting beautifully in the both innings, lost just 1 wicket in the first, did not allow the bowlers to pick up even one in the second innings, and chasing down 83 in just 5 overs. Hats off to Malir Malangs. Yeah, Malangs have done it and done it in style too. It was Mimran, the batter, who hit that winning shot over extra cover. Beautifully executed stroke to see his team to another victory, yet another victory. This is 4th. Countdown. Yeah, it's a bit of a wake-up call for someone like Gulshan Kaurs as well, because no doubt they have been playing some exceptional cricket. They have won the previous 3 matches as well, but now the contest is going to get more intense. You will have to face even more difficult teams, so you won't have to rely on just your star batter, someone like Taimur Mirza or Bahadur Lefty. Your bowlers need to step up as well. Yes, you won't be able to score over 100 in almost every game, but sometimes even if you get bowled out for 70 or 80, your bowlers need to fire, and they have to make sure that you do not concede a big lead in the second innings. Yeah, you're right, because the bowlers have the responsibility to know their limitations. Most of these bowlers have not been able to understand their limitations, and they haven't been able to bowl in the right areas. There you see some of the highlights. This is how they started. It was Pathan on fire, and outside edge was there, and it was dropped. And this time it was high in the air, handsome it was, but wasn't taken by the fielder. Yet another drop catch, but from there on, they've taken them to the cleaners. It was Mimran, and almost they were in competition with each other, both of the batters. Pathan and Mimran had a real go at this bowling attack. Yeah, but they were simply unstoppable. Both of them were given a chance earlier, but after that, they did not look back, depositing the ball to every corner of the ground, especially DK. That was a towering 6 from Mimran, though, over the pavilion, and that's how Mimran finished the things off, coming down the track and just chipping the ball over extra cover. It bounced twice before it touched the boundary ropes, and with that, Malir Malangs completed yet another dominant victory by 10 wickets. But just about the openers, DK being the leading run scorer with 43 of Jevon's 17, and Mimran also striking at almost 300 runs per 100 ball, 34 of 12. It was a sorry night for the bowlers. 4 of them were used, and they all went to every quarter of the ground. So Gulshan Kauhars won the toss. They batted first, scored 119, which I think was a very good score on the board. But Malir Malangs batted even better, scored 136, got a lead of 17. In reply, Gulshan Kauhars could only score 99 and ended up giving a lead of just 82, which proved out to be very easy for Malir Malangs, who finished the things off with 10 wickets. We're going to take a short commercial break, and after that, we'll be back with the presentation ceremony of this match 12 of UBL Amin KTPL Season 3.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समद आलम है और मैं ओसाका लाइटिंग का एम्प्लॉई हूँ। बदर एक्सपो KTPL की सीजन 2 की ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बूम बूम शाहिद खान आफरीदी को हम यहाँ खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा होगा। Thank you very much for the Consul General from Dubai, UAE that he is being here. इसके साथ साथ जितने भी आज के हमारे जितने गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं ज़ोहैर आपका शुक्रिया अदा करूंगा और हकीकत में मुझे जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मैं कोई PSL के इवेंट पे आया हुआ हूँ। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड। अगर यूएई के अंदर कोई भी फंक्शन या कोई भी इम्प्रूवमेंट जाना भी है, सबसे पहले मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। बलून्स हवा में बुलंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा, जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे, ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथ नु हिला दे, वे गबरू कैच करा दे और लेजेंड वाइब मिला दे। चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जित तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान, छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च, पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी, क्रिकेट साडे खून च, क्रिकेट साडी जान। कोई चोर ना साडा कोई सानी है, पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी है। इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा, मेहनत कर और आगे बढ़ता जा, हिम्मत मरता मदद खुदा। 150 तक गेंद भी हो जाएगा, टिप कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा। ऐ दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला पड़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ तक झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत याद, अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान। The champion of Badar Expo KTPL Season 2, DHA Badar!
करते हैं प्रोग्राम। Introducing Dhabeji Special Economic Zone, a project of Government of Sindh. This global industrial city connects to central बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड से पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 में मैच नंबर 12 और मुकाबला था आज मलीर मलंग और गुलशन गोहर की टीमों के दरमियान। और इस मैच में पहले बैटिंग की गुलशन गोहर ने 4 विकेट पर पहली इनिंग में 119 रन स्कोर किए, 17 रन की बढ़तरी हासिल की। मलीर मलंग ने 136 किए, एक खिलाड़ी आउट। और फिर सेकंड इनिंग में गुलशन गोहर ने बाउंस बैक किया, 99 रन किए 4 विकेट पर। लेकिन इब्तदाई 7 गेंदों पर उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए और कॉस्टली हुए उनके लिए। और उसके बाद फिर मलीर मलंग ने उनको पीछे मुड़कर वापस आने का मौका फराहम नहीं किया और बिना किसी नुकसान के 4.4 ओवर में मतलूबा हदफ हासिल किया और मैच जीतकर एक और कामयाबी को अपने गले लगाया। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में मलीर मलंग की इस शानदार कामयाबी पर मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियां बजाएं। और आज की इस प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मोहम्मद फैमिली के एक इंतहाई अहम रुकन और टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले सादिक मोहम्मद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ मौजूद हैं सीईओ कादरी एसोसिएट शहजाद कादरी साहब। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ओसाका लाइट के सीईओ शमीम अहमद जमनाना साहब। और रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज मलीर मलंग को उनके ओनर जेडीसी के रूए रवा जफर अब्बास साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और गुलशन गोहर को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बड़ा नुमाया नाम, कराची क्रिकेट के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तारिक हारून साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक और खिलाड़ी मौजूद हैं हमारी इस प्रेजेंटेशन पार्टी में, आले हैदर साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे, जो कि हवेली रेस्टोरेंट को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन पार्टी में। सबसे पहले आज जो परफॉर्मेंसेस सामने आई जिनका मैं चाहूँगा कि तस्करा बनता है, गुलशन गोहर के लिए 16 गेंदों पर रज़ा चांडियों ने 42 रन स्कोर किए, इलियास जानी ने 11 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए, फिर 18 गेंदों पर बहादुर अली ने 41 रन स्कोर किए। सेकेंड इनिंग में कैप्टन इनिंग खेली। लेकिन यहाँ पर अगर हम मलीर मलंग की बात करते हैं तो कलीम ने पहली इनिंग में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 6 छक्कों 5 चौकों के साथ 22 गेंदों पर 65 रन स्कोर किए। उनका भरपूर साथ दिया मिमरान ने 15 गेंदों पर 6 छक्कों के साथ 49 रन स्कोर किए। लेकिन दूसरी इनिंग में उनके कप्तान डीके जो कि दाऊद खान है, उन्होंने बड़े शानदार 43 रन किए 17 गेंदों पर। और दूसरी इनिंग में 12 गेंदों पर 34 रन स्कोर किए मिमरान ने, जिन्होंने पहली इनिंग में 49 रन स्कोर किए थे। और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की ज्यूरी ने यह डिसाइड किया है कि कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 12 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं मिमरान अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से। और सादिक मोहम्मद साहब उनको शील्ड पेश करेंगे। सादिक मोहम्मद साहब, वेल डन मिमरान, आप यहीं रहेंगे अभी, क्योंकि अब आपको शहजाद कादरी एसोसिएट के सीईओ 5000 का चेक पेश करेंगे आपकी शानदार कारकर्दगी के ऊपर। शहजाद कादरी साहब,
आ जाइए ज़रा इमरान साहब। इमरान, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पहली इनिंग में 6 छक्के मार दिए, दूसरी इनिंग में भी आपने आओ देखा ना ताओ देखा। आज तो आपकी परफॉर्मेंस मलीर मलंग जैसी है बिल्कुल। जी, हमारी टीम माशाल्लाह बहुत जेल होकर खेल रही है। हमारे कोचिंग स्टाफ जो है, इंतज़ामिया जो है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर लड़का अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो रहा है। तो अब ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में आप लोग कोई मैच भी नहीं आ रहे। लास्ट सीजन में आप लोग 4 मैच हार गए थे और इस टूर्नामेंट में इस सीजन में आप लोग को कोई रेट नहीं कर रहा था। क्या ऐसा करके आए आप लोग? क्या ऐसी प्लानिंग करके आए हैं कि पकड़ा ही नहीं दे रहे आप लोग? प्लानिंग हमारी यही होती है कि अटैकिंग गेम करनी है। हर बंदा अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए जीत रहे हैं हम। चलें, इसीलिए हम आपके लिए भरपूर तालियां होंगी इमरान, जिन्होंने इस मैच में 49 रन स्कोर किए, 34 रन स्कोर किए और आज के प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। और कैच ऑफ द मैच ओसाका लाइट ये पेश करेंगे शमीम अहमद जमनाना साहब, और इसके लिए मैं मदू करूंगा मलीर मलंग के मैसम अब्बास को। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा जफर अब्बास साहब से कि वो आज फैन ऑफ द मैच के लिए मुंतखब होने वाले हमजा जावेद को गिफ्ट दें। हमजा जावेद, फैन ऑफ द मैच। तारिक हारून साहब, आप भी आ जाइए। और मलीर मलंग ने आज बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं आ रहे हैं और इनके ओनर जफर अब्बास ने मुझे बताया कि हवेली रेस्टोरेंट के असद हनीफ की तरफ से टीम के तमाम 11 खिलाड़ियों के लिए 10,000 ईच का चेक पेश किया जाएगा और ये आले हैदर इनके कप्तान डीके को देंगे। डीके आए और सबके बिहाफ पर आप ये चेक वसूल कर लें। अच्छा, आपकी टीम आ जाए जो आज खेल रही थी यहाँ पर। प्लेइंग 11 में जो लड़के थे वो आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। आज कामयाबी हासिल की है गुलशन गौर के खिलाफ मलीर मलंग की टीम ने और इनके लिए ये चेक पेश किया है हवेली रेस्टोरेंट की तरफ से। 10,000 रुपये आज के प्लेइंग 11 में शामिल तमाम खिलाड़ियों के लिए होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूंगा अब लूजिंग टीम के कैप्टन गुलशन गौहर के बहादुर अली से वो आए और हमसे कुछ बात करें। बहादुर अली, बहादुर, आप लोगों ने बड़ा अच्छा कमबैक किया 17 रन के डेफिसिट में जाने के बाद। सेकेंड इनिंग में 99 रन किए, 83 रन का आपने हदफ दिया। आपको लगता है कि पहली 7 गेंदों पर एक विकेट कीपर से कैच छूटा और उसके बाद फिर वेरी फर्स्ट बॉल पर सेकंड ओवर की कैच छूटा, वो एक मोमेंटम बन सकता था, वो नहीं बना? जी बिल्कुल याया भाई, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। तो वो 2 कैच हो जाते तो इनके मैन बैट्समैन जिस तरीके से रन कर रहे हैं, अगर वो आउट हो जाते तो शायद हम मैच में वापसी आते और हम मैच भी विन कर सकते थे। तो आप लोग भी इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच हारे नहीं थे और आज पहली मर्तबा आप लोग हारे हैं। ओवरऑल अब तक इस टूर्नामेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस है, किस हद तक आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा कमबैक भी किया है। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट ये था कि हम टॉस हमने जीता तो हमने पहले बैटिंग की, तो क्योंकि 3 मैचों से हम कंटिन्यू चेस करते हुए आ रहे थे तो ये थोड़ा डिफरेंस लगा और ये आज अच्छा साइन था कि हमने क्रिकेट भी अच्छी खेली। मैच हारे लेकिन इंशाल्लाह कमबैक करेंगे आगे 3 मैचेस में। चले, हार्ड लक बहादुर अली और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच गुलशन गौहर के कप्तान। और अब आपकी तालियों में आएंगे आज की फातेह टीम मलीर मलंग के कप्तान डीके दाऊद खान। दाऊद, सबसे पहले तो आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। सेकंड इनिंग में आपने कप्तान इनिंग खेली, फ्रंट से आपने लीड किया, 17 बॉल पर 43 रन स्कोर किए। क्या कहना चाहेंगे आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस? पहली इनिंग में आप लोगों ने 136 किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि चौथी जीत हमारे नसीब में हुई। और फर्स्ट इनिंग में जिस तरह में आउट होने के बाद कलीम और मिमरान ने इनिंग खेली तो अनबिलीवेबल। और सेकंड इनिंग में तो प्रेशर था लेकिन
लोगों ने यही बोला कि आप जाएं, आप खुद ऊपर से स्ट्राइक करें, तो इसलिए मैं सेकंड इनिंग में फिर फ्रंट से लीड करता रहा। अच्छा, हमारी ज्यूरी ने तो डिसाइड किया है इमरान आज के प्लेयर ऑफ द मैच हैं। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 49, सेकंड इनिंग में 34, लेकिन जो आपकी पहली इनिंग में 22 गेंदों पर 65 कलीम ने किए, फिर 43 आपने किए। आपको सबसे अच्छी बैटिंग किसकी लगी, इमरान की, कलीम की, अपनी खुद? नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं और दोनों ने अच्छी इनिंग खेली। मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बस मेरे लिए तो दोनों ही नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया विनिंग कैप्टन डीके दाऊद खान, मलीर मलंग के। और आज के मैच को सुपरवाइज कर रहे थे नईम अहमद खान, अजीजुर रहमान। आज के टीवी अंपायर थे जुनैद अफजल और बशीर अब्बासी फोर्थ अंपायर थे, जबकि इस मैच के रेफरी थे नोमान। यही हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 12 आपने देखा, जहां मलीर मलंग ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप मैच नंबर 13 देख सकेंगे। Introducing Dhabeji Special Economic Zone, a project of Government of Sindh. This global industrial city connects to Central Asian, Middle Eastern and African markets, with seamless access to China and the rest of the world through Karachi's ports. Enter a state-of-the-art zone that nurtures industries, creating jobs and boosting exports. Dhabeji Special Economic Zone represents a defining moment in its evolution, offering special economic zone benefits such as tax holidays and import exemptions, along with the added advantage of seamless access to uninterrupted utilities. A flagship CPEC project of Government of Sindh under public-private partnership with Zahir Khan Brothers Development and Management Company. Dhabeji Special Economic Zone, Pakistan's gateway to prosperity. मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को 2-3 दफ़ा मीडिया पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ़ायदे के लिहाज से तकरीबन इसमें 1.5 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और कोई $5,000 मिलियन तक की सरमायाकारी इसमें मुतवक्के हैं। तो और इसके अलावा जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे हैं इसमें, रोज़गार के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से काफ़ी फ़ायदे हैं इसमें। समझता हूँ एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्रियल जोन होगा जिसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। लोकेशन इसकी ज़बरदस्त है कि पोर्ट की बिल्कुल करीब है, रोड एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी, कराची और ठट्टा के बिल्कुल संगम पे ये वाक़ है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी जिसका फ़ायदा कराची के नौजवानों को भी होगा, ठट्टा सजावल के नौजवानों को भी होगा, जिनको रोज़गार इंशाल्लाह मिल सकेगा। जी मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होगा बिकॉज जो सोशल इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का वो बड़ा ट्रिमेंडस है। लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का फ़ायदा होगा लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी।
बदर एक्सपो KTPL की सीजन 2 की ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बूम बूम शाहिद खान आफरीदी को हम यहाँ खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा होगा। Thank you very much for the Consul General from Dubai, UAE that he is being here. इसके साथ साथ जितने भी आज के हमारे जितने गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं ज़ोहैर आपका शुक्रिया अदा करूँ। Welcome back once again to DHS Sports Club, Moin Khan Academy, where we are ready for match number 2 of the night to be played between Johar Jawans and Liari Legends. Now, we're all set for the toss. We've just witnessed a very, very exciting match between two very good teams. Now, Johar Jawans and Liari Legends will be facing off against each other. I have both the captains here with me. Leading Johar Jawans is the captain Sayyid Nasir, and leading Liari Legends is their captain Ashraf Pathan, along with match referee Numanullah. Right, I guess Ashraf Pathan has the coin. Ashraf, please do the honours. Here goes the coin. Head. Head was the call and head it is. Sayyid Nasir, please मेरे बराबर में आ जाइए। अशरफ पठान, आपने टॉस जीता है, क्या करने का फैसला किया? हम बैटिंग करेंगे आज। पहले बैटिंग करेंगे, टोटल सेट करेंगे। अभी तक का थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रही है और बेहतर करने की जरूरत है। छोटी चीज़ें बेहतर हों तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 मैच में हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन हम फिनिश नहीं कर सके। कुछ गलतियाँ हमने ऐसी की जिसकी वजह से हमसे जीते हुए मैच गए। तो आज कोशिश करेंगे कम गलतियाँ करें और उन चीज़ों पर काम करें। तो इंशाल्लाह ये है कि हम कोशिश करेंगे कि 100 रन करें। कोई चेंजेस किए आपने टीम में? हाँ, एक चेंज है, शाहजहान की जगह अहमद केल्ला। ठीक, तो एक चेंज है। अशरफ पठान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सही नासिर, आप भी आ जाइए। ज़्यादा दुख तो नहीं है, टॉस हारने का इतना दूर जाके खड़े हो गए थे आप। खैर है, टॉस में हार जीत चलती रहती है। इससे पहले भी आपने साबित किया है कि टॉस मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस मैटर करती है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक, कोई चेंजेस? बस एक लड़का चेंज किया है और बॉलर बेसिकली बॉलर की जगह ऑलराउंडर इन किया है, बैटिंग बढ़ाई है। Right, Sayyid Nasir, best of luck for the match. बहुत शुक्रिया आपका। All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Liari Legends have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action. बुरा समझूं है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा, बिलखुसूस हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिस्टर नूर अहमद साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब, सितारा इम्तियाज़, और बाकी तमाम गेस्ट, आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि अक्सा ने बताया कि डेल्फा का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फार्मर्स को एजुकेट करें, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और ऑपरेट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी कराची से खुश आमदीद कहेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लियारी लेजेंड्स बनाम जौहर जवान, UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 2023 का ये मैच नंबर 13। और फील्ड अंपायर नईमुर रहमान और अजीज़ुर रहमान इस वक्त प्रोसीडिंग के लिए गेंद को हवा में उछालते हुए मैदान में आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे साथ मौजूद हैं फारूक रियाज। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया। और दूसरा मैच आज के दिन का, इससे पिछले मैच में मलीर मलंग ने बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की और हमने बैटिंग डोमिनेशन वहाँ पे देखी और इन दी एंड बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री रही। जौहर जवान ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है और स्ट्रगल करती हुई नजर आई। कुछ मोमेंट्स उन्होंने ज़रूर विन किए लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए अपने फेवर में। इनके कप्तान सैयद नासिर ने एक चेंज किया, एक ऑलराउंडर को उन्होंने इंक्लूड किया है, एक बॉलर कम करके, तो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को मज़ीद उन्होंने बढ़ाया है। और यहाँ पे दोनों बैट्समैन लियारी लेजेंड्स के मिडिल की तरफ जाते हुए और अच्छा मोमेंटम है इनके पास, लियारी लेजेंड्स के पास, और उम्मीद की जा सकती है कि एक बड़ा स्कोर पहली इनिंग में यहाँ पे बोर्ड पे लगाएंगे। और पिछला मैच अगर हम देखें तो वहाँ पर भी रन्स की बरसात हुई थी और गुलशन गौर के खिलाफ मलीर मलंग ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। ये है जनाब लियारी लेजेंड्स और जौहर जवान की टीम लाइनअप। अशरफ पठान है कप्तान, राना मोहसिन कारी, सोहेल लेफ्टी, निज़ार, सैयद बिलाल, सेठू अब्दुल सलाम, दाऊद, सोहेल नसीर और अहमद, ये लियारी की टीम। और जवान में सैयद नासिर कप्तान, बासित लेफ्टी, शाह रज़ा, उमर फरमान, सद्दाम इजाज शहरी और वाजिद मियो मोइज़ और फलक बशीर। KTPL सीज़न 3 2023। और अब से थोड़ी देर पहले जो टॉस हुआ, लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये दोनों ओपनिंग बैटर लियारी लेजेंड्स के इस वक्त पिच के वस्त में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जौहर जवान, जिनके बारे में फ़ारूक ने बताया कि इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह की तलाश में वो सरगर्दा हैं और फील्ड सेट करते हुए उनके कप्तान। और पहली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और पहली इनिंग में लीड जो हासिल की थी 17 रन की गुज़िश्ता मैच में मलीर मलंग ने, और उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें ये भी देखा कि DHA दबंग लीड लेकर भी हार गए। ये नज़र अली है जो कि लियारी लेजेंड से इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए हैं। नज़ार अली के साथ है कारी हमीदुल्लाह और इससे पिछले मैच में उनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा था। अच्छे हिटर है कारी उबैदुल्लाह जो है ये थोड़ा सा एक फेमिलियर नाम है टेप बॉल क्रिकेट में। इन्होंने कम वक्त में जो है वो शोहरत हासिल की है। पिछला सीज़न इनका बड़ा अच्छा रहा था जी, लेकिन इस सीज़न में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं, कनेक्शन नहीं हासिल कर पा रहे। आज Here we go 3-2-1 और लियारी लेजेंड्स अपनी इनिंग का आगाज करने के लिए मौजूद हैं।
और पहली गेंद जौहर जवान की तरफ से करेंगे शरी। डाउन द लेग साइड गेंद इसको पिकअप शॉट खेलने गए थे और कोई कनेक्शन हासिल नहीं किया और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है क्योंकि लेग साइड पर ज़रा से भी बॉल बाहर गई तो वाइड का इशारा होगा, 2 रन मिलेंगे बैटिंग साइड को। बड़ा फिल्मी सा नाम है शरी, अमूमन ड्रामों में हमने ये नाम सुना है और ये कुछ एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, केक कटिंग सेरेमनी। अवैस मीर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के, पहला रन होगा यहाँ पर और चौका है ये, बहुत ही आहिस्ता के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अवैस मीर अपनी सालगिरह का केक काट रहे हैं। मैं भी जाके पूछता हूँ इनसे, फरूक कितने साल के हो गए माशाल्लाह ये? जी हाँ, और केक कटिंग और इस दौरान एक चौका भी आया, ओवर पिच गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और लियारी लेजेंड ने इनको चौका दिया है सालगिरह का तोहफा। जी हाँ, इस स्वीट केक के साथ एक स्वीटली टाइम शॉट यहाँ पर अपिश खेले ड्राइव, 4 रन के साथ अकाउंट ओपन किया लियारी लेजेंड्स ने। निज़ार ऑफ द मार्क और इस बार भी खूब खेले हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है और ये दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। आउटसाइड द ऑफ स्टंप लूज गेंद, फुल टॉस उसको खेल दिया अपिश। ज़्यादा कनेक्शन वो हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए वो उनकी तलाश थी और लेकिन अपिश खेले, कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं और दोनों शॉट जो इतनी कुवत वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि नो मैन लैंड में बॉल ने जो है वो डिप किया तो इसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये बॉलर भी चैन का सांस लेता है। अगर फुल टॉस को भी बैट्समैन अगर 4 के लिए खेलता है, क्योंकि आमतौर से बैट्समैन बख्शते नहीं है कोई भी, अगर फुल टॉस बॉल मिले किसी भी रेंज में टेप बॉल क्रिकेट में। शहरी 2 चौके कंसीड कर चुके हैं और फील्डिंग में कोई खास तब्दीली नहीं और फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अभी। जी, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है लियारी लेजेंड ने। कुछ एग्रेसिव स्टार्ट अगर आप स्कोर कार्ड देखकर समझेंगे तो लगेगा आपको 3 गेंदों पर 2 चौके 8 रन, बट शॉट अगर आप देखें तो कुछ इतने ज़्यादा जारहाना नहीं थे। और इस बार घुटना टेक कर गेंद को हवा में उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन लकी रहे हैं यहां पर निजर और 2 रन उन्होंने हासिल कर लिए। बहुत ही मुश्किल कैच था, हाई कैच, दोनों फील्डर विकेट कीपर और लेग स्लिप को कैच के लिए गए, जगह बनाने की कोशिश की लेकिन कोई भी फील्डर जो है सही पोजीशन में आया नहीं। पिकअप शॉट खेलने गए थे और बहुत ही हेल्दी टॉप एज, कोई भी फील्डर जो है जगह नहीं बना पाया। खुशकिस्मत रहे निज़ार। ये कुछ जॉन्टी रोड वाली एफर्ट यहाँ पर लगती थी, या केन विलियमसन वाली, या फाफ डुप्लेसी वाली, तो ये कैच हो सकते थे। शेरी और इस बार आंखें बंद, बल्ला घुमा दिया और गेंद बीट करने में कामयाब रहे शेरी इस ओवर में दूसरी मर्तबा। अंपायर की तरफ देखते हुए शेरी के शायद वाइड का इशारा हो, लेकिन ट्रैम लाइन से अंदर थी बॉल, काफ़ी फुल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उनको रीच करना पड़ा उसके लिए, लेकिन बीट हुए। वो फारूक, हम टेप बॉल क्रिकेट में कहते हैं कि हाथ पांव अभी खुले नहीं हैं, तो यहाँ पर निजर के हाथ पांव नहीं खुले हैं लेकिन उन्होंने फिर भी 10 रन कर लिए। फुल टॉस खेल दिया इसको लॉन्ग ऑफ पर, बहुत ही उम्दा शॉट, इस बार वही कनेक्शन लिया जिसके इंतजार में थे और इस इनिंग्स का पहला छक्का। तो पहले ओवर में 16 रन हासिल किए हैं 3 बाउंड्री के साथ, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल। निजर ने ये रन्स हासिल किए हैं 16 के 16। तो पहले ओवर के बाद टॉस जीतकर मलीर मलंग 16 बिना किसी नुकसान के। और इस शॉट से कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे शहरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि शहर के लोग भी जालिम थे और ख़ुद को भी मरने का शौक़ था। बिल्कुल मुंह में बॉल कर दिया उन्होंने, फील्डर बाउंड्री लाइन पर है नहीं और छक्का। जी, लो फुल टॉस थी और कोई भी बैट्समैन, बहुत कम ऐसा होता है कि इस फुल टॉस को छोड़े। इससे पहले फुल टॉस पे 4 रन हासिल किए थे, तो अच्छा फिनिश हुआ इस पहले ओवर का। फरमान बॉलिंग करेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं फरमान, नई बॉल शेयर करते हुए फार एंड से ऑपरेट करेंगे। बाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले फरमान, और एक अच्छा स्टार्ट लियारी लेजेंड्स को 16 रन की शक्ल में मिल चुका है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का मैच नंबर 13। ओवर द विकेट फरमान।
और कारी उबैदुल्ला पहली मरतबा इस मैच में एक्शन में, और बड़ी ममासलत है। जो पहली गेंद खेले थे निज़र, उनका भी लेग साइड पर गेंद पाँव पर लगा था, और यहाँ पर भी फरमान का जो पहला बॉल है वो कारी उबैदुल्ला के बाएं पाँव पर लगा है। तो बड़ी जो है ममासलत है। ये बहुत इंतज़ार में है कारी हमीदुल्ला, कोई रन इससे पहले नहीं हो सके। ओपनर आए आज इस मैच में, मिस कर एक दफ़ा फिर यॉर्कर थी ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए। 2 डॉट बॉल के साथ इस फरमान के नए ओवर का आगाज। तो जौहर जवान की तरफ से फरमान ने अभी तक पहली 2 गेंदें बिल्कुल अपने फेवरेट एरिया में की हैं, और अपनी स्पीड से उन्होंने रन्स बनाने से बाज रखा है कारी हमीदुल्ला को, जो आज इनिंग का आगाज करने के लिए आए हैं लियारी लेजेंड्स के लिए। स्कोर बोर्ड पर हिंसा 16 का 8 गेंदों के बाद। इस ओवर में पहले स्ट्रोक के लिए मुंतजिर कारी उबैदुल्ला, और इस बार ये गेंद रोकनी चाहिए थी। शॉट फाइन लेग पर, जिसको हम लेग स्लिप भी कहते हैं, फील्डर पोस्ट किया था फरमान ने, बट फील्डिंग में उनकी कुछ इतनी ज़्यादा चुस्ती नज़र नहीं आई। उन्होंने कुछ तसाहुल से काम लिया और 4 रन। जी, हमीदुल्ला का पहला चौका इतना कन्विंसिंग अंदाज में चौका नहीं आया, और ये यकीनन बॉल रोकनी चाहिए थी, और कोई प्रोटेक्शन और आपको लगा कुछ यहाँ पर फरूख के ये जो फील्डर हैं ये दौड़ने में कुछ इतने तेज नहीं लग रहे मुझे, और शायद इनको इसीलिए लेग स्लिप में पोस्ट किया गया है, और ये हिले भी नहीं अपनी जगह से। जी, आमतौर से 2 स्लो मूवर्स होते हैं, उनको विकेट कीपर के साथ शॉर्ट थर्ड और फाइन लेग पे दायरे के अंदर प्लेस करते हैं। अच्छा कमबैक किया एक बार फिर कारी हमीदुल्ला। अब तक फरमान के आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। पहले ओवर में 16 रन देने के बाद जौहर जवान का अच्छा कमबैक, 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए हैं। मुश्किल होगी अगर इस तरह की डॉट बॉल्स आती रही शुरू के ओवर्स में, और यही वो मौका होता है जब आप अटैक करें बॉलिंग साइड पर, और शुरू के ओवर्स में मैक्सिमम चौके और छक्के हासिल करें। और इस बार कारी हमीदुल्ला ने गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे बिल्कुल भी आ गए हैं, और यूं ये छक्का। मतलब काफी पीछे गिरा हुआ गेंद था याहिया, और गलती की फरमान ने, और यही चाहिए था एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को कि अपने बैट को स्विंग करे, पुल करने में कामयाब, भरपूर तरीके से मुकम्मल अथॉरिटी के साथ इसको पहुंचा दिया 6 रन के लिए। बहुत ही आला शॉट। और मैं बार बार कॉम बॉक्स में बात करता रहा हूं फरूख के, जब आप पीछे गेंद करते हैं बैट्समैन को टाइम मिलता है, और बिल्कुल चिपके हुए खड़े हैं स्टंप से, और ये भी हैरानकुन बात है कि स्टंप नहीं हो रहा, कोई हिट विकेट नहीं हो रहा कोई। रन्स मिलेंगे 4 रन, और उसको फ्लिक कर दिया। इतना कन्विंसिंग शॉट नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी, और दायरे के ऊपर से बॉल गई 4 रन के लिए। तो इस ओवर में आ गए हैं जनाब 14 रन, और पहली 4 गेंदें अच्छी करने के बाद फरमान की आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और फिर चौका। तो 2 के बाद लियारी लेजेंड्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 30 बिना किसी नुकसान के 15 रन फी ओवर औसत उनके रन बनाने की। अच्छा स्टार्ट है ये लियारी लेजेंड्स का, और बीच बीच में कहीं कमबैक करती है जौहर जवान की टीम, जो कि इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह की तलाश में। ज़ोहैर नसीर KTPL के रूहें रवा स्क्रीन पर आपके सामने ये लियारी लेजेंड्स के डगआउट में मौजूद हैं, और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है, मुझे फरूख ने बताया। निसार 16, हमीदुल्ला 14 के स्कोर पर, और अच्छा आगाज है, लेकिन जरूरत इस बात की कि मजीद आने वाले ओवर्स में नईम खान ये इस मैच के फील्ड अंपायर, जो कि पावर प्ले का इशारा देते हुए वाजिद मियां तो हमने सुना था, ये वाजिद मियो पहली मर्तबा सुना है हमने। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस अब लिफ्ट हो गई हैं, और यहाँ पर कुछ मौका है कि आप बाउंड्री राइडर्स को सेट करें। डीप स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद है। 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं निजर, और कारी हमीदुल्ला बैटिंग कर रहे हैं 14 रन पर। दोनों ने 6-6 गेंदों का सामना किया है। पहला ओवर निजर ने खेला था, दूसरा मुकम्मल ओवर कारी हमीदुल्ला खेले, और अब तीसरा ओवर जिसकी पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं वाजिद, और उनका सामना करेंगे लियारी लेजेंड्स के निजर।
लियारी लेजेंड ने आज KTPL सीजन 3 2023 के मैच नंबर 13 में टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया 30 बिना किसी नुकसान के। और वाजिद की ये गेंद, बैट्समैन भी बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए और बाय के 4 रन। फरमान थे फील्डर जिन्होंने अभी ओवर फिनिश किया लेग स्लिप पे और रोकनी चाहिए थी और बड़े ही नाराज हैं यहाँ पे वाजिद मियो। इतनी बाहर नहीं थी कि फिर मुश्किल होती। ये तो खुदकुशी है। अभी अंपायर ने इशारा नहीं दिया, अगर ये वाइड हुई तो 6 रन हो जाएंगे एक गेंद पर ही। गालिबन यहां बच गए हैं वाजिद। नहीं जी, वाइड दे दिया अंपायर ने, तो उन्होंने बिना गेंद किए ही 6 रन दे दिए हैं। इतनी अच्छी एफर्ट नहीं थी, बहुत ही कैजुअल एफर्ट और विकेट कीपर और लेग स्लिप पे फरमान दोनों को, एटलीस्ट फरमान को रोकनी चाहिए थी। बॉल इतनी दूर नहीं थी, लेकिन अच्छा आगाज इस ओवर का 6 रन के साथ। स्लो वन किया और निजर इस गेंद की लेंथ को भांप नहीं सके और वाजिद मुझे लगता है कि ये दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेस को रिड्यूस किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत लूपी बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इसको अक्रॉस द लाइन खेलने गए, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए। इस दफ़ा वाइड के बाद अपनी लाइन हासिल करते हुए, ये अच्छा चैनल है किसी भी बॉलर के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड को बैट बॉलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द लाइन। लेकिन मुसलसल अगर ये स्लो वन करेंगे फिर पकड़े जाएंगे, तो देखते हैं कि आप क्या करते हैं वाजिद। और इस बार भी निजर ने गेंद को पिक कर लिया। अच्छा टाइम नहीं किया, लेकिन चूंकि फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है तो गेंद खराम में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक दफा फिर स्लोअर वन थी, लेकिन पीछे गिरा हुआ गेंद और मौका था इस बार बैट्समैन के पास निज़ार, और उन्होंने अपने आप को वक्त दिया और बैट को स्विंग कर दिया बड़े आराम से। ज़्यादा पेस नहीं था कि वो पेस का इस्तेमाल करते, लेकिन प्लेसमेंट की वजह से 4 रन हासिल किए। और अगर इनको इन्होंने पकड़ लिया ना यहाँ पर, जो वाजिद इस वक्त कर रहे हैं, वाजिद मियो ये ज़्यादा पेस के साथ बॉल कर नहीं रहे हैं, तो ये इनको पिछले कदम पर जाकर अगर इन्होंने पकड़ा तो बहुत दूर फेंकेंगे इनको ये, क्योंकि ऑफ द विकेट इतने तेज है नहीं। और इस बार भी नजर इनको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी ये और थोड़ा पैर निकाल के जाना पड़ा उस तरफ, लेकिन मिस कर गए और थोड़ी बेहतर पेस के साथ ही शायद स्लोअर वन एक्सपेक्ट करते इस दफ़ा फिर। तो 2 डॉट बॉल्स करा चुके हैं, दोनों डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप इन्होंने जनरेट की वाजिद ने। अगर आपके पास वेरिएशन है ना, तो फिर आप स्टेप बॉल क्रिकेट में अपने आप को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फीट मूवमेंट बल्लेबाजों की बिल्कुल भी नहीं है इस टूर्नामेंट में। गेंद थोड़ी देर हवा में रही, कैच की आवाज, लेकिन एक ही रन तक बात महदूद रहेगी। लेकिन फील्डर यहां पर काफी सुस्ती का उन्होंने मुजाहरा किया, जिसका दोनों बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया और दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। एक दफ़ा फिर नाराज वाजिद, इस दफ़ा फिर फील्डिंग की वजह से काफ़ी नाराज हैं कि ये 1 रन से 2 रन नहीं होने चाहिए थे, और इसका मौके का फ़ायदा उठाया निज़ार और हमीदुल्ला ने कि थोड़े से कैजुअल थे फील्डर और थ्रो भी बहुत वाइड थी, तो बड़े आराम से 2 रन मुकम्मल किए। 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। पहले ओवर में 16, दूसरे में 14 और तीसरे ओवर में अब तक 12 रन बन चुके हैं और 2 गेंदें इस ओवर की अभी बाकी हैं। वाजिद मियो 12 रन दे चुके हैं अब तक इस ओवर में, एक बाई का चौका और एक बल्ले से चौका। और इस बार गेंद की लेंथ को पिक किया, उठा दिया फील्डर गेंद के नीचे। क्या कैच करेंगे? नहीं, क्योंकि गेंद उनके पीछे जाकर गिरी छक्के के लिए। बहुत ही अच्छा कनेक्शन, अच्छा टाइम किया, इंतजार किया बॉल का। स्लोअर वन, एक दफा फिर वाजिद की आउटसाइड द ऑफ स्टंप विट मिली, बैक ऑफ द हैंड बॉल, और उसको बड़े अच्छे अंदाज से लॉफ्ट किया। लॉन्ग ऑफ फील्डर की कोशिश जरूर थी, लेकिन लेंथ हासिल की, जो रिक्वायर्ड लेंथ उनको मिली, और 6 रन के साथ 28 पे पहुंच गया अपने निज़ार। और अब तक की ये पहली इनिंग का सबसे महंगा ओवर, जिसमें वाजिद मियो 18 रन दे चुके हैं। इस ओवर में आखिरी मर्तबा नजर, और इस बार फील्डर जो थे वो गेंद को पहली कोशिश में पकड़ने में कामयाब रहे, जौहर जवान के। तो 3 ओवर का इख्तिताम 49 बिना किसी नुकसान के। कारी हमीदुल्ला बैटिंग कर रहे हैं 14 के स्कोर पर। निजर ने बनाए हैं 29 रन, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और अब जबकि यहाँ लियारी लेजेंड्स का स्कोर 49, 3 ओवर की बैटिंग में मजीद
कमेंट्री को आगे बढ़ाएंगे। जी, कमेंट्री बॉक्स में अब आपका साथ देंगे ज़िशान खालिद और फलक शेर। Thank you, Farouk and Yahya Husseini. 3 hours done and dusted. They've managed 49 without loss of wicket. Have Liari Legends winning the toss and opting to bat first earlier on. It's been a good toss to win, I reckon. The kind of position they're in, and good to see both of the openers are still there. Especially Nizar looking very good. There you see Saddam Shah, the left-arm quickie, comes all the way from Laya. He will be continuing the bowling in the over number 4. And with me is Zishan. Hello, Zishan, once more. Hello, Falak. Yes, indeed, it has been a good start by Liari Legends, especially after winning the toss and deciding to bat first. But they've been helped by some poor effort by the fielders of George Javans as well. We have seen few extra runs being given in the last over as well. Wajid wasn't happy with the fielders' effort, especially behind the wicket-keeper, when they gave away 5 easy runs down the leg side. So they will have to bring up their A game. Remember, both these sides are yet to register their first victory in this edition of Karachi Table Premier League. There you go, it's in the air. Cry of catch, but it's in the gap. It's gone all the way for 4. Saddam Shah missing his line and paying the penalty here. Yeah, picked up the length very early. This time Nizar Ali sat down on one knee and had no hesitation in swinging the ball down the leg side. There was a fielder down there, a deep mid wicket, but he was too far away from where the ball landed. A boundary at the first ball, 50 comes up for Liari Legends. Amazing bit of versatility here. The first game, match number 12, which was played between Gulshan Gauhars and Malir Malangs. They were yet to register their first defeat. Oh, missing his mark by a long way there, Saddam Shah down the leg side. And these two are yet to register their first victory, but one of them surely are going to win in this match. Yeah, much needed victory they need as well, Liari Legends and Johor Javans, because you never know, you just get one big victory and all of a sudden the confidence is back, the momentum is back, you start gelling together as a team, you start to consider that you can defeat any other team in this tournament. Full toss. If you bowl there, you're going to get hit, but this time it was miles in the air and fielder just couldn't get to the ball. I thought for a jiffy of a moment that the fielder might have been able to reach to the ball, but it wasn't the case. Well, yes, usually the full tosses in this tournament have been disappeared over the boundary ropes. That's why even the cameraman thought it might have sailed over the boundary ropes. But once again, two fielders getting near to the ball and neither of them calling for it. Fielding effort needs to improve, especially when it comes to tape ball cricket. Yes, it has been difficult to side the ball, especially when it comes out of black sky and it's swirling in the air as well. But that's what practice makes you do. I mean, you should have been practicing catches before the start of the game, because everyone knows how to bat, how to bowl, but you need to practice those catches. This time it's in the air, another skyer, and this time fielder accepts it gladly, and it's Basit lefty who takes the catch, and it's Saddam Shah yet again amongst wickets. Yeah, Nizar Ali has been trying so far in this over to hit a big shot down the leg side. He got a boundary of the first ball, couldn't connect the next two. This time it was pitched outside the off stump. Swinging a little too hard, and Basit lefty this time just sitting on his knees and completing that catch. Looks as if he was almost anticipating was Basit lefty, and he was welcoming that ball. Nizar Ali made 35, well made 35, but his cameo is over. 57 for 1. Osaka cricket tapes being used here in this third edition of UBL, Karachi Table Premier League. Has been a really good tournament. We have seen some exciting games. Entertainment has been on point. We have seen some really good performances with the bowlers as well. When it comes to trade ball cricket, you expect the batters to go big, but some bowlers have bowled really well, especially Majid Goli and Ali Chota. If we talk about Malir Malangs, one of the many reasons why they are leading the points table is because their bowlers have delivered in almost every game. Daud Suleiman, the upcoming batter at number 3.
And he's got a job to do because they've got the start, but first wicket is down. Saddam has just picked up the first wicket of this innings. Slower delivery once again, looking to hit that big shot on the leg side, but the ball just hitting the body, and they will collect a leg bye. Just coming into his own is Saddam Shah. We all know when he's in groove, he's very hard to pick. I can tell you, he's one of those bowlers, one of those rare exclusive bowlers in tape ball cricket who has the ability to swing the ball at pace. And he's got some serious pace. Mind you, he's come back after 1.5 years injury. So he's making a comeback here. He's been picked this time, and the ball has been stopped down to that mid-wicket boundary. Well done by the fieldsman. Yeah, Qari Hamidullah just helping the ball on its way down the leg side, but there was a fielder position at deep square left for particularly that sort of a stroke. And in the end, they could only pick up a couple. Yeah, you were talking about Saddam Shah. I think it has a lot to do with the action that he possesses. He's got a slinging action. And when you've got a slinging action, you tend to move the ball in the air, especially when it is bowled at pace. And you can easily be very deceptive with your slower delivery, something which Malinga used to do for Sri Lanka. Nicely bowled again in the block hole, picked away to leg side, and the ball is going towards the boundary. I think it has gone. Yes, it has gone all the way for 4. Fielder couldn't get around. Well, that was a top shot from Qari Hamidullah. Just missed out his length by a few inches there, Saddam. And there were 2 fielder positions at square leg and mid-wicket, and he found the gap with ease. It's 64 for 1 after 4. Liari Legends winning the toss, opting to bat first, and they are 64 for 1 after 4 overs. First blood was drawn by Saddam Shah in the last over, went for 14 and taken important wicket of Nizar lefty, who was going all guns blazing with the start of this innings, made 35 of just 15 deliveries. And Daud Khan is the new coming batter who is yet to get off the mark. Talking about Liari Legends, well, they have shuffled their batting order once again. Qari Hamidullah opened the batting in their first game. Came out to bat at number 4 in the other game. Tonight, once again, opening the batting. And he has been slightly off-coloured in this tournament. Qari Hamidullah was listening to the ground commentary, and the commentator was all praising how well Qari Hamidullah has batted in the previous editions. But I think it's the conditions that is making it difficult for him to hit those big shots. You got to understand your game and getting accustomed to the conditions. It does take time, but they're playing their second game, I reckon. Third game, I beg your pardon. So you got to get accustomed to the conditions, even after the first match, in my opinion. Hamidullah is going to be on strike. He's gone for a big heave, and they're appealing for a caught behind. Umpire was unmoved. Yeah, coming around the wicket and pitching the ball up outside the off stump, Farman. Once again, Hamidullah was looking to clear the leg side region. That has been one of the many reasons why the batters have not been able to score more runs. Because we have seen quality batters like Asad Shah and Taimur Mirza, even Fahad Mia Chunu, playing the ball on its merit. Now you need to play in all corners of the ground if we need to score runs. Otherwise, the bowlers are going to target you. It's just about your areas. Another nick, or they're gone for the appeal once more. Now, umpire is not interested. Shake of the head immediately by Azizur Rahman. So they're definitely putting some sort of pressure on this batter, appealing. As soon as the ball goes there, passes the outside edge. I think these are clever tactics from Farman. As we have a look at that replay again, might have been an outside edge as well, because we definitely heard a sound, but the ball just landing in front of the wicket-keeper's hands. Good call, this from Azizur Rahman, the on-field umpire. He's a pretty experienced one. This time it's a leading edge, and it's in the air, somebody getting underneath it. Oh, he's made a mess of it. He's misjudged it terribly. Should have get around that one. They take a couple of runs,
while the ball was in the air, because it was miles in the air, that should have been taken, in my opinion. Tell you what, Farman has bowled his heart out, especially in this over. Once again, outside the off stump, Qari Hamidullah was in no shape, no position whatsoever to clear the boundary. And two fielders converged, didn't call for it, and in the end, the ball did not even hit his hands. And we have seen on a number of occasions that the fielders try to take that catch with one hand. I mean, when the ball is swirling, you need to come down to the ball and try to take it as closer to your body as possible. Another big heave attempted. Have a look at that. It hit his back when he was almost through his stroke. So it's good bowling by Farman. You got to give all the credit to the bowler for making the batters quiet in this over. You're talking about taking those catches. You got to get your body underneath the ball, and the communication has got to be on the money as well. The fielding combination doesn't seem to be witnessed in this competition. In the couple of catches went down, communication has been below par. This time it's a good connection. It's a solid one. It's into the stands. That's a skimmer. Yeah, quality stroke this time from Qari Hamidullah. This time he shuffled across his crease, moved slightly away from the off stump, made that delivery for himself, made that length for himself, and that ball went a mile. Good 5 rows back at least, down the leg side. He's got plenty of that. Creating his own angle there to execute that whip over mid-wicket. Last ball coming up. Hamidullah on strike. This time he gets another one in his slot, and he has just dispatched that away over cow corner for another majestic 6. It's a couple of sixes to end the over. It's a good one in the end for the legends. I just get the feeling he was waiting for that length from Farman. He was expecting a shorter pitch delivery, once again moving outside the off stump and just dispatching the ball over mid-wicket. Back-to-back maximums to end the over with. Solid connection in the last 2 balls of the over. 5 done. It's 79 for 1. $79 for 1 after 5 with just an over remaining. Well, we saw earlier in the first match of tonight's game when Gulshan Gohar scored 119 in the first innings, still ended up losing the game. So it's still hard to understand that what is the best score in the first innings when it comes to tape ball cricket in 6 overs. Because we have seen sides scoring less than 100 ending up winning the game, and we have seen sides scoring over 100 ended up losing the game. This time he sends him into an orbit. That is a colossal hit. That really has been dispatched out of its presence. Bang! And he was waiting for a length like that. It was over, in fact not over pitch, a good length delivery, but not much pace behind it. He had that full swing of the bat, Dawood, getting a first maximum for himself. And here's the response. This is Saddam Shah for you. He gets his man, I reckon. Yeah, he does. Disturbs the timber this time. The length was much fuller, the line was much straighter, and that's the reward you get when you pitch the ball in that right corridor. 6 and out for Dawood. Revenge has been taken by Saddam. That's you go, the slingy action. The ball might have moved slightly into the batter after pitching. Yeah, he does have the ability to make the ball talk. Dawood Suleiman goes for 10. Ashraf Pathan comes to the crease, courtesy a peach of a delivery by the left arm Saddam Shah to get rid of Dawood Suleiman.
Nicely bowled. Had there been a leg before, I reckon he was plumb in front. Only if. But a very good delivery first up to a new batter. It was full. It was into the line of the stumps. He was looking to create an angle for himself, Ashraf Pathan, by moving outside the off stump, but got beaten by the pace on that ball. But now it's Hamidullah on strike. Well, I tell you what, this is Saddam Shah, we all know. When he gets it right, he's very hard to get away. One of the very dangerous bowlers in Thai ball cricket. There he goes again. This time, it's Hamidullah who's got it right in the middle of the stick, and away it went. Fuller once again, it was over pitch, it was in the slot. There you see the full extension of the arm from Qari Hamidullah, showing them the maker's name and clearing the field at long on. Valuable runs in this last over for Liari Legends. Perfect example how you have to play a bowler like Saddam Shah, who is very lethal, very quick, and bowls with a low trajectory and bowls very straight. You got to play him with a straighter bat rather than going across the line. This time he's missing his mark there. Change of angle it was by Saddam Shah, not doing him one bit of favor on that occasion. Yeah, the change of angle not working for Saddam, bowling it down the leg side, which was not gathered by the wicket keeper or the fielder at fine leg. So add 3 more to the total. Liari Legends must be really satisfied with the total that they have got. They know the side, Johor Jawans, are struggling a bit while batting. It was one of the games where they couldn't change down 72 in the last innings, and they lost that game by a big margin, so they can put the opposition under pressure. Full toss, and it's Ashraf Pathan who gets the connection and gets the result in his favour. It's another 6. Change of angle clearly not working. Previous delivery was a wide down the leg side. This time it was a full toss outside the off stump. And Ashraf Pathan, the captain, needed no second invitation in dispatching the ball down the leg side for his first maximum of the innings. 100 also comes up for Liari Legends. Well, I'm still thinking why Saddam Shah needed to change his angle. He was going good, very good in fact, by coming over the stumps. Back to his mark again. But still it will be coming from around the stumps. This is what he was trying to achieve. Nicely bowled. Good finish to the over. They're looking for a second one. It could be a trouble, but no one was there backing up. It's all happening here. They will get a third one as well. Another shy at the stumps. Now they're asking for a referral. The umpire has gone upstairs to see what happened exactly there. Yeah, we have seen these sort of scenes in previous matches as well, especially when it's the last over and they're trying to get as many runs as possible. Ashraf Pathan getting a fuller delivery. He drilled that towards long off. There was no doubt that they would run 2 runs for that. They completed that as well because it was not a good throw, well wide of the wicket keeper. Then they saw an opportunity of coming back for the third. We'll have to see whether the bowler hit the stumps or not. Well, he did, but I think by that time, Ashraf Pathan was clearly inside the crease. Well, it was a fumble by the bowler Saddam Shah that gave the extra second to the batter. There you see the green light in the favour of the batter. So they completed 3 runs. After 6 overs, they've made 104 runs, a respectable total at least. Yes, indeed, they needed their top order to fire, and it did. Qari Hamidullah staying unbeaten, 36 of 13, and I think it was Nizar Ali, Nizar lefty, who, set up the tone for Liari Legends, which they have been missing in the first few games. They were given few chances and they made full use of that. Once again, the fielders causing the error by not completing those catches, and that's why they have let the bowlers down, the bowling unit down, and they have conceded a very huge total, 104, which is in the first 6 overs. Here are some of the highlights. This is how they started. Thrush over extra cover. Full toss was belted hard. Again over extra cover. The left-hander was going all guns blazing. It was Nizar lefty. Right-hander joined in between as well for some lusty blows. Missing the red arse bowler on few occasions. A pull shot and a big heave. And this time he miscued one, and it was interesting catch taken by Basit lefty.
A big heave by Hamidullah just towards the end of the innings. He was very explosive. Yeah, because Nizar Ali provided them with a very good start. It gave the chance to someone like Qari Hamidullah, who was struggling a bit initially, but after he was dismissed, the left-hander Qari Hamidullah went in full flow. Scored some valuable runs towards the end of the innings, making sure that his side ended up with 104 in their 6 overs. So then, Johor Jawans been asked to bowl first when they lost the toss by Liari Legends, and this is what we received: 35 and 36 runs respectively for both of the openers, and that helped them to get past 100. 104 they made. If we talk about the bowlers, once again, 5 bowlers, in fact 4 bowlers were used. 2 wickets were picked up by the left-arm seamer Saddam. Apart from that, every other bowler travelled to Journey. So they've got a decent total on the board, Liari Legends. It all depends on how they're going to be bowling in the second innings. They'll be hoping that they can bowl out the opposition, or if not, they can at least curtail them under the score that they have got. So they will get a lead of few runs when they will come out to bat in the second innings. Well, both of the openers are making their way to the middle, and here both of the commentators are making their way to the commentary box in Farooq and Rana Ishfaq. Thanks very much, Zishan and Falak. And good evening, Farooq. Good evening, Rana, and thank you very much, Zishan, Khalid and Falak. And Johor Jawan, they are about to begin their innings. 104 posted by Liari legend. Syed Nasir, the skipper, was quite confident as is ready to face the first ball. He mentioned he made the first change and straightened his batting, pass it lefty. The left-hand batter at non-striker's end. So they need a flying start to make some sort of impression, and remember, they haven't won any game and they are in some sort of pressure. It has been a long grind for them so far this tournament. They haven't had any impression. They haven't won a single game so far. Let's see if they can come up with a victory tonight. So he'll lefty. So one lefty in batting and one lefty with the ball. He will bowl from the pavilion end. Fielding is being set, wicket keeper, and it has 2 fielders, the leg slip and short third, otherwise the backward point. Deep square leg and mid-off, mid-wicket. So first ball of the new innings. He goes for it, he goes onside. We have to wait for the umpire signal. Has it gone all the way? Umpire is still not too certain. Yes, he is in conversation with the television umpire. We can watch the replay. He pulled that one off the back foot. I think it might bounced inside. Yes, it is. This is exactly what the umpire has signalled. So 4 runs to Nasir and 4 runs to Johor. Lovely pull shot to begin with. He was on the shorter side. Down the leg side. Wide given. More or less every bowler comes and bowls too many wides ball. I'm not quite sure why. What their management and what their coaching staff is doing. He goes onside again. Pitched up. There's a protection out there. Just a 1 taken. Big heave from Syed Nasir. One bowler has to bowl only 2 over at most in an innings, and they're still delivering too many wides. I think they should be very fresh. They should be very accurate. Fair enough. You can get punished. You can tonk for the 6s because it's a stray ball and batsmen got big broad bats. And these stray balls travel a lot as well. But it is in your hands to bowl within your limits, within the guidelines at least. And for the back shot, not
a pure connection he was looking for. Basit lefty is also an aggressive cricketer, so they need runs, they need boundaries from both ends. It's not important. Say Nasir will try their best, but the dugout is quite worried. But they want to see both batsmen step up and make some serious impact. Just one. Saeed Nasir is trying to find the middle of the bat. So far, so good from Sohail, despite the wide. He has been little economical. 9 for none. Yeah, they need to get another 95 runs to equalize the score of the first innings of Liari Legends. And to do that, they got to play strokes. It's a smash from Basit lefty along the ground, just one. That is quite interesting. The left arm operating around the wicket to the left-hander. Very rarely we see. Single is something which doesn't create any sort of a panic in the bowling camp. So, bowler is always happy to giving away the singles. Slammed away by Nasir. And he's got enough bat on that. It's a big one. My word, he has cleared the boundary by a long, long way. Half a dozen from Syed Nasir to finish the over. Nasir is a good striker of the ball. He was one-legged while he was making that stroke. Look at that. His one leg was in the air, but he pivoted a bit and sent the ball over the deep backward square leg. 16 for none after the end of the first over. Even Basit lefty got a couple of starts in this tournament, but then couldn't quite able to convert them to in big innings. Syed Nasir is a good striker of the ball, as I mentioned, but they got to play out of their skin to take the lead first of all. Rana is sharing the new ball, the right armour. Basit lefty will be on strike. You're quite right. These batsmen are quite capable, but they have to deliver on big stage. And this could be the match because they can't afford to lose any more game. They are already in the high pressure. And the Johar Jawan fans, they are desperate to see their team step up and make some sort of impression. 16 of the first over. It is always tough to raise yourself from the down and out position like they are at the moment because they have lost all the games they have played. But one victory can get them right back. And it's a boundary. Beats mid off. The ball got to the boundary in a flash. It was struck so hard by Basit. That was the beauty of a shot. He timed that one perfectly and placed that one precisely. There we watch that again. That was pitched up and it got driven. I think fielder could have made the better effort and that could have been stopped. But I think he dived a bit too late and dived over the ball. And ball went under his body and then went all the way. Absolutely not the best of technique from mid-off fielder. Pulled away. That should be cut off. Tumbling effort here, coming back for two. Appreciation from the keeper. Fielder did pretty well to cover a lot of territory. And finally, he able to make a good stop. But a couple of runs still taken by the Basit lefty. He's getting off to a good start. Let's see if he can pile up a big score today. Full toss. Wide of long off and found the fence as well. No protection. So Basit lefty is dealing in boundaries at the moment. He looked very strong through the offside. Take a look at that one. That was full toss outside the off stump
and he hammered that away between long over and extra covers. Down to the boundary she went. It's not a bad start from Johar Javans. Still they are trailing by 78 runs. So a couple of more overs will set the tone for the finish. Change of pace and nicely played, well managed. He beat the short fine leg fielder and the ball raced away for 4 more. Third boundary of the over. He's picking up the gaps beautifully. There you see that. He pulled that away down towards the deep backward square leg. There wasn't any protection down there and he picked up a boundary. Although he's not hitting big and gigantic sixes, but he's picking up regular boundaries. That's why his strike rate is good and score is good too. 30 for none in 1.4 over isn't a bad effort at all. He's trying for the sixes, but he has got boundaries. Was trying hard, but he has delivered something good for his side. 14 of the over so far. Outside edge dropped. Certain noise we heard, and Rana is not a happy man. Straight in and straight out. He's having his hands on his back in a disappointment. Now it's time to go to Naseem Rajput. थैंक यू फर्रुख रियाज। मेरे साथ बहुत ही हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंट शख्सियत इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SIEHS ब्रिगेडियर तारिक कादिर लाखियार सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेड साहब। थैंक यू वेरी मच सर प्लीज़ आपका माइक आपके साथ मौजूद है। ब्रिगेड साहब कैसा लगा आपको यहाँ UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में? मैं कह रहा हूँ कि दिस इज एनर्जाइजिंग। सिंपली जो कहते हैं वन लाइन है कि इधर आके तो बंदे को यू रियली फील एनर्जाइज्ड। और ये लाइट, ये मौसम और ये लोग और फिर इतनी सारी टीमें आपने इकट्ठी कर दी हैं। और जहाँ पे सादिक भाई बैठे हुए हैं, जहाँ पे हारून भाई बैठे हैं, मुदस्सर भाई बैठे हैं, और ज़हीर ने ये बदर एक्सपो जो है वो तो एक्सपो सेंटर में तो काम करता ही था, लेकिन आई नेवर न्यू कि he could gather so many people and so many teams together. Hats off to them. मैं कहता ना वो फौजी सलूट जो है तो ये, लेकिन आई थिंक दे स्पेशली डिजर्व अ सलूट फॉर देम। नहीं वाकई में चेयरमैन ज़ुहैर नसीर साहब के बहुत एफर्ट दिखाई दिए। फिर ग्रेट जावेद मियादाद साहब, ये जो खासकर हमारा 2 इनिंग का फार्मूला है कि पहली इनिंग के बाद मैच ख़त्म नहीं होता और मैच टर्न होता है, ये ग्रेट लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद इसको लेकर आए। जावेद भाई से जब लास्ट टाइम आपके जब साथ ही थे और वो जो बात हो रही थी तो मैं तो ज़्यादा पता है क्रिकेट के बारे में वो बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं था, लेकिन जावेद भाई ने जब वो चीज़ बताई तो मुझे भी क्लिक किया। मैंने कहा दिस इज गोइंग टू रियली मेस्मराइज। और एक वो जो ना वो कंटिन्यूटी है या एक जो वो एलिमेंट ऑफ शॉक है वो कंटिन्यू रहेगा और वो नज़र आ रहा है जी। ओवरऑल जो खासकर ये मैनेजमेंट आपने हमारी देखी, हारून रशीद मोस्टली किताबें लिखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर बात करें इतना उन्होंने काम किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, अब तो वो सिलेक्टर हैं तो ज़ाहिर है इस वक्त मैनेजमेंट के साथ नहीं है, लेकिन ये सारे लोग वो थे जिन्होंने पूरी कैंपेन बनाई है KTPL की। देखें ये इसी कैंपेन का और इस थॉट प्रोसेस का और उनकी नेक नियति वाली और ये नेक नियति वाली थॉट प्रोसेस है कि टेप बॉल क्योंकि गलियों का खेल है ना ये। अब गलियों के खेल को उठा के आप स्टेडियम में लेके आए और स्टेडियम से उठा के आप पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, तो एक तो क्रेडिट आपको जाता है कि जी यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब और आपकी टीम भी। लेकिन जो मैनेजमेंट और जो थॉट प्रोसेस करने वाले, हारून भाई से भी बात हो रही थी कि दिस इज आई थिंक आउट होने का खतरा। ब्रिगेड साहब 1 मिनट रुकना होगा क्योंकि यहाँ विकेट गिरी है और ये नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर जौहर जवान्स को। तो फिर बासित लेफ्टी आउट हुए, बड़ी की विकेट है ये। और खासकर जिस तरीके से जरा रिप्ले भी हम दिखाते हैं तो ये कैच आउट होने का मंजर, बासित लेफ्टी आउट हुए और पहली विकेट लियारी लेजेंड्स की टीम हासिल करने में कामयाब हुई। लियारी वाले बड़े खुश हुए हैं क्योंकि वो काफी उसने इतने सारे छक्के मार दिए थे कि दे वर रियली वेटिंग फॉर हिम टू मूव आउट।
भाई ये दोनों वो टीम है कि जो मैचेस अपने लूज करके आ रही हैं, तो पहली जीत होगी जो भी जीतेगा इस वक्त निकलेगा आगे और आगे जाएगा जी वो बिल्कुल। और खासकर आपने जितने हमारे इवेंट में छक्के देखे, ब्रिगेडियर साहब किस तरह का इवेंट लगा आपको पावर हिटिंग के लिहाज से? अरे एक्सेलेंट, मतलब मैंने कहा ना कि वो ये जो खास तौर पे ये जो लेफ्ट वाला ये जो ग्रीन ये जो ब्लू इनक्लोजर की तरफ गया था तो आई थॉट इट इज गोइंग आउट, और ये जो राइट पे जो हमारे क्रीक विस्तास की तरफ गया था तो इट वाज गोइंग अप ऑन द टावर। लेकिन दिस स्पीक्स कि जी वो कितने शौक से खेल रहे हैं और कितनी पावर गेम का डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक्सीलेंट, इट इज रियली वेरी वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ब्रिगेडियर तारिक साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं हमसे कहते हैं राजपूत जो है वो वॉरियर्स होते हैं, तो यू आर अ रियली वॉरियर ऑफ द मीडिया, और जिस तरह आपने इसको मीडिया को किया है, इंट्रेंच किया है, तो स्पेशल क्रेडिट टू यू ऑल्सो। नहीं, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स। सब यहीं से सीखा है सर। वापस चल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Naseem Rajput. The first wicket falls, and now Shahraza, the man in form, has come out of the centre. Went for the big shot here, straight away, first ball, but off the inside edge, just one. Still very much in balance this game. 32 for 1 in 2.2 overs with 1 wicket down. They've still got 22 deliveries to be bowled in their innings, and they are 72 runs away from the score of Larry Legends, which they can score, and they can even get lead because Nasir and Shah are good batters, no doubt about that. But their morale is down a bit because they've lost all the games. We keep on saying that, but I think let's see what they've got tonight in their arsenal. Oh, missed the opportunity, low full toss. He was clearly late, a hint of a reverse swing as well. And Syed Nasir is not a happy man. That one swung in the air. That was the beauty of a delivery. He did make the ball to swing in the air. Wow. Well done by Salam. And that is why Syed Nasir struggled to pick it up. Will he continue in this fashion, Salam? So far, so good. Half of the over is done. Not quite sure which end the wind is coming from or wind is blowing from, but he caught the ball to swing. Struck to the onside, low full toss. Some work to be done. And it's a boundary. Oh dear, he made a mess of it. He almost saved it, but not the perfect save, and the ball finally went over the rope, and it's a welcome boundary here in this over for Johar Javans. Oh dear. That should have been stopped. There was he, two fielders almost, oh my God. They were very close to a collision as well, but they didn't collide, but at the end they conceded a boundary. Just because of the half stop, the ball travelled to the boundary and continued its momentum. Nevertheless, the first boundary is still a good over though from Salam. Bowler is bowling from the western part of the ground. Good one again from Salam. Continues to be impressive in this over. And with ocean is very near to this ground, I think if a bowler is skillful, who can swing the ball, that's what we saw from Salam. He did swing it, and I always happy to see some swing going for the Pacers. Usually this format is dominated by the batsmen, so if the bowlers come with some skills and stop the flow of runs, they can get into limelight as well. His run-up is pretty much similar to Haris Rauf's run-up, the way he initiates. Yeah, it is. Big shot. And gone this time, not big enough. Syed Nasir goes. Disappointment for the captain of Johar Javans. He took on the bowler, but picked the man to the perfection. Yeah, he picked out the man in the countrysides.
Although he did try to smoke it down, he did hit that one hard, but picking out a man who was standing right on the boundary, then he juggled a bit with the ball. So that is the end of the innings of Syed Nasser. 3 overs have now been bowled. And commentary now will be picked up by Falak and Zishan. Thank you so much, Rana Ishfaq and Farooq Riaz. Falak Bashir, the new batter in. They have lost yet another wicket, Johar Jawans, and they are just scoring at 12 runs and over right now. 36 for 2, still trailing by 68. This was a captain who was dismissed the last ball of the previous over. Very good over this from Salam, though. Just 5 runs conceded and picked up 2 wickets. Something that we do not often see when it comes to tape ball cricket. What do you reckon about that, Falak? Yeah, it's good. As we see, Shah is going to be on strike, and who's the bowler? We'll confirm soon. So 36 for 2, still acceptable, but they are trailing by 68 runs. That is a big ask. Yeah, they cannot afford to give the opposition a lead. Ahmed is the new bowler for Liari Legends. The right-arm pacer will be coming around the wicket first up from the gymnasium end. Both the right-handers now at the crease. Shah batted really well for them in the previous game. My goodness. Can you describe that? I wish I had words to describe that. That must have slipped out of his hands. That was almost to the other pitch. Yeah, he considered the fielder at leg slip as a batter, maybe. I think it's the first time that he's bowling in the tournament, Ahmed. I haven't seen him bowling in the previous 2 games. And starting off around the wicket to a right-hander always gets a little difficult, because your natural angle is going to be targeting the body of the right-hander, and Shah Raza is a type of batter, he can just swing the ball very hard. Just like that. The Shahenshah for Johar Jawans, and he has cleared the field with ease down towards long on. Well, he's got the connection this time. He's got the height, got the distance, and powerful result of 6 runs to his favour. Have a look at that again. Full swing of the bat, great follow through, and away it goes. Yeah, there you see, he struck it really hard. You could hear the sound of the bat. You can sense it that it's only going in one direction. That is over the boundary ropes. It's good that he's still out there for Johar Jawans. Better delivery this time. It was much pacey. He'll get a leg by Johar Jawans. Yeah, no connection from the batter, merely because of the pace of the delivery. Otherwise, line was there for the taking. It was on leg stump. And that leg by brings on Falak Bashir on strike. He too is a very good all-round cricketer. Comes all the way from Rahim Yarkhan. Is Falak Bashir. He's got a job to do. 2 wickets down very early in the piece. I just get the feeling they will eventually end up getting closer to that first inning score that was scored by Liari Legends. Down the leg side once again. Half stop by the wicket keeper. They're going to get a run as well. 3 more added to the total. He has bowled 2 wides, and both of them have been way down the leg side. Yeah, beautiful view from the camera on your screen. Well, I get the feeling that he should be bowling from over the stumps will be better. The kind of line he's operating, it's not going to do him any word of good here, this angle. Yeah, exactly, because the batters are naturally looking to swing everything down the leg side. You're just helping their cause by coming around the wicket. And he doesn't even have any nearby fielders to have a word with him.
Usually see the fielder at mid-off or mid-on, even the captain coming into the bowler just to change the angle, especially when he's bowling for the first time in the tournament. Short and wide this time is slapped towards long on. Will just get a run. Maybe that's what he's trying to do. By coming around the wicket, he's trying to bowl it outside the off stump so that it gets difficult for the batter to reach to the ball. Trying to get the ball across the right-hander. Succeeded on that occasion. Only single conceded, which is always acceptable. Falak Bashir is going to be once again on strike. He was yet to get off the mark in this innings. So Ahmed has been left alone, as you were mentioning, when he was missing his mark. There you see a few of the happy faces. Quite a few fans, quite a few spectators have built up. The crowd have built up quite nicely in this ground. People do love cricket, and that too here in Karachi, just phenomenal. Slaps it straight back past the bowler. It's a flat one, one bounce and into the fence. It was overpitched, but still that had to be put away, considering that it was the first delivery that he was facing. Look at how well he has timed that. Well, he's got some muscles, and there was a little bit of Karen Pollard in that stroke. Have a look at that. Straight back over the head of the bowler, a couple of bounces to the boundary. Timing was exquisite on that occasion. And again, presenting the full face of the blade. Always the safest option. You can't set a field for that. Minimal use of the feet. It's all hands, the fast hands that we've been talking about. I think it was Mahendra Singh Dhoni who brought this concept in the modern day cricket. Too wide, this time outside the off stump. Well, he has been all over the place in this over, Ahmed. Hasn't found his line right as yet. He's been very average, I would say below par in this over. Couple of wides down the leg side. And a big wides. All of them have been big wides. Looks as if that he has forgotten where to bowl to. The way he's bowling wides. But when he's getting it right, he really gives me the indication that he can bowl, but it's the accuracy which is lacking, and lacking by some margin, I would say. Maybe he's trying to prove a point to the captain. Short and wide outside the off stump, pull away nicely over square leg. That's going to run away for 4 as well. Easy picking for someone like Falak Bashir. This time got his line slightly right, but the pace was not there. The batter got the room he was waiting for and hit it comfortably over the leg side. Eventually the over comes to an end with that boundary. Or has it? One ball still to go. Got me confused as well with those wides. Too many wides we have seen in the first match when Majid Gholi was operating from Liari Legends. I beg your pardon, from Malir Malangs. He was going all over the place as well. And we have seen quite a few bowlers missing their mark. Saddam Shah also bowled 2 or 3 wides. And it's Ahmed who is feeling the heat. Changing his angle now, coming over the wicket. Has hit the legs. He will just get 1 run. We'll have to wait for the umpire signal, whether it was bat involved or not. No signal by the on-field umpire, so it's going to stay a single. 4 done. It's 60 for 2. Right then, it's 60 for 2 after 4 overs. An eventful over, action-packed over came to an end. The last one by Ahmed, went for 23. Quite a few extra deliveries, 3 of them, 3 wides. And a couple of big hits as well in that over. Bashir will be the veteran. Yeah, he bowled an over and a half the previous one.
He conceded 23 runs, Ahmed. Now it's Salam. Bowled really well in the first over, picked up 2 wickets to fall so far in this innings for Johor Javans. He'll be looking to repeat the heroics in his last over of the spell as well. Falak Bashir is on strike. He got a boundary in the previous over. It's not going to be easy against someone like Salam, who has got a slingy action along with the pace as well. It's Salam who's got the ball in his hands. Farooq was mentioning his run-up is just a bit like Haris Rauf. Starts off with a shortish delivery, edge and just over the head of the fielder at short third. Few futsal skills being shown by the fielder at fine leg, and they're eventually going to come back for a couple. Well, we all know cricketers do love practicing with football. I wonder if these guys are familiar with the soccer, or do they practice with the soccer? I'm not quite sure. What do you reckon, Zishan? Well, you must not be aware about the rules and regulations of soccer, but at least everyone knows how to kick the ball. But at least they're trying to do it here in this cricket field. Whenever the fielders see that the ball is just getting away from them, they just plant their foot in the way through to stop the ball. Mostly we saw on the boundary lines. Once again down the leg side, nicely worked away. It's going to run away for 4. Although the fielder at square leg tried his best to get there to the ball, but it was just timed well enough. Yeah, good timing and good execution of the stroke, using the pace of the bowler. Salinga getting it wrong, and Falak Bashir was equal to the task. Worked it round the corner for another boundary. And with the action that he has got, he can completely surprise the batter with a bouncer, which he did in the first ball. I think we can deliver a slower ball in that wide channel. He'll be very hard to pick up. Salam. That's why even in modern day cricket, the bowlers are more effective, who have got something unusual about their action. We talk about Zaman Khan, we talk about Jasprit Bumrah, how effective they are in every format. Who can forget Lasith Malinga? He was more than effective when he used to play for Sri Lanka. He is retired now. A couple of times he's the only player in the cricket history who's got 4 fours. That kind of 4 fours on the trot. Picking up 4 wickets on the trot. Something very unusual in cricket. But it was his unique action which made him that effective at that point in time. Yeah, he did that for the first time against South Africa back in 2007 World Cup, where South Africa were just cruising along to that target, and all of a sudden Malinga comes back towards the end of the innings and picks up 4 wickets and 4. Pick-up shot on the leg side. It went hard and flat. 1 bounce and into the fence. Nice correction this time by Falak Bashir. Well, that is like a sledgehammer dropping on the ball. He has hit that some. It's gone all the way off the toes and goes flat, 1 bounce into the advertising hoardings. Falak Bashir in business with that big strike. Tell you what, not many batters can hit that ball towards that region of the ground. It was full, it was speedy. Now it doesn't look that pacey on the screen, but you look into the naked eye, that ball did have some pace, and he just put his bat down and that ball just raced away to the boundary ropes. Well, Zishan, quicker they come, quicker the ricochet. They can go even quickly off the bat if the timing is there. There was certainly timing behind that stroke. He decides to go straight. Wow, what a shot that is. Sitting down on one knee, hitting it with a straight bat over long off. Well, he held his pose after executing that stroke. Have a look at that again in the replay. Wow. That is a scene for the photographers as well. That is a wonderful hit. It really is. Sitting down on one knee and hitting it with a straighter bat, and not only getting the elevation but the distance as well. Salam proving to be a touch expensive in this last over of his. 16 runs already conceded by the fast bowler. He needs to finish off well. Outside edge, 1 bounce straight to the fielder at short third. But Zuhair Nasir was standing there. He did a very good job
did not allow the batter to get a single. Yeah, he's always involved into it. Very passionate guy. End of the over though. It's 5 done, 76 for 2. Right then, 76 for 2 after 5 overs. They're still trailing by 28 runs are Johar Jawans. And 1 over remaining, which means that they need to maximize this over to get closer to this target. And it's going to be Rana who has been bowling particularly well in this event so far. He's not that pacey, not that quick, but certainly he's deceptive and he knows his limits. Very intelligent bowler and uses his brain to good effect. Yeah, bowled the second over, Rana, in this innings, now coming in to bowl the last over to finish off the innings for Johar Jawans. Shah Raza, on the other hand, has been at the non-strikers end in the last few overs, hasn't had much of a strike. It's Falak Bashir who has done the bulk of the scoring in this partnership. Now they need to at least score 28 so that they cannot concede a lead. Johar Jawans. Rana about to start the last over of the innings. Shah Raza on strike. They need to get at least 3 sixes in this over. It's up in the air. It has gone miles up in the air. There is a fielder getting underneath that. And he puts it down. And they come back for the second one as well. Well, that one went high in the air. And the fielder had ample time to get underneath it. In the end, just couldn't judge it to perfection. Have a look at that again in the replay. It was almost off the splice of the bat. And have a look at that. 2 of them. Oh, that's like synchronized. Sometimes I get the feeling that the fielders have so much time when the ball is in the air. One can easily pick the other fielder up on his lap and say, come on, just do not let the ball to swirl in the air. Take it before it comes to us. They got to help each other at the end of the day. I tell you, Zishan, it's only a funny sight in the commentating bench. Once again, it's up in the air. It's Askaya who wants it. The bowler's trying to get underneath that. So does the 2 other fielders. And he manages to take it in the 3rd attempt. In fact, it was the fielder at extra cover who completed that catch. But good, really good improvisation this from the fielding side. Well, this is how they needed to help on the last occasion as well, the fielders. But they've ended with this wicket. Eventually, Rana has been able to pick up the wicket. It looked like almost half of the side was out there to take that catch. You could see 5 fielders at least on your screen. Looks as if they were having a party out there. We're enjoying with the ball, juggling with the ball. But that's the departure of Shah Raza, who made just 10 runs, 78 for 3. Tell you what, it was a really important wicket for Liari Legends because Shah Raza has the ability of causing some damage towards the end of the innings. But now he has been removed out of the scene. Umar is the new batter in. They still trail by 26. Even if they get 4 sixes in the last 4 balls, they will still be trailing by 2 at the end of the innings. So they'll be hoping, they'll be relying on the mercy of the bowling side to bowl few wides and no balls so that they can get some extra runs as well. Well, I didn't like the approach of the batters because he should have been able, Raza, to try and give the strike back to somebody like Falak Bashir, who is hitting the ball in the meat of the bat most often than not. Umar is the left-handed batter who has made his way to the middle. Will be facing. He's on strike up against Rana. Well, even Umar likes to swing everything towards that mid-wicket long-on region. He has done that in the past. That's why there is a fielder specifically positioned for that particular stroke. He does go in that direction.
It's up in the air. Fielder getting underneath that. And they take it. A very good catch indeed. And this time there was just one fielder who called for it and he took it. Yeah, it's not that easy when you have just come to the wicket and go from ball one. Mistimed it. It was miles in the air and the fielder just gathered himself underneath that ball and took it very cleanly. This time around, it was no mix-up between the fielders. So surely calling has been made on that time around. Umar goes without troubling the scorers. 78 for 4. Back-to-back wickets for Liari Legends means Rana Mohsen is now going to be on a hat-trick. First it was Shahraza who was taken by the fielder at extra cover in the 4th attempt. Then Umar getting hold out in the deep mid wicket. Ijaz, the new batter in. First time he is batting in this tournament, so he'll be facing some nerves as well, considering the fact that it's a hat-trick ball as well. Yeah, his first responsibility will be to avoid the hat-trick. We have already had a hat-trick by Mansoor in this competition just 3 nights before. Are we going to witness another one? It's on the cards here. Rana with the ball in his head on a hat-trick. Oh, once again trying to swing it a little too hard. He was very lucky that he didn't get an outside edge. The ball just hitting his body. But most importantly for the fielding side, it's just 1 run. Really good last over being bowled here by Rana. And once again the captain is not looking that happy at all. I tell you what, he was lucky not to get the connection. Was Ijaz. Even if he would have gotten the connection, I wonder if that would have ended up as a leading edge, the way he was trying to go across the line. But the good thing for Javans is that it's going to be the informed Falak Bashir on strike. Yeah, he needs to send both these deliveries out of the park. Leading edge is it. It's going to go over the head of the fielder at short third. Short fine leg fielder is after the ball. Once again trying to stop the ball with his foot, but the ball did trickle past the boundary ropes. So they get a boundary they were looking for. Not where he intended it to, but he'll take it nevertheless. Well, if you could see in the replay, have a look at that again, it was almost off the back of the bat. Not very often you see that type of stroke, but he's got a good result in the end. It was tried by the fielder down there with the foot, but eventually ball won the race. He was completely foxed by the lack of pace on that ball. It was too early into that stroke, because of which the ball hit the back of the bat. Trailing by 21, even if they get 6 in this last ball, Liari Legend will still have a lead of 15. It's a full toss. Couldn't put that away on the leg side, running the first one hard. It is a throw as a wicket keeper's end. It's going to be a run out. Really good effort. The fielding effort has literally been lit up in the last few overs for Liari Legends, and that's why now they have a very healthy lead of 20. Well, they deserve all the credit. They've bowled brilliantly, especially Rana in this last over, just went for 9 runs. And a run out and a couple of wickets to Rana as well. There you see, this is how it happened, the last run out. Easy, very easy in the piece. He was not even in the frame. He was out by a mile. 84 they managed in 6 overs. So 20 runs is going to be the lead for Liari Legends. Yeah, a lead is a lead, no matter if it's of 20 or 30 runs. It gives a psychological advantage of the side who's going to come on to bat in the 3rd innings. Because every run they're going to score is going to add to the 20 runs lead that they have got. Once again, Johor Javans were not up to the mark with their batting lineup. And I think the main reason is that the captain is not delivering from the front. Yeah, they've been missing his heroics. He's known for his big hitting. There you see the highlights. Pass it left, he started out with 3 boundaries. Through the offside, he was very square. And one he got on the fine leg as well, and he miscued one. And this time around, he was caught very safely in the covers. And another good catch by Rana on the boundary at mid-on.
Few big hits by Falak Bashir. He looked in a very good form, but just didn't get the strike back towards the end of the innings. Yeah, we saw more boundaries than maximum this innings of George Javans. Shah Raza was kept off strike. He lost his touch, ended up losing his wicket. And we saw Rana Mohsin picking up 2 back-to-back wickets in that last over. I think it was a very good effort from Rana Mohsin. They lost 3 wickets in the last over. In fact, George Javans won because of run out at the last ball when they were trying to come back for the second one. So a very good clinical bowling effort from Liari Legends after batting really well in the first innings. This is how they got those runs. 16 and 17 by the captain and 30 towards the end of the innings by Falak Bashir. A good cameo. Good bowling performance considering the fact that overall they went for just 14 runs and over. 2 wickets apiece to Rana and Salam. Their spell clearly tilted the match in the favour of Liari Legends. And now they have a lead of 20 runs. It's going to be really crucial how they bat in the second innings. We'll take a short commercial break and after that we'll be back with the second innings of Liari Legends. बात करें महंगाई की तो महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। 8वां रोजा है, खरबूजा नहीं खा सके अभी तक, नहीं खाया है। हम तो मिडिल क्लास के देखे 50-50 रुपए की चीजें लेके आ रहे हैं। लोग सिर्फ रेट पूछ रहे हैं लेकिन कोई फल फ्रूट ले नहीं पा रहा। एक चीज छोड़ती हूँ, एक चीज लेती हूँ। पिछले 3 महीने में इतनी महंगाई हो गई है। अपर मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया, गरीब लोग तो क्या करें। एक ठेले पे भी खड़े होकर सोचो कि ले ले या ना ले। ये तो आप पूछे नहीं गुजारा कैसे हो। पाकिस्तान में पहली बार बचत एक्सपो के नाम से 31 से लेके और 2 तक 3 दिन की बचत एक्सपो सेंटर में होगी और इसको ये बदर एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंशाल्लाह जफर भाई जो हैं वो हमारे साथ इस टीम में शामिल हैं। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बदर एक्सपो का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम भी अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और बदर एक्सपो इंशाल्लाह अपने 100% एफर्ट्स के साथ मैं मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह इस पूरे इवेंट को एक अच्छे सक्सेसफुल तरीके से इंशाल्लाह इसको ऑर्गेनाइज करेगी। वेलकम बैक और फिर से खुश आमदीद नाजरीन। यहाँ पे मैच 13 जो है वो लियारी लेजेंड्स और जौहर जवान्स के माबैन जारी। तीसरी इनिंग्स का खेल अभी शुरू होगा और यहाँ पे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देंगे राना इशफाक। शब बखैर राना। अंपायर्स ने और इन अंपायर्स की जितनी हम तारीफ़ करें वो कम है और मैं ये समझता हूँ कि अंपायरिंग एक बड़ी टफ जॉब है, किसी तरह से आसान नहीं। और ये फील्डिंग साइड मैदान में आ रही है अपनी दूसरी इनिंग्स में फील्डिंग करने के लिए। जहाँ तक अंपायरिंग का ताल्लुक है, अजीज़ुर रहमान इस पैनल को लीड कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट अंपायर हैं और बहुत ही अच्छी कारकर्दगी अंपायर्स की जानिब से देखने को मिली है। ये दोनों बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर क्रीज की जानिब बढ़ते हुए और इनके कांधों पर काफ़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को एक अच्छे और अग्रेसिव, एक जारे स्टार्ट से आगाज़ दिलाएं।
जी हाँ, बड़ा ज़रूरी होता है अप फ्रंट बैट्समैनों के लिए कि वो अच्छे अंदाज में बैटिंग करें और एक बुनियाद रखें एक बड़े और अच्छे स्कोर की। और अगर ओपनर्स आपके या वन डाउन आपके अच्छे बैट्समैन नहीं हैं या अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते तो फिर करते तो हम फिर अक्सर देखते हैं कि टीम्स बड़ा स्कोर नहीं कर पाती, चाहे वो कितने ही कम ओवर्स का फॉर्मेट क्यों ना हो। पहली 3 पोजीशंस जो हैं, 2 ओपनर और नंबर 1 डाउन, ये बहुत अहम पोजीशंस हैं और ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू 20 और 50 ओवर गेम या टेस्ट क्रिकेट तो फिर 1 डाउन और 2 डाउन और भी ज़्यादा अहम पोजीशंस हैं। जी हाँ, और इनिंग्स के आगाज़ ही में इनकी 20 रन्स की बरतरी है और इसको देखते हैं कि किस तरह ये कैपिटलाइज करते हैं। निज़ार अली बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए हैं मैदान में। उनका साथ दे रहे हैं कारी हमीदुल्लाह, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी पिछली इनिंग्स में। इसी किस्म की बैटिंग को जारी रखना होगा इस लीड को मजीद एक्सटेंड करने के लिए। सदाम शाह को यहां पे बॉल थमाई गई है, बॉलिंग में चेंजिंग की है। सदाम शाह न सिर्फ अच्छे बॉलर हैं बल्कि एक बड़ा फ़नी कैरेक्टर भी हैं और इत्तेफाक हुआ इनके साथ ट्रैवल करने का तो अपने साथियों के साथ हम वक्त ये हंसते और खेलते रहे, एकदम जिसे कहना चाहिए बड़े एनर्जेटिक लग रहे थे। पहले ही बॉल को खेल दिया है मिड विकेट से बाहर, सलामी छक्का लेफ्ट हैंडर की जानिब से। निज़ार लेफ्टी ने उठा मारा है सदाम को ग्राउंड से बाहर, पहली गेंद पर वेलकम किया है। जब कभी भी आप अपनी लाइन और लेंथ चूकेंगे थोड़ी सी भी तो फिर आपके साथ यही होगा। हल्का सा घुटना बेंट किया मिड विकेट पे, एक फुल ब्लडेड स्ट्रोक और छक्का और निज़ार के एतमाद में बड़ा इजाफा होगा इसके बाद। एक और शॉट, इस मरतबा कनेक्शन इनके मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी 4 रन जरूर मिलेंगे। इनसाइड हाफ ऑफ द बैट था राना, लेकिन बॉल फिर भी क्विकली ट्रेवल कर गई, टाइमिंग जरूर थी। ये ना तो कोई लॉन्ग लेग पे है ना कोई डीप फाइन लेग पे है। ये देखिए थोड़ा सा शफल करके बैक एंड क्रॉस भी हो गए थे। इनका जो बायां पांव है जो कि इनका बैक फुट है वो ऑफ स्टंप से बाहर प्लेस हो गया था जब इन्होंने ये स्ट्रोक लगाया और चौका लगाने में कामयाब। फील्ड को जैसे कहना चाहिए एक तरह से ये खिलाड़ी जो है वो मनूवर कर लेते हैं और इस बात में बड़े माहिर हैं और यही किया है निज़ार ने। और काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी हैं सदाम कि इन्होंने बॉल ऑलमोस्ट फुली करना होता है, आगे करना होता है, तो एंटिसिपेट कर लेते हैं बैट्समैन। और इस मरतबा यॉर्कर किया है, अच्छा गेंद, 1 रन जरूर मिला है लेकिन वापसी यहां पे करते हुए सदाम शाह। कारी हमीदुल्लाह की अब जिम्मेदारी है कि वो जैसे कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट करें निज़ार को, जहाँ तक उनके अच्छे आगाज़ का ताल्लुक़ है यहाँ पर। दूसरी जानिब सदाम ये चाहेंगे कि वो कम बैक करें। ओवर में ऑलरेडी 11 रन उन्होंने कंसीड कर दिए हैं, एक चौका और छक्का उन्हें ज़रूर लगा है। नसीम राजपूत जिस तरह मैंने कहा मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपके लिए पेश कर रहे हैं। एट टाइम्स प्री मैच एंड पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप उन्हें देख रहे हैं। एट टाइम्स ही इज़ विद टॉस, कमेंट्री बॉक्स में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ही इज़ डूइंग अ लॉट। और इस मरतबा बल्ला स्विंग किया है लेकिन गेंद और बैट का कोई मिलाप नहीं, यहां पे क्रॉस द लाइन गए थे। इसी किस्म की लाइन पर गेंद डालना चाहते हैं सदाम, और स्पेशली अगेंस्ट द राइट हैंडर राना। आई गेट द फीलिंग कि ये ज्यादा कंफर्टेबल हैं बनिस्बत बाएं हाथ के बल्लेबाज के। हमेशा बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना जब राइट एंड लेफ्ट हैंडेड स्वॉप होते रहते हैं, ख़ासतौर पे वो स्ट्राइक जब रोटेट करते रहते हैं तो बॉलर्स को एडजस्ट करना हमेशा ही बड़ा मुश्किल होता है। इस मरतबा पीछे कर दी गेंद और इसको खूब सजा दी है यहाँ पे हमीदुल्लाह ने। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बड़ा छक्का। बहुत जल्दी देख लिया था कि गेंद पीछे गिरी है, हाफ ट्रैकर है, बैक फुट पे गए, घूमे भी नहीं, ऑलमोस्ट उसी पोजीशन में जिसमें थे। बल्ला स्विंग किया, बाजुओं को उन्होंने घुमाया और खूबसूरत पुल स्ट्रोक 6 रन के लिए कारी हमीदुल्लाह का, और ये इनके एतमाद में बड़ा इजाफा करेगा और इत्मीनान का सांस भी लेंगे वो। इस मरतबा स्लॉट में कर दी है और इसको भी उठा दिया है और एक और छक्का।
यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे तो हमीदुल्लाह। कारी हमीदुल्लाह के अज़ाइम और इरादे आज ख़तरनाक हैं। ऑफ स्टम्प से बाहर प्लेस किया, शफल किया हल्का सा और गेंद को फिर वैग किया है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। बहुत खूबसूरत भी, बहुत कुव्वत से भरपूर, बड़ा उम्दा छक्का, बिल्कुल कोई हाफ मेजर्स नहीं और बड़ा ही बेरहमाना अंदाज। 23 रन बने पहले ओवर में, बड़ा महंगा ओवर। ज़ुहैर नसीर, नसीम राजपूत एंड मैनी अदर्स एक बार फिर बिजी हैं, कुछ बातचीत चल रही है। KTPL सीज़न 3 अपने तमाम तर रंगों के साथ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जारी है और टूर्नामेंट की आज 7वीं रात है। 6 रातें बीत गई हैं। टूर्नामेंट एक तरह से अपने हाफ स्टेज पे आने वाला है। 16 तारीख को इंशाल्लाह अज़ीज़ इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा और एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो गया है कि पहले दिन से ये खेल शुरू हुआ, फिर 7वीं रात फरमान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। जी हाँ, ठीक कहा आपने राना इशफाक। हर गुजरती रात के साथ एक्साइटमेंट जो है वो भी बढ़ रही है इस टूर्नामेंट की और जो हाइप क्रिएट हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 84 से ज़ायद ममालिक में ये मुकाबला देखा जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है UBL मीन KTPL सीज़न 3 के हवाले से अगर बात की जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रेप बॉल क्रिकेटर्स जो हैं वो जा रहे हैं इस वक्त। फुल टॉस बॉल को उठाने में नाकाम रहे और फील्डर ने भी नाकाम कोशिश की है बॉल को रोकने की और दूसरे रन के लिए भी वापस मुड़ेंगे। एक एक रन कीमती है, ख़ास तौर पे वो रन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है जो आप अपनी स्लॉपी या सिली फील्डिंग की वजह से कंसीड करते हैं। चलो बैट्समैन किसी बहुत अच्छे स्ट्रोक के ज़रिए रन बनाए तो वो तो ठीक है। चाय का दौरा है इनके डगआउट में और इत्तेफाक होता है हमें भी ये चाय पीने का। जो नीचे टी स्टॉल है, चाय बड़ी अच्छी है, बहरहाल काफ़ी पकाने में काफ़ी माहिर हैं ये जो चाय वाले। एक और फुल टॉस की है लेकिन रेंज से थोड़ी सी बाहर थी, इनके स्लॉट से बाहर। एक ही रन मिला है। फरमान काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं राना थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट और काफ़ी नपीतुली बॉलिंग इनकी जानिब से देखने को मिली है। या अभी भी अगर देखें तो पहली 2 गेंदों में ज़्यादा मौका नहीं दिया इन्होंने कि बाजू अपने खोलें। बैट्समैन 3 रन कंसीड किए हैं और फिर वही बात है कि अगर बॉलर जानता है बैट्समैन की वीकनेसेस को और उसे पता है अपने स्ट्रॉन्ग जोन का, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी 25-30 रन पड़े, आप कम रन का ओवर कर सकते हैं। एक और अच्छा गेंद जिसको खेल दिया है ऑन साइड की जानिब। 2 फील्डर्स आ रहे हैं, जब तक थ्रो करते हैं 2 रन मुकम्मल किए हैं यहाँ पे। देखें ना, अगर आप वाइड लाइन के ज़रा अंदर फुलर लेंथ की यॉर्कर करें तो कितने ही अच्छे बैट्समैन, कितने स्किलफुल क्यों ना हो, कितने बैट्समैन हैं जो आपको कवर्स पे और पॉइंट पे छक्का मारेंगे। या आप शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल करें जस्ट अहेड ऑफ गुड लेंथ और वहाँ से गेंद उठती हुई गाइडलाइन के अंदर हो, कितने बैट्समैन हैं जो जयसूर्या या सहवाग की तरह आपको कट पे छक्का मार लेंगे, भले ही ये ट्रेप बॉल है। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स अगर ये समझे और उसके अंदर स्किल हो तो स्टिल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैट्समैनों के लिए है ये खेल, बॉलर्स के लिए चांसेस हैं और ऐसा हमने देखा भी है इस टूर्नामेंट में भी और माजी में भी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात शाहजहान मीर, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, एक सीनियर बॉलर हैं पाकिस्तान टेप बॉल में, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि स्लॉट से बाहर अगर कवर्स में बैट्समैनों को खिलाने की कोशिश करें बॉलर्स तो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस मर्तबा उठा दिया है मिड ऑन की जानिब, फील्डर वहां पर नहीं है, दौड़कर फील्डर को काफी टेरिटरी कवर करके आना पड़ा। अच्छी फील्डिंग, रोक लिया है, इन प्ले फेंक दिया है गेंद को और इसी असना में 2 रन का और इजाफा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। जो फील्डर थे वो स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे थे, गेंद थोड़ी वाइड आई और उन्हें कुछ इलाका कवर करना पड़ा, मगर उन्होंने इन टाइम गेंद को पुल इन कर लिया। उनतीस रन बन चुके हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है।
आइए नीचे चलते हैं, वहाँ पर नसीम राजपूत मौजूद हैं, देखते हैं कि उनके साथ कौन है। थैंक यू राना अशफाक। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, पूरे मुल्क में फ्री डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, मारूफ हर्बलिस्ट हैं। उनके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द किंग ऑफ योगा योगी वजाहत भाई। थैंक यू वेरी मच योगी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर साल आप हमारे इवेंट में आते हैं, आप देख रहे हैं UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग कुछ आगे बढ़ रही है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी आगे यहाँ पे, और इन्जॉय हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि टेप बॉल को भी प्रमोट किया जा रहा है, और ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं समझता हूँ बड़ा काम कर रहे हैं, और ऐसे लड़कों को भी आगे आना चाहिए। हम बचपन में टेप बॉल ही खेलते थे, उसके बाद ये बाकी सब क्रिकेट शुरू हुई है। बहरहाल बड़ा इन्जॉय हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। योगी भाई, स्पोर्ट्स ख़ास तौर पे एक ऐसा स्पोर्ट जो सड़कों पे खेला जा रहा था, गलियों में खेला जा रहा था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने। जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक, ये सब इस ब्रांड का हिस्सा हैं। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ तमाम ऑर्गेनाइज़र को, और ये बात कि इस दौर में हमें नौजवानों को ऐसी सरगर्मियाँ देनी है जो सेहतमंद हों, जो उनके जो जोश और जज्बे हों उसकी मुस्बत सिमत तयन करती हों। और इसके लिए हम सब मशकूर हैं कि आप लोगों ने एफर्ट्स किए। और टेप बॉल के हवाले से डॉक्टर साहब ने सही कहा, कभी कभी हमने भी खेला था, हम तो हैं ही हेल्थ के हवाले से, लेकिन कराची टेप बॉल लीग जो है, इसने प्राइमरी लीग जो है, इसने एक कमाल किया ये कि नौजवानों को ना सिर्फ इस वक्त जबकि हम सर्दी में हैं, मैं इनमें वो जोश देख रहा हूँ कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी, मैं तो फिर भी कुछ कवर किया हुआ, तो ये जोश सिमत का तयन चाहता था। और ये आप लोगों ने, आपको क्रेडिट जाता है आप सबको, आपके चैनल को, आपके तमाम और ये ऑर्गेनाइज़र को इस इवेंट के। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जब कोई अच्छा काम हो तो अप्रिशिएट कीजिए, घरों से निकलिए और वहाँ आइए जहाँ पे आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत भी है। यही हमारी मैनेजमेंट का भी कहना है कि अच्छा काम हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहे हैं जी, सेहत के हवाले से भी। और जैसे इन्होंने योगी भाई ने बात की है कि अभी मौसम थोड़ा खुनकी है इस टाइम हवा में, कराची हालांकि बहुत सर्दी का नहीं होता कराची का सीज़न, लेकिन फिर भी जैसे जोश जज्बा है, और ये मैं समझ हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है। और ये जो बदर वालों ने, मैं समझता हूँ पूरी टीम ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, मुबारक के मुस्तक हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक और बात जो कहना चाहूँगा, ये चीज़ें जो हैं, ये जो खेलों का मामला हैं, हेल्थ के हवाले से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और हमारा फाउंडेशन भी हमेशा ऐसे इवेंट करवाता रहता है, और हम भी कोशिश में हैं कि ये लाहौर के अंदर भी इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। योगी भाई, कोई पैगाम UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए? पहले तो ये कि आइए, अब कुछ हो रहा है उसका हिस्सा बनिए। इससे पहले कि आप गलियों में खेलें, आएँ, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ से आप सिर्फ शहरी नहीं, मुल्की नहीं, बल्कि इंटरनेशनली भी जाने जाते। 84 ममालिक में ये नशरियात। आई नो दैट्स आई एम सेइंग दैट। तो वो कहते हैं ना, वो हाय कनाडा, तो मैं वो भी कह सकता हूँ, हर जगह देखा जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है, एक दिन अगर रब से आप ये कहेंगे कि ए रब तूने मेरे साथ क्या किया और मुझे क्यों ना आगे बढ़ाया, तो रब आपसे ज़रूर कह सकता है कि जब मौके मिले थे तो तुम कहाँ थे। आइए, ऐसे मौक़ों को ज़ाया ना कीजिए, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से आपको एक इनाम है। और ये इनाम मैं समझता हूँ कि इसमें सारा क्रेडिट तो आप ही लोगों को जाता है कि आपने सोचा है। आजकल नौजवानों के लिए सोचते कहाँ हैं। तो बदर एक्सपो, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ उनके, तो उस हवाले से इनका एक नया रूप मुझे देखने को मिला, मैं उस पर बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम तो सिर्फ आइडिया को समझते थे उनका, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने किया है और आप सब इस पर मुस्तहिक़ हैं। बस सिर्फ मैसेज ये है कि नौजवानों आइए, आपके लिए कुछ ऐसा एहतमाम किया गया है जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो ज़िंदगी भर आप एक ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट से महरूम हो जाएंगे जो शायद आपको विनिंग लाइन पे ले जाते। Thank you very much Yogi Wajah sahab, and thank you very much Dr. Waqar Ahmad Niaz sahab. Now it's over to you, commentary box. बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत और बहुत गेस्ट्स जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की KTPL के हवाले से, बदर एक्सपो के हवाले से और नौजवानों के हवाले से जो इस टूर्नामेंट में शरीक हैं। इस बॉल को उठाना चाहते थे, एच लगाया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, पहली विकेट हासिल करने में कामयाब, और यहां पे विक्टिम हुए हैं निजार लेफ्टी। जी हाँ, वाजिद जिन्होंने 2 डॉट्स गेंदें कर रखी थी, तीसरी गेंद उनकी जिस पे निज़ार ने घुटने को बेंट किया और गेंद को स्विंग करना चाहा ऑन साइड में, जो वो कुछ कर सके
वो कैच दे सके विकेट कीपर को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह ये आउट हुए हैं 16 रन बनाकर 36 पे 1। निज़ार की वापसी के बाद आमद हुई है अशरफ पठान की, जो कि कैप्टन भी हैं टीम के। नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग के लिए आए हैं। सामना करेंगे वाजिद का, जिन्होंने पहली विकेट हासिल की। कुल मिलाकर अब 56 रन की इनकी लीड हो गई है और इस ओवर के बाद भी 3 ओवर्स का खेल बाकी है। 3 गेंदें इस ओवर की बाकी हैं, तो स्टिल इनके पास मौका है कि अपनी लीड को कोई 110-20 तक ले जाएं और एक अच्छा तगड़ा टारगेट दें अपनी अपोजिशन को। बिल्कुल ठीक कहा आपने राना इशफाक, और यहाँ पे एंगल तब्दील किया है बॉलर ने। राउंड द स्टंप्स आएंगे अशरफ पठान को गेंद करने के लिए। पीछे पड़े हुए इस गेंद को जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन इनसाइड हाफ ऑफ द बैट लगा है और इस 1 रन के साथ यहां पे अपना खाता खोला है अशरफ पठान ने, और स्ट्राइक पहुंची है हमीदुल्लाह के पास। हमीदुल्लाह जिन्होंने इस इनिंग्स में अब तक बड़ी बेहतर बैटिंग की है, 6 गेंदों पे 17 रन और अप फ्रंट 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया था। उनकी टीम उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी आज कि वो इनिंग्स के आखिर तक जाएं और एक लंबा स्कोर करके दें अपनी टीम को। जी हाँ, और याद रहे कि जब इन्होंने इनिंग्स का आगाज किया था तो इनके पास बर्तरी थी 20 रन की। इस मरतबा जोरदार हिट लगाई है, स्क्वायर लेग डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, एक और चौका। बड़े अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं आज हमीदुल्लाह, ये बड़े अच्छे मूड में हैं दोनों और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 41 रन हो गए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और हमीदुल्लाह 21 रन पर नॉट आउट हैं और लग रहा है कि आज गेंद उनके बैट पे आ रही है और बड़े पुरएतमाद हैं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए पिछली इनिंग्स में भी काफी इफेक्टिव रहे थे। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। स्लो गेंद किया था, जिसको पिक किया है, जोरदार हिट लगाई है, अच्छी फील्डिंग। बासित लेफ्टी डीप मिड विकेट पर मौजूद थे, यकीनन बॉल ट्रेवल कर रही थी, लेकिन उसको रोकने में कामयाब हुए और इस 1 रन के बाद स्कोर पहुंचा है 42 पे 3 ओवर्स के इख्तिताम पर। और इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी और आपका साथ देंगे फरुख रियाज विद जीशान खालिद। Thank you very much, Falak, Sher and Rana Shawak. It's 42 for 1 after 3 and they got a lead of 20 odd runs. That is why they are placed at 62. Majid, who just finished his over. Hamidullah, who played well in his first innings and also continued in the same manner, carrying runs in this innings with a strike rate of nearly 300. And at the com box, I have been joined by Dishan. Welcome. Thank you so much, Farooq. Just a small question to you. Is it just the commentators or do the players also get exhausted in the last innings? I think players are more exhausted, and that is why if we saw the complete contrast in the performance, they tend to lose their focus, they lose their hitting ability sometime, and I think fitness standards come into play in this format as well. They have to play for 24 overs. Pulled it away. Has he got enough from that? Could be out. It's a long enough hit. Just cleared the man by some distance, and up goes the arm. So over begins with the maximum here. Yeah, Qari Hamidullah is getting his form back in tonight's game. He was amongst the runs in the first innings. This time, once again, the ball was angling down the leg side. He held the ball on its way. For a moment, the fielder out deep square leg thought might have get some hand to it, but the ball just kept going over his head.
He shuffled across. Qari Hamidullah. Normally we do not see the batsman get shuffle across to create some sort of room. Big shot. Huge one from Qari Hamidullah. Back-to-back maximum. He really took on Farman in the grand style. Yeah, the length is not going to work for a bowler. If you need to pick up wickets or curtail the flow of runs, you need to either pitch it fuller into the block hole or attempt a bouncer. Because if you're going to bowl length, you're going to travel to journey. And it's good that the drum beater is still out there. Because earlier we thought he's only out there for Maleer Malangs in their games. Yes, they enjoyed a lot when they won it. They were enjoying when they were on the driver's seat before the official end of the match. They knew they were in front. Farman is getting the dose. Hamidullah at his very best. 34 of 10 deliveries. He was unbeaten in the first innings as well, Qari Hamidullah. He goes for it. Pulled away. More runs here. Couple of sixes followed by a boundary. Yeah, not good bowling this from Farman. He changed his angle, came over the wicket, but once again bowling it too short and too wide down the leg side. Qari Hamidullah once again helping the ball on its way. It's a clear thing, the bowlers do know that they haven't taken a fielder at deep fine leg. Still they are dropping it short, and we have seen Farman is not bowling at that pace. It's very easy for the batter to just wait for the ball to come closer and then to just hit it in any direction they want. As just mentioned a few minutes ago about the fitness and the tiredness of the bowler, and maybe it's a tired effort from him. Lost his focus, is dropping the ball short, not generating a lot of pace. Normally he bowls better, but in this over he is in serious trouble. 16 of the over so far here. Top edge could be out or dropped, and it goes for 4 more. He's unstoppable here, Qari Hamidullah, getting boundaries off the edges as well. Yeah, fortune favouring the brave, once again showing his aggression there, Qari Hamidullah, to a shorter pitch delivery. Farman is just not learning. Although that should have been taken by the fielder at short fine, but that just fizzled away towards the boundary ropes. So 2 maximums and now 2 boundaries, 20 of this over already. And just don't look at the number of runs they have scored in this inning, just look at the lead they have got. 82 runs with still 2 overs to go. So Johor Jawans will have to bat out of their skins in the next innings if they want to get a victory tonight, Farooq. Absolutely, this over could make the real difference here. 20 of it in Hamidullah is into the 40s now. He's got his form back. He has hammered Farman in different corners of the ground. A smash hard, straight down the ground. It goes for 4 more. What a batting performance here. Well, I was really surprised to see that fielder at long gone that wide. Almost standing at cow corner position. I think Qari Hamidullah spotted that. That's why he shuffled across the crease and just belted it straight down the ground. Well, Farman, previously he was dropping it short. This time bowled it fuller, but once again he committed an error. Gave enough room to the batter so that he could free his arms and get another boundary to his name. Doing a smart thing, Qari Hamidullah. He's shuffling across, exposing his leg stump and creating some sort of confusion in the minds of the bowler. And that is why he lost his line. And it turned out to be a ball right in the zone for Hamidullah, and he smashed it. What an over it is turning out to be. And once again, he took him on with absolute power. Magnificent batting. This is carnage from Qari Hamidullah. Not learning at all, Farman. 30 runs coming in that over from the left arm seamer. It's short, asking to be hit, swiveling across the off stump. Clearing the field with ease, Qari Hamidullah. 3 sixes, 3 boundaries in the over. And not only that, he also went past his half century. It's his first of the tournament, and surely there are more to come. 72 for 1 after 4.
50 up as well, and what a way to bring up his half century. He got a 6 in the last ball of the last over. He was unstoppable. What an outstanding half 100. Wajid Miu will be starting the 5th over of the innings. He looks very happy now. Sohail Nasir, captain of Liari Legends. They've got, just get a feeling they've got enough runs on the board already with 2 overs still to go. They will be chasing a big target tonight, Johar Jawan's, that is for sure. The batting has not clicked for the men in orange so far in this tournament. Wajid Miu will be coming around the wicket first up. Starts off with a slower one, worked away on the leg side. There is a fielder at deep square, will get just one. Well, he has relied on those slower deliveries more often, Wajid Miu, in this spell. Just don't get the feeling he's got enough pace as well. He's looking to deceive the batter with the slowness of the ball. But both these batters are now well set, especially Qari Hamidullah. I'm pretty sure he's going to be waiting for the ball to come closer to him before he could launch once again. Yes, he bowls back of a hand ball, Wajid, but it's important the release should be accurate. If anything outside the off stump, if it doesn't release properly, he will get a dose for sure here. And Qari Hamidullah kind of form is in. He will be ready to dispatch him out of the park here. So, over the wicket again. Outside edge, gone, yes, gone. Hamidullah knows it, he nicked it, and it's a huge wicket. Wicketkeeper made no mistake, and Wajid has got the breakthrough here. Yeah, good delivery. 2 wide outside the off, some fuller in length. Qari Hamidullah once again shuffling across, trying to hit that on the leg side. Got a thickish edge. It was a big deflection, and very nicely taken by the wicket-keeper. So enterprising innings comes to an end from Qari Hamidullah. 52 off 15 tonight. It's 73 for 2. Suleiman is the next man in. He has come out of the centre after the fall of Qari Hamidullah. Sparkling innings from him. And now the platform is set for Daud Suleiman to keep getting runs for his side. Well, it happens sometimes. The bowler you do not expect to pick up wickets or to bowl cleverly end up picking up more wickets. Wajid Miu has done exactly that in this innings especially. A guy who doesn't have that much pace, relies on slower deliveries. Drilled down the ground by Daud. He's going to get off the mark with a single towards long off. That is why he has been very deceptive as well, Wajid. As a batter, you're not expecting the ball to come at that pace. And Wajid has been clever enough to bowl it wide outside the off. That's why he has been the pick of the bowlers so far, picking up 2 wickets. Yes, absolutely. He was mixing his deliveries very well in the first innings as well. And it was quite difficult for the batsmen. So they have to wait a little bit. Anything on the slot will excite the batsman for sure. So far, so good. 2 and a wicket here. And still hasn't conceded even 10 and has delivered 9 deliveries. That is pretty interesting. Down the leg side, it has to be a wide. Yeah, he was trying for another slower one. Not well directed, way down the leg side. The owner of the the Bunks, Mr. Danish Khan, also enjoying this game between Liari Legends and Johar Jawans. Well, they were out there initially earlier in the evening to celebrate the birthday. The chairman of UBL, KTPL Season 3. Changing his angle, coming around the wicket. Just not getting under the pitch of the ball, will get just a single. That's what happens. Sometimes you consider a bowler not that tough and you expect that you can hit every ball out of the park. It almost happened in the opposite direction. Ashraf was trying to heave it and he was livid with himself and he couldn't get the right connection. And also no wit offered by Wajid. That's the main thing. Targeting the stumps beautifully, has been disciplined.
Waited. Straight to the fielder. Could be run out here, and throw is not good enough in the end. Single, and they should come back for two as a result of overthrow. Sloppy work here from Johor Jawan. Yeah, there was an opportunity of getting a batter out on both ends. Looking to force the ball away on the offside. It went straight to the fielder at extra cover. I think would have been better if he had thrown at the wicket keeper's end. There you see, fumbled up a bit, then just throwing it towards the bowlers. Couldn't gather the ball, and as a result, they came back for the second one. Why bowler wasn't right at behind the stumps? So not the best of techniques from him. He should have gone straight away behind the stumps to collect the ball. Waited for it and slammed away over the onside. What a big six there is. Played with real power and authority. Yeah, he was looking for that delivery to come in his zone. He was looking for that shot as well. This time he just waited for it and belted it over square leg. Perfect way to end the over with. Hit the roof as well. So 5 overs done, it's 85, but technically they are now leading by 105. Five for 2 on the board, and what a shot that was. The last ball, the last over. He absolutely hammered it away and played with disdain. He picked the slow one, and Nashairi, who would bowl the last over of the innings. Yeah, it was turning out to be a very good over from Wajid Miu until that last ball, which was picked by the right-hander. Now they have got enough runs to play with in the second innings, Liari Legends, leading by 105 with still an over remaining. Ashraf Pathan, the captain, is on strike. He's having a pretty silent tournament as well, Ashraf Pathan. Nothing silent about that though. Hard, flat, long and maximum over long gone. What a good strike that is. What a strike that is. A juicy half volley in the zone outside the off stump, and he dragged it from outside the off stump and smashed it towards long on. He cleared the boundary by a long way. Goodness me. A colossal from Ashraf Pathan and a perfect start of the final over. Nelson, the lead for Liari Legends. They are on the driver's seat for sure. Missed it. And a quick run taken. Oh, gone this time. Yes, he knows it. He has walked. And umpire has raised his finger. He was running quite casually, but the bowler did well. Wicket falls. Yes, he was on the back foot and was looking to play the ball on the leg side, and he was very deep inside the crease as well. That's why might have taken a fraction of a second more in looking to complete that single. And on the other hand, he wasn't even expecting the throw to come at his end. There you see, he was a little late to get off the blocks and running very casually, ending up losing his wicket, and the on-field umpire Aziz Rahman didn't even bother to refer it upstairs. He walks back after scoring 9 of just 5. It's a 91 for 3. Zohair Nasir is the next man in, who will be at the non-striker's end. Daud has got the strike back, the good striker. Outside the off stump, big full toss, hammered away. And one bounce into the boundary for 4. Bad delivery by Sherry. Now full toss outside the off stump, asking to be hit and playing the ball on its merit.
going to check whether the ball landed outside the boundary ropes. In fact, it has been signaled as a boundary. So another boundary to Daud Suleiman. Nine of 3 for Daud. He's a good striker, and he got an absolute gift outside the off stump from Sherry. Goes onside towards mid wicket and is gone for 6. It's a flat one. That is dismissive from Daud. What a strike that is. Sheer power from Daud Suleiman. Good length delivery. He just belted it so flat and hard. The fielder, as soon as it came from the bat, could just watch it sail past him for a maximum. 100 also comes up for Liari Legends. Now they lead by 121. Hardly anybody picked it up. It was struck immensely hard, and it got to the boundary in a flash here. Sher is in trouble here. Daud on fire. Smashed down the ground. It won't reach the boundary on this occasion. And the fielder at long off was pretty straight. It went straight to him. It's the first time the chairman of KTPL Season 3, Mr. Zohair Nasir, have come out to bat for Liari Legends, and what an occasion this is as well. Facing the last ball of the innings with his side in a very healthy position, leading by 122. Hitting the pads. Well, they're going to collect a run on the leg by. A perfect way to end the innings just for Liari Legends. They scored 103 in their allotted 6 overs for the loss of 3 wickets. They lead by 123 as well. It's going to be a daunting task for Johor Jawans, and they will come out to bat in the run chase. What a performance with the bat by Liari Legends. 123 runs they had, and 103 they posted in this innings. A huge performance by Liari Legends, and Johor Jawans. They're already finding ways to pick up the first win of the competition, and they have to climb the Mount Everest here to get off the mark on the points table. Yeah, it was a very important game for both these sides because they haven't won a game so far in this tournament. Johor Jawans playing their 4th, Liari Legends playing their 3rd. They were eager to get those 2 points. And Liari Legends by far has been the better side of the two. Johor Jawans has been slightly on the back foot, both with the bat as well as with the ball. And when you concede a lead of 20 runs in the first innings, it's always is very difficult to come back from there on. We have seen sides conceding a lead and then also ending up winning the games, something that Maleer Malangs did against DHA the Bunks, but just get the feeling Johor Jawans will have to bat out of their skin if they want to chase this target down. Yes, first 2 overs are so important. We have seen in their previous matches of Johor Jawans, they consume quite a few dot balls. They struggle to pick up boundaries. That's the highlights of this innings. Pick up short, the first one. The first ball put away for a maximum. And then turned away to the onside for 4 more. And Hamidullah smashed it. Pulled away with power for 6. What a day he's having. Down on his knees. He played with real authority here. Turned away, smashed for 4 runs. And then smashed by Hamidullah. He was middling quite beautifully here. And that's a wicket. Soft dismissal here. Yeah, the top order wasn't clicking in the previous 2 matches. Tonight it was Qari Hamidullah, who was not only scoring runs in the first innings but also scored a very crucial half century in the second. He was given a chance there, but he took full use of that, getting boundaries and maximums to all corners of the ground, and he was being presented by those length deliveries as well. And by the time he was dismissed with a catch down to the wicket-keeper, the damage had already been done. Then we saw Daud Suleiman and the righty doing some damage towards the end of the innings, and they made sure that they end up with a very good score. They lost few wickets towards the end of the innings, but by that time it was a little too late for Johor Jawans. Especially in this last over where he take 2 sixes down the leg side. Very good effort once again from Liari Legends. Nizar Ali and Hamidullah once again opening the batting. Hamidullah getting his first half century of the tournament. 20 runs to Daud towards the end of the innings. Zohair Nasir just faced 1 delivery. That was the last ball of the innings. If you talk about the bowling effort, once again 4 bowlers were used. 2 wickets were picked up by Wajid Miu, who by far was the standout. Apart from that, every other bowler travelled to journey. So the target for Liari, in fact for Johor Jawans, when they will come out to bat now in the
last innings is going to be 124 in their allotted 6 overs. So final innings is about to begin of the day, the second match, and Johar Jawans has to bat out of their skin to chase down 122 against Liari Legends. They had talented players, but they haven't got going. Few brilliance we have seen at individual level, but as a team they have yet to fire, and their response is about to begin. In the middle and in the comm box, I have been joined by Palak Sher. Welcome. Thank you. Johar Jawans, their openers are making their way to the center. 124 runs to get in 6 overs. Always a gigantic ask, and especially in the 4th innings, it's not going to be that easy. But both of the openers look to be in good touch, especially Basit lefty. Shah Raza has been promoted up the order. It's no Syed Nasir. That's a good decision because they have to get to 122 is never easy, and Shah Raza has been in good form. He played beautifully in the previous game. He's a good striker. Right and left hand combination, the new combination here. Will it work for Johar Jawans? The fans of Johar Jawans are still searching for the first win here, and it's all set. Basit lefty will take the strike here, whereas the field is pretty much set. Very traditional field set. There is a man Shah Raza at non-striker's end. Didn't do well in the first innings, did Shah Raza, but he has his opportunity now. Sohail lefty to start the proceedings. Here we go. And there you go! A typical Basit slap, and it landed on the skirtings. It's gone all the way. 6 of the very first delivery. What a start! Exactly what his fans wanted, exactly what his side wanted. Big 6, first ball, perfect start. The left armer operating round the wicket, dropped the ball short, just short, and picked up the length beautifully. And hammered away by Basit lefty and smashed the skirtings. I tell you what, that is his area of strength. Anything in that radar, he's going to pounce on it. This time, I think he's got an nick. Yes, he has. It's a response by the bowler. Sohail comes back with the fire. Sohail lefty has picked up Basit lefty's second ball of the over after conceding a maximum. He's got a wicket here. Went for the big heave. He cleared his front leg off the inside edge, and everybody was certain there was a certain noise, and the batsman had already walked. So massive dejection here for Basit and his side. 6 for 1 on the board, and they're chasing 122. He's just hit a 6, and the next ball he was a goner. Made just 6 runs. 6 for 1. So then Johar Jawans are in deep trouble. Very early in the piece, in-form Basit lefty has been picked up by the opposition Liari Legends, and that brings on their captain to the wicket. Now it's captain's turn to do a miraculous sort of performance for his side. Syed Nasir. He demoted himself for this innings, and now he's come out to the centre at the very 3rd ball of the first over. He's been opening the innings, and he knows how to go from ball 1. He has launched it over long on. Well, this game is fluctuating in all directions. 6 wicket and a 6 here, right in the zone for Syed Nasir. What a strike that is, played with power and straight through the line. This is such an interesting start of the final innings of the day. Launched it beautifully. Good clean strike that is. We have seen quite a few tonight. This was as good as many. He goes again! That's another one! That's even bigger! He means business tonight in
This is the captain's night. Syed Nasir, back-to-back blows down the ground, once again in the slot, and once again, what a strike there is. Absolutely hammered, much higher, much longer. This is sheer brilliance from the skipper of Johor Javans. 3 sixes in the over. Oh, this time he's changed his length. Done well, bowler. No connection of the bat by Nasir as he would have liked. A dot delivery. Change of length, change of result, but line wasn't good. He got away with that. He had the opportunity to just work it away to the onside. He was clearly late. It was off the leg and it didn't go for run. But still pressure on the bowler. Will he finish on a strong note? It's gonna be Nasir, the captain, who is gonna finish with a big heave. Another 6. Third of him, 4th in the over. What entertainment already. It's 24 for 1 after the first over. It's do or die here for Johor Javans, and captain Syed Nasir is leading from the front. This time a clear heave, a heave with power, and smashed it over mid-wicket. Goodness me. Ball is travelling all over the park beyond the boundary. 4 sixes to begin the innings. 24 for 1, and they need exactly 100 of 30 deliveries. It is gettable. It is gettable until Shah and Nasir make sure that they stay at the crease for at least another 2 or 3 overs and continue in the merry way they started. They've got a job to do. 124 runs they needed when they walked out to bat. They lost the left-hander Basit, but Nasir Shah, the captain, made sure that he's there and he's going to keep the scoreboard ticking over with his lusty blows. Shah Raza will face for the first time, and Rana Mohsin will be up against him. He's also a good striker. He saw power hitting from his partner. It's 12 a.m. फाइटर्स मलंग लेजेंड खबरू और जवान डरते हैं ना किसी से. Down there at the boundary, a safe shot perfectly, just flicked it. Lovely skills from Shah Raza. Nobody was out there and the boundary rider from mid-wicket. He just was jogging to collect the ball. Lovely shot to begin with. Not very often we see the kind of skills in the table cricket. They are very skillful, these batters. There is no question about that. Very agricultural and very effective. Down the leg side, hit me, says the ball, and hit me does he do the batter. Dreadful line from Rana, and what a good shot, what a lovely pickup shot. Wrist work comes into play for the second time in the over. Round the wicket, no real angle, and just a flick. Used the pace beautifully. He was offered some pace, so 4 followed by a 6 here. So contest is on, and Shah Raza is on the driver's seat at the moment. 10 runs of the first 2 balls here. They are on a roll, Johor Javans. Change is definitely on. Another flick, another maxi. He's feeding him and he's getting hit to the cleaners. This time 1 bounce 4, but chase is definitely on, Farooq. Lovely shot again, same line, same length. And thank you very much from Shah Raza. Lovely flick, just couldn't get enough power to get the distance. 1 bounce into the fence for 4.
Pressure on Rana. Will they change the field here or will he change his length? And that is so important. At the moment, Shah Raza is having fun out there. 14 of just 3 balls. Match on. Maybe he changed the angle, did the bowler on that occasion. That's why Shah was not able to get the timing of his liking to that particular stroke. He stuttered a bit on the start, did Rana, and that is going to work for him because that's miles in the air and the fielder has come around and took a very good catch. So he gets the wicket, has the last laugh, does Rana. Very good catch indeed. It was never easy. 2 men were converging. It went miles in the air and the fielder did really well to get underneath the ball. The communication was quite clear. Shah Raza just mistimed it. Didn't get enough length. He knew straight away. He was relying on the luck. A fine catch. Shah Raza goes. It's a big wicket. And have a look at that hand on head. One of their fans. He's made 14. Entertaining stuff, but it's over now. 38 for 2. Falak is the next man in, who batted well in the first innings. He's certainly capable. But he has to keep the strike rate up to stay in the game. Yeah, he's very capable to continue the same run rate for them. For Johor Jawans is Falak Bashir. Will be facing Rana. Down the leg side, missing his mark by some distance. He stutters a bit with the start of his run-up, does Rana. I wonder if that is deliberate. What do you make of it, Farouk? I missed the radar and quite lucky that wasn't there was a big wide. Otherwise, Falak was also trying to flick it away, as we saw previous 3 shots from Shah Raza before he got out. It's not a right idea to bowl on leg stump half volley. There is a change, the long on fielder, very deep. There is no protection at deep fine leg here. There is a mid-off, backward point cover, and traditional slip and fine leg. Well, he goes down the ground, didn't connect out of the middle of the bat. Oh, shot at the stumps, hits the bullseye, but Falak was home, I reckon. Good work, really good work by the fielder, good awareness. But Falak was good enough too. He was very quick. No real excitement in the middle. Still a big over here for Johor Jawans' perspective, but they want a strong finish of the over. That is how. No chance for an out. Is a good technique. The youngsters are watching. Always ground your bat like this. Yeah, ground your bat and stretch your arms. Try to make use of your reach as good as possible. Nasser is going to be on strike. Oh, big heave attempted. Had that been connected, that would have been somewhere out of the ground. But it finishes the over with the dot, does Rana. 41 for 2 after 2. And this is getting popular. This KTB Season 3 is being watched more than 84 countries on different platforms and channels. And this format deserves a lot of appreciation. You can see Sub-Sahara, Below TV, NBC, and different countries of different continents. They are catching live action from a DHS Sports Club Moin Khan Academy. It's always exciting to be part of tape ball cricket. And that's the sponsor, Pakistan Business Association, Quality Flavors. Number of sponsors are right behind this KTPL Season 3 here. Abdul Salam was impressive in the first innings. He's a wicket taker and now will proceed further. Over number 3 is about to be delivered now. I'll be up against Falak Bashir, who is yet to expand in this innings, but he's in very good form. We have witnessed in the first innings.
will be definitely a little bit of contest between the ball and bat in this over. Don't want to get that required rate up, both of these batters. They need to make sure that they keep on getting those boundaries to keep up with the required run rate. Nicely bowled, good delivery, cramping him for space. Gets inside off of the bat, and they will look for two here, and they're going to get them because both of the fielders on the boundary were on the edge of the boundary. They were very deep. That's why they had enough time to come back for the second run. The bowler stopped, gave the indication to the fielder, don't throw it, two is enough. And it was a comfortable two, and it is not a bad start for the bowler because ones and twos won't hurt them. And Falak is the nervous man. It's for looking at the field where he can find the gap, where he can find the sixes as well. Oh, nicely bowled and gets away with it as well. Just within that tram line. Falak's not happy, but it was a good delivery. He took his time with the start of his run-up, and it worked for him as well. Well, I think it's a fair call. It was just within the tram line. A batsman was expecting a wide signal from the umpire, and he knows every dot ball is a gold dust, and every dot ball will keep the asking rate further up. Pressure mounting, good start. The action from Salam, it reminds me of Haris Rauf. But only with the start. When he delivers the ball, it gives a little bit of Zaman Khan in it with that slinging arm. Quite right. But the most important thing is how many runs he's conceding, and he has been brilliant. Finding the block hole, and no real opportunity for Falak to work with. No wit was offered, no over pitch, a pure Yorker. Takes all the time in the world on his run-up before he gets himself going. There he goes. And here goes Nasir for a big six over wide of mid-on. That's a good-looking shot, isn't it? Outstanding shot. Not an easy shot to execute. He missed the length by an inch. And what a shot that is. Flick of the wrist and pure power from Syed Nasir. What a form he's having. This is tremendous batting. And he has to stay till the end. If Johar Javans wants to win it, he's a man in prime form. Tell you what, that wasn't a full-blooded flake. That was merely a short-arm jab. And how well did he manage to get that all the way? Some power behind that stroke, definitely. His strike rate is 400. What a start from him. And he is to continue in this manner. Normally he doesn't concede many boundaries. Salam has been spot on. But still he can finish on a good note here. Syed Nasir, 24 of 6 here. Don't stop here. Come on, Nasir. Don't stop here. Oh, nicely bowled. Good delivery. Outside the off stump. Had to reach for that, and it was in the Yorker sort of region as well. Good delivery. Wide Yorker outside the off stump. He could have worked towards the backward part of third, but he tried to smash it. In the end, it turned out to be a single. So on that occasion, Salam was spot on with the landing of the ball, and that is more important. 73 runs away they are, and still match in pretty much even, Stephen. Yeah, it's pretty important now for a bowling perspective that Salam finishes it well here. He's bowled a good over, have only conceded a 6, 1 boundary in this over. That was off the bat of Nasir just a couple of balls before. Let's see how he finishes. Spoiling the show with that delivery on the slot of Falak Bashir, who sends him over long on for another 6. Ends the over in a high note, does Falak. What a great shot that is.
in the slot. He missed the length this time by quite a few margin. What a blow that is. Good swing straight down the ground. And these two players are keeping the hopes alive of Johor Jawan fans. This is the important partnership. 57 for 2 after 3 overs. They need 67 to win this contest, and time for the change in voice to take you till the end. Zishan Khalid and Rana Ashfaq are picking up the commentary. Thank you very much, Farooq Riaz and Falak Sher. It looks like that it is going to go right down to the wire. It's going to be a cliffhanger, it looks like, by the things happened so far. 57 for 2 in 3 overs. Nasir is looking good for his 25, and Falak Bashir is doing a good job as well. He has got 10 of 5 deliveries. Rana Mohsin to continue, and I've got young but energetic Zishan Khalid. Good evening, sir. Thank you so much, Rana Ashfaq. It's 57 for 2, and so far they are right on track, Johor Jawans. And tonight it's the captain whose bat is talking. He has struck 4 maximums already, Nasir, something that they have been missing in the previous 3 games, Johor Jawans, which they lost. But now it's the captain who is delivering from the front. And the job is not done yet. They still need 67. So they will have to continue with the momentum that they have been batting so far. Zohair Nasir is very vocal in the fields, applauding his bowler almost all the time. And batsman has bashed that one over mid-wicket. Did he try? But he ended up in the hands of the fielder of deep mid-wicket boundary. I thought for a while that it would go all the way, but it didn't. And there you see the happy faces. They are congratulating each other. Yeah, previously he was making use of that pace. This time might have been slightly slower through the air. And almost he was standing at the edge of the boundary. And a very well judged catch taken. Syed Nasir, the captain, walking back after scoring 25. It's 57 for 3. I think Syed Nasir didn't like our admiration as we were praising him, and he gifted his wicket away. Yeah, it's the first time he was amongst the runs for his side tonight. Should have carried on. Umar, the new batter, in. That's why we have been mentioning it before as well, that when you get a start, you need to convert that into a big score. They lost that wicket early. Syed Nasir tonight, they didn't come in to open the batting. It was Shah Raza who was sent instead of him, because he's having a decent time with the bat. But even Shah Raza lost his wicket very early. Syed Nasir came in, scored 4 maximum, should have carried on. I mean, 67 is not that tough, especially when your bat is doing the talking. But he needed to stay out there till the end. Spot on, Zishan. And is still gettable. 67 in 17 balls with 7 wickets intact. One can put one's money on the batting side as well. And Falak Bashir is very much capable to play big strokes. So is Umar. And they are spreading out or scattering out their field. And there is significant changes are being made in the field. Yeah, it's the left-hander in, Umar, obviously. And he lost his wicket of the very first ball in the first innings when he was clearing the field at deep mid-wicket. And as soon as he walked in, the bowler straight away pointed out to that field at deep mid-wicket. Hang on, mate. You might be in action with the next ball. Rana Mohsin runs in. And straight away, it has been hit in the air. Fielder is there, but he could only be a spectator, because this time it has gone all the way for 6. Equation has come down to 61 of 16. Game still on. Yeah, we were expecting not only in the commentary box, but even the fielding side was expecting Umar to go big on the leg side. This time he got the connection. There's so much power behind it. He was being congratulated by Falak Bashir as well. That shot did deserve the admiration. Umar is the one who started his innings in a grand style. And he smashed that one. Oh, it's going, and gone. Many rows back. This is tremendous batting. My goodness, how well has he timed that?
It was a slower delivery into the arc. He went full with that swing. There you see, full swing of the bat. That traveled many a mile. He looked relentless, didn't he? Absolutely gave it a go. Oh, he did throw everything at that one, but didn't make any contact. 3 wides will be added up in the total. Lot of runs coming. Yeah, the idea was right to bowl it wider outside the off stump to someone like Umar, who has been belting everything on the leg side, but it went a little too more wide, and not only they're going to give 3 extra runs to the batting side, but they will have to re-bowl that. Now imagine if they get hit for a 6 of the next ball. That means you have given away 9 runs on one delivery. I can't disagree with you. You're absolutely right. 52 to be made of 15 deliveries. We've got a good match in our hands. It looks like it's going to be a very good finish at the end. Here comes Rana again. Falak Bashir has played that away, but there is a protection in the countrysides. Yeah, he was disappointed that it didn't come out from the middle of his bat. One question I would like to ask, sir, from you. Any result is possible. I mean, Johar Jawan can also chase it down. Liari Legends can defend this total as well. What if the score is tied at the end of the game? Will there be a super over? It has to be a super over. Or maybe according to the playing conditions, they will share the points. But I'm not confirmed what the playing conditions are. Because this is not the knockout game. In knockout game, it has to be a super over at any cost. Oh, wicketkeeper has taken it. Wicketkeeper has taken it. Omar again going for the big one, edging it to the wicketkeeper, and another wicket falls. Yeah, he sat down on one knee as if he has already made up his mind that he's going to swing it hard down the leg side, but the bowler did the right thing, keeping it wider outside the off stump, and the ball took a bit of time before it reached to the wicketkeeper, but it was safely pouched in the end. So Umar came in 12 of 3 for the left-hander tonight. It's 73 for 4. These are our sponsors. Jio Super is producing this event. Pupil Pakistan, SMF. This is the official scoreboard, 73 for 4. It is showing. Moiz is the newcomer for Johar Jawans. He had a bit of words with Falak Bashir, who is the senior partner now. Yeah, they are losing wickets at the wrong time, Johar Jawans. They have lost 2 in this particular over of Rana Mohsin, who has collectively now picked up 3 wickets. 3 for 33 isn't a bad effort at all. When you are defending something like 124, it's on. 17 or 18 runs, not a problem in an over, particularly when you are getting wickets as well. He finished this one on a very high note, 73 for 4, 4 overs gone. Cricket is an interesting game, but it is all about laws, all about playing conditions, all about rules. But there are 42 rules. 43rd one never been made. And 42nd one is the ball lost. I think it has been wiped out from the rules nowadays. Currently, I don't think does it exist or not. But these are the playing conditions who's being chopped and changed over the many years. In different tournaments, you see different types of playing conditions. And I am referring this because I am still not confirmed whether they will have super over or not if match is tied. The round robin one. Yeah, rightly pointed out, as you may see another change being made in the field. Now there is a fielder at deep mid-wicket and long on to the right-hander. Yeah, talking about the conditions being changed, there are multiple leagues going on all across the world where there has been a new rule introduced of bringing in an impact player where you can replace a player
from the first innings, and you can bring back another one in the second. Very good ball. But umpire delayed his decision, not quite sure why. What was going through the mind of Azizur Rahman? Probably he was pondering hard somewhere, but finally he waked up and then declared it a white. Yeah, particularly in one-day cricket, I still can recall they came up with the idea of super sub in 2004 or 5. There used to be a super sub, but he had to play one part. Either he had to bat or he had to bowl. But it didn't work. And now in case of concussion, you can have other play. This one is in the air. Fielder is under. He jumped in the air. Has he brought it in? Yes. He has brought off an absolute stunner. This has been a blinder of a catch. I'll tell you what, this will definitely go down as one of the catches of the tournament. It was short, he slapped it hard there, Falak Shabir. He has done that in the past as well, Falak. He usually looks to play it straight down the ground, but look at the anticipation there from the fielder at long off. Jumped in the air, he was very close to the ropes, but in the end it was safely pouched. Umpires might just have a word. In fact, Falak Bashir has already decided to walk. It's 75 for 5. Now they're looking all at sea. 49 runs still gettable in 11 deliveries, but with 5 wickets down, one has to give a bit more chances to the fielding side as far as the result of this match is concerned. And same goes for the power plays. First we came up with the idea of 15 overs of power play in ODI, then 10, 11 to 40, another one 41 to 50. Then they kept on changing this. Ijaz is the newcomer. I think it has bored the ODI game a little bit. They should have stayed with the traditional power play from over number 1 to 15. In one power play you can have 4 to 5 fields, another in 5, and in 2. I think it's a lot going on with the one-day cricket to me. Because the members in MCC taking big salaries, they got to do something new every time around. Try to hit that on the offside, will get just a single. In fact, might come back for the second. Inside decided not to. Yes, there have been so much changes and alterations being done that people from Gen Z have almost forgotten of what traditional ODI cricket used to be. I mean, I still remember back in 1996 or even in early 2000, the first 15 overs were used to be of the batting power play, and the remaining 35 overs, it was supposed to be 5 fielders outside the inner ring. And only one ball was being used at that time. That ball used to get older, spinners used to get turned, fast bowlers used to reverse swing the ball. All of that has been completely wiped out. That was more competitive ODI cricket in those days to me. These rules in certain playing condition has done nothing good to the one-day cricket to me. Yes, exactly. That is why back in that time we saw Wasim Akram and Murli Dharan picking up more than 500 wickets in ODI cricket. You don't expect bowlers to pick up that many wickets in these days because it has totally become a batter's dominating game. Now we see just 4 fielders outside the inning from over number 10 till over number 40. As a bowler, the margin of error is so minimum. Like the pitches are being made in the favor of the batter. You have got bigger bats, smaller boundaries. No one wants to be a bowler in the modern day cricket. Absolutely right. I think Muralidharan still is the leading wicket taker in one-day cricket. I think 534 wickets, which he has taken. Wide ball. And he also tops the list in test wickets as well. I think he has got 800 test wickets, if my memory serves me right. Wasim took 502, I reckon, in one-day internationals. Yeah, he picked up 502 wickets, the only fast bowler to have picked up 500 wickets in ODI cricket, and that is why we even start respecting Wasim Akram more, because he didn't play all of his matches in countries like Australia or New Zealand. He played more of the matches in Pakistan as well as in Sharjah, where the conditions are not that effective for fast bowlers. Still, he managed to pick up tons of wickets there. And so many catches put down as well on his bowling. Otherwise, he would have taken 700 wickets. And there were no reviews back then as well. Yeah, add 50 more.
This is going and gone all the way. Smoked that one. That was the beauty of a shot. Yeah, it was a full toss. It had to be put away. They need to deal in maximums now, George Javans, because even the boundaries are not going to do the job for them. Full toss outside the off stump, had a full swing at that, and it went way over the boundary ropes, so were long gone. But I would like to tell one interesting stat about Wasim Akram, not only to you but also to our viewers. Wasim Akram had more run-outs than Inzamam ul Haq. Would you believe that? In ODI cricket, he had more run-outs than the Inzamam ul Haq. And Inzamam ul Haq was known to be a big run-outer. It's going to be a wide upside the off stump. And I still remember Wasim Akram being involved in many of the run-outs where Inzamam ul Haq was at the other end. Particularly in 1999 against Australia. And Wasim asked simple, Inzi, what are you doing? Inzi asked, Wasim bhai, tusi ithe ki kar rahe ho? Wasim bhai, what are you doing here? Yeah, that was a memorable victory for Pakistan back in 99 against Australia. I still can recall Akram taking 4 wickets and 2 in the last over. McGrath and Damien Martin. Moin Khan smacking few sixes to Glenn McGrath. Inzi scored 81 as well, if my memory serves me all right. Yeah, Inzi was a top scorer for Pakistan in that innings, and Wasim Akram picked up 4 wickets. And he got a wicket of Adam Gilchrist earlier on, and he took that wicket of Michael Bevan, who was putting up a very good partnership alongside Steve Waugh. Absolutely right. And Shoaib Akhtar was the one who bowled and knocked over Steve Waugh. And Bevan was a tremendous player. He was absolutely a gun player. Whenever Australia needed him, he performed. And won Australia too many matches, particularly when it comes to chasing. He was the one. And then Michael Hussey took over. Yeah, back in 90s and early 2000, Michael Bevan was the best finisher of all time in ODI cricket. Outside that off stump, he had a real swat at that one. It is going down towards the third man boundary, and it should be 4 byes. Off the bat, I think umpire is saying yes. Probably it did get the bat. It was a full toss outside the off stump. It was miles away from the bat, and the wicketkeeper just couldn't get down to the ball. Ball eventually going between his legs and touching the boundary ropes. So 4 runs to end the over with, still 33 required. It's 91 for 5 after 5. We were talking about Pakistan's performance against Australia back in 99. I still remember Pakistan's performance in 2003 World Cup, which was played in South Africa, and that was the time when I started watching cricket. I mean, Pakistan had a gun squad. They had Saeed Anwar opening the batting. They had Wasim Akram, Waqar and Waqar Yunus. They had Saklen, Mushtaq, Shahid Afridi. Almost everything going in our favour, but the players just couldn't deliver. Absolutely right. In 2003, Wasim Akram was on fire again against Australia, and Australia was struggling at one stage, 86 for 4. And then Andrew Simons pulverized the Pakistan bowling attack. Yeah, he did. I still remember Waqar Yunus. He'll come back to that point. It's Nizar Ali now bowling the last over of the innings. Waqar Yunus bowled 2 beamers in that game, and he was taken off the attack. Yes, he got a wicket of Jimmy Meyer as well. That was the 4th wicket at 86. This one is driven away down towards the sweeper covers boundary for 4 runs. Yeah, not a good way to start the over. A full toss outside the off stump. Mo is just carving it over extra cover. They're still in it. They still need 29 more runs to win. 5 sixes will do. Or a few runs of extras. Maybe a wide down the leg side, or no ball being hit for a 6. Yeah, it is possible. But very tough. It's going to be an uphill task. Shot, yaar, yes. It sailed over straightish long on for 6. It has come down to 23 or 4. Still on, still possible. Keep on hitting 6s. That was a quality stroke. Full extension of the arm, and it went sailing over the fielder at long off. That is another one on the leg side, over square leg into the stands. Game on here. Don't go anywhere, folks.
They still need 18, in fact 17, 9 of the next 3. Don't stray away from your LEDs or LCDs or your mobile screens, wherever you are watching us on. That was a sum shot. It has come down to 17 of 3 deliveries. And Moise is the one who's doing the damage, who's delivering the goods here. Here is Nizar. Oh mine. He bowled a dot ball. And that's all what he needed. Now, if he doesn't bowl wide or no, they still can win this match quite easily. Yeah, I was just about to say that the decision of giving the last over to someone like Nizar Ali, who hasn't bowled previously in this tournament, might just backfire for Liari Legends, but all he needed was 1 dot delivery. It's going to be another single off the offside, and that might prove to be the final nail in the coffin for Johor Jawans. Yes, 14 runs still possible on 1 ball. If bowler bowls a no ball and then gets hit for a 6-8, 6 on the free hit, will make it 14. And they will still ended up losing by 1 run. And he smashed one out of here. Good shot to finish the innings, but they are still going to lose this match by a margin of 10 runs. Yeah, it was short. He had to put it away. He did that, but once again, Johor Jawans are going to fall short by 10 runs. And that is where the first innings lead comes into play, which Liari Legends got of 20 runs. Much needed victory for Liari Legends. They get to win this game by 9 runs in the end. And Johor Jawans, well, they have a lot of thinking to do for the remaining matches to come. Once again, they got closer but just couldn't finish off. And that is especially because of the fact that they lost the cluster of wickets towards the middle phases of the innings. The captain came at number 3 and started batting really well, but unfortunately couldn't keep up the momentum. See, Suhail Nasir finally can afford to smile because of the first victory for his side. Yes, he is getting a lot of congratulations from his mates. They are the happy side. They proved to be a stronger one tonight. Though Johor Jawans batted well, particularly in the second innings. They took the fight to the opposition camp, but couldn't quite able to finish it off. Yeah, they will definitely take few positives out of tonight's game. The captain coming back in form. Farman did bowl well in patches. And the fact that they got closer to that daunting task of 224, they will definitely come out with a better plan in the next game. That's how they started the proceeding. Basit Lefty was the first batter to be dismissed. Shah Raza came out to open the batting. It was the captain, Nasir, who struck 4 maximums in his innings. That too early on in his innings. Shah Raza, although played few clever strokes down the leg side, and he was being feeded by those leg side deliveries, which he comfortably cleared the boundaries on. Once this time decided to hit a little too big and ended up losing his wicket with a very good catch taken by the fielder at long on. Nasir continued in his merry ways before he was dismissed as well. Just get the feeling it's 124 was just a little too much for the batting side. Umar came in, hit 2 sixes of the first 2 deliveries, but even then he was caught outside the off stump. That is where his weakness is, a little wide outside the off stump. That was a very good catch taken by the fielder at long off to get rid of Falak Bashir. That is the passage of play which went in against Johor Jawans, where they lost 3 or 4 wickets in quick succession. The last over they needed 29, and for a moment we thought it's gettable because of 2 maximums and a boundary that was hit, but 2 dot balls after that surely sealed the deal for Liari Legends. Let's take a look at the scorecard. 25 scored by Nasir, 18 by Moise, and Ijaz remained not out with 13. Yeah, almost everyone contributing, not just converting it into a big score, just like the way Qari Hamidullah did for Liari Legends. Suhail picking up a wicket, so did Salam. 3 wickets for ever impressive Rana Mohsen. So that is the match summary. Liari Legends batted first, scored 104. Johor Jawans could end up with just 84 in their allotted 6 overs, giving a healthy lead of 20 to Liari Legends, who once again went past 100, gave up the target of 124, and Johor Jawans in the end falling short by just 9 runs.
it's time for us to say goodbye to you from the commentary box. We will take a short break, but when we will come back, you will see the presentation ceremony. हम सब ने अपने बचपन से आज तक टेप बॉल जो है वो खेली है, अब भी खेलते हैं जब मौका मिलता है। और इस मुल्क के अंदर इतना टेप बॉल का टैलेंट है, और जो हमारे सीनियर्स और हमारे साथ के और हमारे जूनियर्स जितने भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लीग्स में भी काम करते रहे हैं और खेलते रहे हैं, वो सब किसी न किसी दौर में टेप बॉल से मुंसलिक रहे हैं। परहैप्स मेरा ख़्याल है उन सब में से ज़्यादातर लोगों ने टेप बॉल से ही शायद शुरू किया होगा। देखें, हर लेवल की एक सेगमेंटेशन होती है। अब अगर ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है तो इसमें से टीम में तो 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका PSL आ जाता है, फिर उसके बाद और हमारी लोकल लेवल की टीम्स आ जाती हैं। तो और उसके बाद जब ये आ जाएगा तो एक क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स बहुत फ्लरिश करेगा। दूसरा जो इसमें एक नेशन बिल्डिंग का या एक पैट्रियटिज़म है उसको फ्लरिशमेंट मिलेगी, उसको नरिशमेंट मिलेगी। प्लस ये कि आपकी यूथ जो है वो हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। तो इसके मल्टीपल वेरियस इसके बेनिफिट्स हैं टू द सोसाइटी, टू द मासेस एट लार्ज। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इसके बहुत सारे फ़वाइद दूर रस नताइज माशरे पे मुरतब होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे ज़ोहैर नरसी साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। बदर एक्सपो की ये अच्छी काविश है। ये एक अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे ज़ोहैर नरसी साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। बदर एक्सपो की ये अच्छी काविश है कि हमारे यहाँ कल्चर जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। स्पोर्ट कल्चर जो है वो इसको ये इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से उन्होंने पिछले कई सालों से जो है ना इस पर एफर्ट्स कर रहे हैं और अब जाके मैं समझता हूँ कि किसी एक अच्छे पोजीशन पे हम एक अच्छे लेवल पर हम बढ़ रहे हैं और हम सब लोग इन टीम का एक हिस्से के तौर पर इनके साथ है। वैसे कि मेरा ताल्लुक डिप्लोमेटिक फोरम और सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे ये है कि एक बच्चों के लिए जो है ना एक वो लर्निंग भी है और हमारा एक अच्छा माइंड जो है ना माइंड सेट भी इससे अच्छा होता है और एक ये तहज़ीब कल्चर और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ख़त्म होते जा रही हैं। और कल्चर तो अब तो ख़ास तौर पर सब ये डिजिटल हो गया। अब लोग गेम भी जो है डिजिटल कर रहे हैं। जब तक स्पोर्ट्स नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो है ना हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, हमारी नौजवान नस्ल इससे दिमाग भी खुलता है, स्पोर्ट्स एक्टिव होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी काविश है, तो हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाला। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सीज़न 1 का? एक्सपीरियंस नंबर 1 तो आपको पता है कि पिछले साल जिस तरह की KPT1 स्टार्ट हुई थी KPTL और उसके अंदर जो पोजीशन होल्डर थी, आपको पता है हम लास्ट के अंदर दो मैच जीते थे हम लोग लास्ट टाइम ना। बट ये सिचुएशन ये थी कि उसमें बारिश का सिनेरियो था, चीज़ें थी, फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम हमें कुछ समझना पड़ी चीज़ें काफ़ी हद तक। बट समझने के बाद आपको पता है रिवाइव होती हैं, हर चीज़ें होती हैं। सीज़न 2 के अंदर हम जब पहुँचे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिल रही हैं और बिल्कुल इस लाइक PSL वाला एक माहौल नज़र आ रहा है कि द ब्रांडिंग चीज़ें और सबसे बड़ी बात चीज़ें ये होती है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको मेंटेन करना वो ज़ोहैर की एक आदत है माशाल्लाह बदर एक्सपो की।
वो चीज़ों को लेके चलते हैं, मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें, और इसी वजह से माशाल्लाह वो नाम अल्लाह मियाँ ने वो ज़िंदा रखा हुआ है, और अल्लाह मियाँ उनको भरपूर तरक्की दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इंशाल्लाह वो आपको नज़र भी आएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। हमारी हमेशा कुछ कोशिश होती नए करने की, इस दफ़ा भी कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह, होपलेस आप लोगों को नज़र आए। लास्ट टाइम के हम लोगों ने तकरीबन यासिर के अलावा मतलब जो हमारे प्लेयर्स कुछ थे 6 मेरे ख्याल से हम लोगों ने रिटेन किए थे, और इस दफ़ा कुछ नए प्लेयर्स हम लोगों ने स्टार प्लेयर्स में उठाए, अच्छे बड़े नाम है। वो जल्द हम लोग एक वीडियो लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 8 तारीख को, तो उसके अंदर आपको इंशाल्लाह नज़र भी आएगा, और जियो स्पोर्ट्स पे आपको वो वीडियो ऑन एयर भी नज़र आएगा। मैसेज सिंपल ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसको ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, और उसके बाद फिर ये टेप बॉल देखें। ये टेप बॉल वो गली कूची की क्रिकेट थी जिसको ज़ुहैर ने बिल्कुल एक एज अ ब्रांड ला के खड़ा कर दिया KPTL के नाम से। हम उसकी एक फ्रेंचाइज ज़रूर है, लेकिन ये आप लोगों के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो लोगों को चाहिए, लोग आएँ, इसको ज्वाइन करें इसको, और उसको जितना आगे फैला सकते हैं उसको फैलाएँ जाके। कम से कम ये है कि ये चीज़ गली कूचे वाली ख़त्म हो के, मतलब ये हमें और लोगों को मौका मिले, जैसे हम मौका दे रहे हैं लोगों को, और लोगों को मौका मिले, और लोग आगे आके इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, इसको अवेल करना चाहिए। बेहतरीन एक चीज़ है, हमने अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश ये है इंशाल्लाह हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और आपको रिप्रेजेंट इंशाल्लाह प्रेजेंट होगी इंशाल्लाह। आप भी खेलते रहोगे क्या टेप बॉल? तो आपका दिल नहीं चाहता कभी आप भी खेलें इस ग्राउंड में उतर के? सर मतलब ये है कि ये क्रिकेट का बहुत शौक़ है, इसीलिए इसको लेके आए टीम को, चीज़ों को, और समझते हैं कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से हमने प्लान किए कि इंशाल्लाह खेलने का मौका गली कूचे के हद तक रहे मेरे ख्याल से तो बेहतर है, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा ग्राउंड के अंदर तो ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह। UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के 13 मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, वो तमाम 84 ममालिक के जहां पर हमारी ये UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग बराह रास्त जा रही है, और उसके साथ साथ जितने लोग भी यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। एक और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला कि जहां पर आखिर तक ये नहीं कहा जा सकता था कि कौन सी टीम फतह हासिल करेगी। भरपूर फाइट उन दो टीमों के दरमियान हुई जो इस सीज़न 3 में अपनी पहली जीत के लिए बहुत ज़्यादा हसास थे, लेकिन एंड ऑफ द डे लियारी लीजेंड्स जीत हासिल करने में कामयाब हुए, जिन्होंने जौहर जवान्स को 9 रन से शिकस्त दी और पहली कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड लियारी लीजेंड्स एंड इक्वली वेल प्लेड जौहर जवान। आज उनकी टीम ने भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस मिस्टर अर्श नसीर। थैंक यू वेरी मच अर्श भाई, आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट। उनके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो लाहौर से तशरीफ़ लाए, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज, थैंक यू वेरी मच सर। उनके साथ टीम ऑनर जौहर जवान्स मुजम्मिल अथर, मिस्टर मुजम्मिल अथर साहब, थैंक यू वेरी मच। और आज प्राउड टीम ऑनर मिस्टर शिराज उमर ऑफ लियारी लेजेंड्स, बहुत बहुत मुबारक शिराज। उनके साथ अब्दुल्ला फैसल, मिस्टर अब्दुल्ला फैसल, वेलकम करते हैं आपको भी। और उनके साथ सैयद हम्माद हुसैन, बेवरेज पार्टनर ऑफ UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पॉपुलर ग्रुप। आज की अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करता हूं तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आज की लूजिंग टीम के कैप्टन नासिर को मदऊ करूंगा। नासिर आप आएंगे और हमसे बात करेंगे लूजिंग टीम के कैप्टन। तालियां तो बजाएं यार, मैच हार गए तो क्या हो गया, यही हार जीत ही खेल है। नासिर, एक और डिफीट हुई है आपकी टीम को, क्या कुछ लर्न किया आपने सीजन 3 से? बस नशीद भाई, बॉलिंग थोड़ी जो है ना मसले में चल रही है, इंशाल्लाह कमबैक करेंगे अगले मैच में। ये हर मैच में आप कह रहे हैं, लेकिन अब तक कमबैक हो नहीं पा रहा, क्या वजह क्या है? बस बॉलिंग जो है हमारी उस तरीके से कर नहीं पा रही, अच्छे बॉलर हैं, इंशाल्लाह कमबैक करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ जीत के जरूर जाना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम है, डेल बहुत बड़ी कंपनी है, मोलन एंड फिप्स, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड गुड लक नासिर फॉर द रिमेनिंग मैचेस, थैंक यू वेरी मच। And now the winning team captain Arshad Pathan, AP. कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुए अशरफ, एक बड़ी जीत।
जी 2 मैच में हम कुछ गलतियां कर रहे थे, जैसे कि पिछले मैच में हम लीड कर सकते थे लेकिन हमने एक्स्ट्रा करा के अपनी लीड ख़त्म की थी। तो इस दफ़ा कोशिश की है, हमें 20 रन की लीड मिली जिसका हमें फ़ायदा हुआ दूसरे इनिंग में और अच्छा टारगेट सेट हुआ जिसकी वजह से आज हम मैच जीते हैं। आज आपकी बैटिंग क्लिक की अशरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली इनिंग में भी आपने 100 किया और दूसरी इनिंग में भी आप करीब पहुंचे। आप समझते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रहा? बिल्कुल, जिस तरह की मैंने बैटिंग खिलाई है 2 मैच में आपका लड़ते लड़के, आज इस मैच में कमबैक किया और सारों ने अपने हिस्से के रन डाले। और यही मैं पहले दिन से बोल रहा था कि टेप बॉल की क्रिकेट में जब अपना हिस्सा मिलाओगे तो टीम जीतेगी, और आज वही किया हम सब ने। बिल्कुल ठीक है, वेल प्लेड एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग मैचेस अशरफ पठान। बहुत सारी तालियां विनिंग टीम के कैप्टन अशरफ पठान। और अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर लेता हूं तो कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस आज इस मैच में जो लियारी लीजेंड्स वर्सेस जौहर जवान्स खेला गया था। निज़ार लेफ्टी 35 on 15 बॉल विद 4 fours and 2 sixes। राना मोहसिन 4 overs 55 runs 5 wickets। फलक 30 on 11 balls with 5 4 and 1 6। लेकिन वो खिलाड़ी कि जिसकी परफॉर्मेंस को सभी मिस कर रहे थे, एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब जहां वो मैच खेलने के लिए जाते हैं वो फ़ैन क्लब उनके साथ जाता है। बिलाखिर आज वो चलने में कामयाब हुए। फर्स्ट इनिंग 36 on 13 balls with 2 4 and 4 sixes एंड सेकेंड इनिंग्स जो उनकी फ़र्क डाल गई 52 on 15 balls with 5 sixes and 5 fours। कारी हमीदुल्ला। मैंने कहा ना, कारी हमीदुल्ला की परफॉर्मेंस बहुत मिस कर रही थी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। बिलाखिर आज कारी साहब अपने अंदाज में वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इससे पहले 2 मैचेस में जो है परफॉर्म नहीं हुआ, विकेट समझ नहीं आ रही थी। बस आज माशाल्लाह दिल भी चाह रहा था कि बैटिंग करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म हो गया। तो आपका दिल पहले क्यों नहीं चाह रहा था? बस विकेट थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही थी तो इस वजह से नहीं खेल पाया, बेड लक दिन। कारी साहब, हमने देखा था पहले सीजन में बड़ा कोई फैन क्लब आपका आता था, 100-150 लोग जो है वो नारे लगा रहे होते थे। कुछ आज कम आ रहे हैं क्या? फॉर्म खराब चल रही है इस वजह से? नहीं, वो उधर करीब था असगल शाह में जो पिछले 2 साल टूर्नामेंट हुआ है, तो वहाँ करीब थे लोग, तो सारे आते थे। यहाँ पे आना मुश्किल है उनके लिए, अगर इंतज़ाम हो जाए उनके लिए आने की तो इंशाल्लाह वो भी अभी भी आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल सबको पहुंचना चाहिए या एंजॉय करना चाहिए। कारी हमीदुल्ला, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, वेरी वेल प्लेड। बहुत सारी तालियां। मैन ऑफ द मैच मिस्टर हर्ष नसीर आप आगे आएंगे और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देंगे कारी हमीदुल्ला। तालियां होनी चाहिए जी। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, इसके बाद आप आगे आएंगे और कैश प्राइज देंगे कारी हमीदुल्ला को। चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। वेरी वेल प्लेड कारी हमीदुल्ला। और इसके साथ ओसाका का गिफ्ट हैम्पर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएं जनाब हमारे बेवरेज पार्टनर सैयद हम्माद हुसैन साहब, आप आगे आएंगे और कारी साहब को ओसाका लाइट्स का गिफ्ट हैम्पर देंगे। और ये क्रिकेट टेप यूज़ हो रहा है इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, ये भी ओसाका लाइट्स का है। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद फैन ऑफ द मैच मिस्टर मुजम्मिल अतर एंड मिस्टर शिराज, आप आगे आएंगे, दोनों टीम ऑनर्स। अब्दुल्ला अभी आगे हैं। और फैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हमारे टीम ऑनर्स आते हैं हमेशा, और ये अवार्ड आज जा रहा है मोहम्मद हुसैन। कम ऑन हुसैन। हम्माद भाई आप भी आगे आए ना जरा, थोड़ा सा आइए, हमारे बेवरेज पार्टनर। और हमारे फैन आते हैं बहुत ही सारे। हमारे फैन जो है ना वो सारे ऐसे होते हैं कि KTPL में आते आते भी उन्हें 15 साल लगेंगे इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त मोहम्मद हुसैन, अब अच्छा खेल के भी दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल अतर साहब आइएगा अपनी जगह पर। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, अर्श नसीर साहब, मुजम्मिल अतर साहब, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, शिराज साहब, अब्दुल्ला साहब एंड हम्माद साहब। थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी एंड प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। और आज की नशरियात में इतना ही। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। आज शाम को 6 बजे आपसे फिर डबल हेडर में मुलाकात हो रही है। टिल देन
अल्लाह निगहबान। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इग्लू पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को इस वक्त यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इग्लू पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने अपनी इग्लू आइसक्रीम और हमारी होममेड की रेंज है वो कंप्लीट हमने यहाँ बदर एक्सपो, जो कि बदर एक्सपो की तरफ से बचत बाज़ार लगाया गया एक्सपो सेंटर कराची में, तो हम इस वक्त हॉल नंबर 3 में मौजूद हैं। आप लोग विज़िट करें और अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ। और इस बचत बाज़ार में डिफरेंट स्टॉल्स वालों ने डिफरेंट जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हुए हैं हर ब्रांड ने, तो आप लोग आएँ और ये डिस्काउंट्स जो है वो अवेल करें और इग्लू का स्टॉल भी विज़िट करें। और हमने जो है अपनी आइसक्रीम रेंज के ऊपर और अपनी होममेड पराठा की रेंज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हुए हैं। आप आएँ और अवेल करें डिस्काउंट्स। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसे मिल गई है, अब ये कौम का काम है कि वो उसे तामीर करे। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Introducing Dhabeji Special Economic Zone, a project of Government of Sindh. This global industrial city connects to Central Asian, Middle Eastern and African markets, with seamless access to China and the rest of the world through Karachi's ports. Enter a state-of-the-art zone that nurtures industries, creating jobs and boosting exports. Dhabeji Special Economic Zone represents a defining moment in its evolution, offering special economic zone benefits such as tax holidays and import exemptions, along with the added advantage of seamless access to uninterrupted utilities. A flagship CPEC project of Government of Sindh, under public-private partnership with Zahir Khan Brothers Development and Management Company.
Dhabe G Special Economic Zone, Pakistan's gateway to prosperity. कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर ये कुछ बेहतर है बचत एक्सपो। कुछ बेहतर है, इसीलिए तो यहाँ सेल करी है। ये तो सही बात है। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, माहौल है, होना चाहिए ऐसा लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। असल मकसद इसका यही है कि बचत होनी चाहिए लोगों को। होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बचत होनी चाहिए लोगों के लिए, रिलीफ मिलता है इससे लोगों को। तो आप लोग को रिलीफ तो मिला ना? जी बिल्कुल रिलीफ मिला, इनकार नहीं कर रहे इस बात से, बिल्कुल मिला है, अच्छा रिलीफ मिला है। जी यानी कि आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होके जा रहे हैं यहाँ से। और ऐसे तो ऊपर एक ब्रांड है उसके ऊपर जो है डिस्काउंट है, ये अच्छी बात है ना। 12 महीने लगनी चाहिए, हर महीने में 1-2 दफ़ा तो लगनी चाहिए एग्जीबिशन, ताकि हम जैसों को आराम मिले, सुकून मिले। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। It's 1 a.m. हम सब ने अपने बचपन से आज तक टेप बॉल जो है वो खेली है, अब भी खेलते हैं जब मौका मिलता है। और इस मुल्क के अंदर इतना टेप बॉल का टैलेंट है, और जो हमारे सीनियर्स और हमारे साथ के और हमारे जूनियर्स जितने भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लीग्स में भी काम करते रहे हैं और खेलते रहे हैं, वो सब किसी न किसी दौर में टेप बॉल से मुंसलिक रहे हैं। परहैप्स मेरा ख़्याल है उन सब में से ज़्यादातर लोगों ने टेप बॉल से ही शायद शुरू किया होगा। देखें, हर लेवल की एक सेगमेंटेशन होती है। अब अगर ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है तो इसमें से टीम में तो 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका PSL आ जाता है, फिर उसके बाद और हमारी लोकल लेवल की टीम्स आ जाती हैं। तो और उसके बाद जब ये आ जाएगा तो एक क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स बहुत फ्लरिश करेगा। दूसरा जो इसमें एक नेशन बिल्डिंग का या एक पैट्रियटिज़म है उसको फ्लरिशमेंट मिलेगी, उसको नरिशमेंट मिलेगी। प्लस ये कि आपकी यूथ जो है वो हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। तो इसके मल्टीपल वेरियस इसके बेनिफिट्स हैं टू द सोसाइटी, टू द मासेस एट लार्ज। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इसके बहुत सारे फ़वाइद दूर रस नताइज माशरे पे मुरतब होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे ज़ोए नरसी साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। बदर एक्सपो की ये अच्छी काविश है। ये एक अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे ज़ोए नरसी साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। बदर एक्सपो की ये अच्छी काविश है
कि हमारे यहाँ कल्चर जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, स्पोर्ट कल्चर जो है वो इसको ये इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं। और माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से उन्होंने पिछले कई सालों से जो है ना इस पे एफर्ट्स कर रहे हैं। और अब जाके मैं समझता हूँ कि किसी एक अच्छे पोजीशन पे हम एक अच्छे लेवल पर हम बढ़ रहे हैं और हम सब लोग इन टीम का एक हिस्से के तौर पे इनके साथ है। वैसे कि मेरा ताल्लुक डिप्लोमेटिक फोरम और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे ये है कि एक बच्चों के लिए जो है ना एक वो लर्निंग भी है और हमारा एक अच्छा माइंड जो है ना माइंड सेट भी इससे अच्छा होता है। और एक ये तहज़ीब कल्चर ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ख़त्म होते जा रही हैं। और कल्चर तो अब तो ख़ास तौर पर सब ये डिजिटल हो गया। अब लोग गेम भी जो है डिजिटल कर रहे हैं। जब तक स्पोर्ट्स नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो है ना हम लोग एक्टिव नहीं होंगे। हमारी नौजवान नस्ल इससे दिमाग भी खुलता है, स्पोर्ट्स एक्टिव होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी काविश है, तो हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाला। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सीज़न 1 का? एक्सपीरियंस नंबर 1 तो आपको पता है कि पिछले साल जिस तरह की KPT1 स्टार्ट हुई थी KPTL, और उसके अंदर जो पोजीशन होल्डर थी आपको पता है हम लास्ट के अंदर एक ही मैच 2 मैच जीते थे हम लोग लास्ट टाइम ना। बट ये सिचुएशन ये थी कि उसमें बारिश का सिनेरियो था, चीज़ें थी, फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम हमें कुछ समझना पड़ी चीज़ें काफ़ी हद तक। बट समझने के बाद आपको पता है रिवाइव होती हैं, हर चीज़ें होती हैं। सीज़न 2 के अंदर हम जब पहुँचे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिल रही हैं और बिल्कुल जस्ट लाइक PSL वाला एक माहौल नज़र आ रहा है कि द ब्रांडिंग चीज़ें और सबसे बड़ी बात चीज़ ये होती है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको मेनटेन करना। वो ज़ोहर की एक आदत है माशाल्लाह बदर एक्सपो की, वो चीज़ों को लेके चलते हैं, मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें, और इसी वजह से माशाल्लाह वो नाम अल्लाह मियाँ ने वो ज़िंदा रखा हुआ है और अल्लाह मियाँ उनको भरपूर तरक्की दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ दबंग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इंशाल्लाह वो आपको नज़र भी आएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। हमारी हमेशा कुछ कोशिश होती नए करने की, इस दफ़ा भी कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह। होपलेस आप लोगों को नज़र आए। लास्ट टाइम के हम लोगों ने तकरीबन यासिर के अलावा मतलब जो हमारे प्लेयर्स कुछ थे 6 मेरे ख्याल से हम लोगों ने रिटेन किए थे, और इस दफ़ा कुछ नए प्लेयर्स हम लोगों ने स्टार प्लेयर्स में उठाए, अच्छे बड़े नाम है। वो जल्द हम लोग एक वीडियो लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 8 तारीख को, तो उसके अंदर आपको इंशाल्लाह नज़र भी आएगा और जियो स्पोर्ट्स पे आपको वो वीडियो ऑन एयर भी नज़र आएगा। मैसेज सिंपल ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसको ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, और उसके बाद फिर ये टेप बॉल देखें। ये टेप बॉल वो गली कूची की क्रिकेट थी जिसको ज़ोहर ने बिल्कुल एक एज अ ब्रांड ला के खड़ा कर दिया KPTL के नाम से। हम उसकी एक फ्रेंचाइज ज़रूर है, लेकिन ये आप लोगों के बगैर कंप्लीट नहीं है। लोगों को चाहिए, लोग आएँ, इसको ज्वाइन करें इसको, और उसको जितना आगे फैला सकते हैं उसको फैलाएं जाके। कम से कम ये है कि ये चीज़ गली कूचे वाली ख़त्म हो के मतलब ये हमें और लोगों को मौका मिले, जैसे हम मौका दे रहे हैं लोगों को, और लोगों को मौका मिले और लोग आगे आके इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, उसको अवेल करना चाहिए। बेहतरीन एक चीज़ है, हमने अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश ये है इंशाल्लाह हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं और आपको रिप्रेजेंट इंशाल्लाह प्रेजेंट होगी इंशाल्लाह। आप भी खेलते रहोगे टेप बॉल, तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी खेलें इस ग्राउंड में उतर के? सर मतलब ये है कि ये क्रिकेट का बहुत शौक़ है, इसीलिए इसको लेके आए टीम को, चीज़ों को, और समझते हैं कुछ चीज़ें जिसकी वजह से हमने प्लान किए कि इंशाल्लाह खेलने का मौका गली कूचे के हद तक रहे मेरे ख्याल से तो बेहतर है, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा ग्राउंड के अंदर तो ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस KTPL 1 का, तो जब आप KTPL 2 में आए हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा फर्स्ट जो इवेंट हुआ बदर एक्सपो के थ्रू, तो उसको हमने ओन भी किया, और प्लस उसमें हमारी जो दूसरी टीम थी क्लिफ्टन गाजी, वो माशाल्लाह चैम्पियन भी बनी। तो ये दोनों टीम्स हम ओन करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपना ज़ोहर भाई को कि इन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लिया, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इनके साथ रहेंगे जॉइंट इंशाल्लाह। देखें इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लोगों को, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया, और मैं समझता हूँ कि इसको और मज़ीद कामयाब बनाना चाहिए। तो फर्स्ट के बाद सेकंड जो है वो एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और आप सब आएँ, ज्वाइन करें इंशाल्लाह, इसको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मैं ये बताइए कि आप KTPL 1 का एक्सपीरियंस क्या रहा आपके साथ? वेल KTPL 1 का अमेजिंग एक्सपीरियंस था।
कुछ नया फॉर्मेट देखने को मिला क्रिकेट का। बहुत ज़्यादा लोगों में जोश था, जो क्राउड हमें सपोर्ट कर रहा था उस एरिया का, बहुत अमेजिंग था। इसी की वजह से हमने सोचा कि वाई नॉट सीज़न 2। और सीज़न 2 ये है कि सीज़न 1 में हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट दिस टाइम इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि विल टेक द कप। हमारे पास जो एक यासिर है जो कैप्टन, हमने उसको रिटेन किया हुआ है, और दूसरी चीज़ एक छोटा विकी एक बैट्समैन है, उसको हमने हायर किया और उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल, टेप बॉल को लेके तो बहुत मेमोरीज़ हैं। इनफैक्ट लास्ट नाइट ही मैं एक मैच खेल के आया हूँ, और टेप बॉल की मेमोरीज़ इतनी है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक मेमोरी याद होगी, बट ये है कि इट्स एन अमेजिंग फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। मुझे हार्ड बॉल से ज़्यादा टेप बॉल में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बैट्समैन अपनी मर्ज़ी से बहुत शॉट्स मार रहे होते हैं। फ्रीडम होता है। जी जी, बिल्कुल फ्रीडम होता है। स्पेशल थैंक्स टू ज़ुहैर भाई और जितनी भी मैनेजमेंट है उन्होंने, और जावेद मियादाद साहब, इन्होंने इस गेम को इतना ऊपर ले आए हैं अब कि मेरे ख्याल से इसी में से हम कोई ना कोई टैलेंट निकाल के इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। माशाल्लाह केपीटीएल तो बड़ी मशहूर हो गई है, हालांकि सेकंड लीग है, और ज़ोहर साहब के ये कारनामे हैं माशाल्लाह कि कराची की जो रोड की क्रिकेट है ना, जो गलियों की क्रिकेट है, उनको ये टीवी पे लेके आए। वो लड़के जिनको चांस नहीं मिलता, आप देख रहे हैं बेचारे, हर लड़का गलियों में खेल रहा होता है, रोडों पे खेल रहा होता है, जिनके पास कोई ग्राउंड नहीं होता, उनको ग्राउंड प्रमोट किया ताकि इससे हर प्लेयर को चांस मिलता है। और ये टीमें जो बनी हैं, इससे है कि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है माशाल्लाह, लोगों को, प्लेयरों को, अच्छे प्लेयरों को पैसे भी मिल रहे हैं, और प्लेयर भी नुमायाँ हो रहे हैं। हो सकता है इन प्लेयरों में से हमारे को टेप टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर निकलें, वही सब जोहर साहब को दुआएं दे रहे होंगे कि रोड की क्रिकेट को कितना ऊपर लेके आए माशाल्लाह। ये तो बड़ी बात है ना कि रोड के प्लेयरों को आप इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और टीवी पे लाइव के साथ कमेंट्री। कुछ छोटे छोटे गाँव में से देखो प्लेयर आ रहे हैं, वो बड़े शौकीन हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। असल क्रिकेट है ना हार्ड बॉल की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, उसमें टाइम चाहिए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टाइम होता है कि आप ये क्रिकेट को आप गली में भी खेल सकते हो, प्रैक्टिस गलियों में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इसके लिए ग्राउंड चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के साथ आप स्पोर्ट्स में ले आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे आप देखो, कोई पान गुटके में लगा हुआ है, कोई सिगरेट में लगा हुआ है। ये चीज़ों से दूर करने के लिए आप स्पोर्ट्स में बच्चों को ले आएँ, पढ़ाई के साथ आप ग्राउंड में बच्चों को निकालें, ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जिस तरह पहले जीती थी, अल्लाह ने हमारी मदद की थी और हम टीम जीत के ट्रॉफ़ी लेकर गए थे। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भी हम जीतेंगे, और क्योंकि इस मरतबा हम पहले से ज़्यादा हमने मेहनत की हुई है दोनों टीमों पर। क्लिफ्टन गाजी में भी हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, और गुलशन गौहर में भी हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात को पता होगा, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी फ़ाइट देंगे, और जिस तरह हम पिछले साल जीते थे इस मरतबे भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। आप देखें कि जब ये आइडिया फ्लोट हुआ था, ज़ुहैर नसीर साहब ने, जब बदर एक्सपो के CEO हैं, उन्होंने जब ये आइडिया फ्लोट किया था, तो हमें उनकी एक्सपर्टीज़ पर और उनकी इदारे की एक्सपर्टीज़ पर पूरा यकीन था, क्योंकि बदर एक्सपो ने जो भी आज तक कोई काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सबका सब हिट ज़रूर हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है तो काबिल तहसीन है। तो हमें ये ज़रूर पता था कि अगर ये इतना बड़ी सोच ज़ुहैर नसीर साहब ने सोची है कि कराची के और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, कि जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और ये अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर उनको मुहैया कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो है कल को किसी न किसी बड़ी टीम में जाकर खेल सकें। तो मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि ये अगर ज़ुहैर नसीर साहब कर रहे हैं और बदर एक्सपो कर रही है, तो ये जो कैपिटल है ये ज़रूर कामयाब हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि सेकंड सीज़न 6 महीने के बाद होने का मकसद ये है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में से भरपूर पजीराई है, और पूरे लोग खुशी से देखते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैर नसीर साहब ने जब
सीज़न 1 स्टार्ट किया था तो बिलीव मी कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये 40 साल 45 साल पुराना ट्रेंड लेके आ रहे हैं, और जिसके अंदर हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, जावेद मियादाद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, फर्स्ट सीज़न की लॉन्चिंग इन्होंने की थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीज़न 2 में खड़े हुए हैं यहाँ पर, और पब्लिक भी देखें, और ये जो नए बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया और एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूँ इस बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो अल्लाह करेगा तो इस सीज़न 2 को और भी बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से हम कर सकेंगे, और थर्ड फिर आएगा। और अभी मैं वेलकम करता हूँ हमारे कौंसल जनरल यूएई, और इन्होंने अभी ऑफ़र की है कि दुबई के अंदर भी आप ये इवेंट करें, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये ज़ोहैर साहब की मेहनत की और उनकी काविशें हैं जो आज हम यूएई पे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल इसको फिर यूरोप कंट्रीज़ में भी, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी इस ट्रेंड को लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत ज़्यादा होपफुल कि हमारे जितने भी यूथ है और यंग जनरेशन है कि जिनको, जैसे अभी शाहिद भाई ने आपको सुना होगा, कहा कि मैंने अपने करियर का आगाज़ इसी स्टेडियम से किया था। मैं कहता हूँ हमने रोडों से किया था। हारून भाई का मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये रहते तो हम इनकी क्रिकेट देखने के लिए जाते थे। जो रोड वाली क्रिकेट होती थी, हमें घर से मार पड़ती थी कि कहाँ गए थे। हमने कहा मैच देखते, बोला धंधा नहीं करना है तुम्हारे को, जो मैच देखते। जब बच्चे होते थे हम भी, लेकिन माँ बाप हमारे, हम चूँकि मेमन है ना, तो मेमन में सबसे बड़ा है कि पढ़ो साथ साथ काम भी सीखो। तो हम उस ज़माने में हारून भाई के मोहल्ले में रहते थे और वहीं हमारी दुकान भी थी। तो हम इनका जब देखने जाते थे तो हमें बड़े घर से बड़ी मार पड़ती थी, पर मार पड़ते पड़ते देखें आज हम भी बड़े हो गए, और हारून भाई ने इस इवेंट को इनके साथ कोलैबोरेशन करके कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं अगेन ज़ोहैर साहब का और पूरी टीम का, प्रेसिडेंट जावेद मियां साहब का, तौसीफ़ अहमद साहब का, सादिक मोहम्मद साहब का, और ख़ुसूसी तौर पर शाहिद आफरीदी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस बेड़े में हमारा साथ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम और कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। और शाहिद भाई, मैं आपकी हम आबाद के थ्रू, तो अभी मैं ख़ुद पर्सनली गया हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट की इजाज़त लूँगा शाहिद भाई, कि हमने बड़ा काम किया है अभी, और आबाद डे टू डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम सैलाब ज़दान की मदद भी कर रहा है। और मैं ख़ुद पर्सनली अभी मीरपुर ख़ास हैदराबाद ख़ुद होकर आया हूँ, और अब हमारा अगला टारगेट शिकारपुर है, सखर है, खैरपुर है। तो आबाद तो अपनी तरफ से कर ही रही है, हम आपके साथ, मैं बज़ाते ख़ुद शाना बशाना आपके साथ हूँ, और मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का अतिया पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक्सपीरियंस के अलावा देखें, ये समझता हूँ कि बदर एक्सपो सोल्यूशन की, ज़ुहैर नसीर की, और उसके अलावा KTPL की पूरी जो मैनेजमेंट है, उसकी बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है उनका, और बड़ी अच्छी काविश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो क्रिकेट के शौकीन हजरात हैं, या जिनके पास टैलेंट मौजूद है, या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, आप ये समझें कि ग्राउंड्स में धूप के अंदर गुजार दी है, और उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को किस तरीके से आगे लेके जाएं। टेप बॉल मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन को, अगर फाउंडेशन पे ही किसी को जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत इजी और बहुत टाइमली क्लिक कर जाता है। क्रिकेट में मैं समझता हूँ 2 चीज़ें बहुत, क्योंकि हम क्रिकेट के, हम खुद बहुत ज़्यादा शौकीन रहे, तो पहले कभी खेलते थे लेकिन ख़ुद कभी नहीं खेल पाए प्रॉपर्ली, तो आज हम खिला रहे हैं एज अ फ्रेंचाइज ओनर, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ नेशन को सर्व करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो कोशिश होती है कि हम अपने मुल्क के नाम रोशन करने के लिए अपनी टीम को, जो है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। कोई शक नहीं है, सीज़न 2 क्या सीज़न 10 भी होगा तो इंशाल्लाह हम साथ होंगे KTPL के। देखें, ये भी एक, आप इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं कि ये भी एक, जब आप 300 की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, आज आप 700 की करें, तो इट मीन्स के प्लेयर्स के अंदर चाहत है कि वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। दूसरा, जब हम इसको सारे सूबों में करेंगे, अभी तो हम KTPL कराची टेप बॉल कर रहे हैं, जब हम मेज़बानी करेंगे और दूसरी भी प्रोविंसेस की, और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद इसमें हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, और उसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास एक से एक अच्छे खिलाड़ी और भी बहुत सारे जो है वो खेलों में मौजूद हैं, मगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इस तरह की कोशिश और इस तरह की काविशें रहीं
तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम अच्छे अंदाज से अपने फ्यूचर को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और अपने नौनिहालों को हम बेहतर अंदाज से कोई अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म दे के उनसे हम उनको आगे भी बढ़ा सकेंगे और उनसे हम अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ख़ास तौर पर शाहिद आफरीदी और उसकी फाउंडेशन का कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और उसके साथ साथ टेप बॉल टेनिस को जो कि शाहिद खुद भी खेलता था। मैं तो जब क्रिकेट खेला करता था तो ये हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ मैं जब भी क्रिकेट खेल के आता था तो शाहिद को मैं देखा करता था कि बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे होते थे। तो उस वक्त तो हार्डली ये 13-14 साल के होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं आगे जाकर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत नाम करेंगे और वो आपके सामने है। तो शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जो दीगर मेहमान गिरामी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट यही था कि हमने टेप बॉल क्रिकेट को एक स्ट्रक्चर देना था। टेप बॉल क्रिकेट के बहुत प्लेयर्स हैं, जब हमने डेटाबेस इकट्ठा किया तो 400 से ज़्यादा के प्लेयर्स जो हैं वो आपको मौजूद थे पूरे पाकिस्तान में जो कि अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये स्ट्रीट्स पे या छोटे छोटे मैदानों पे खेलते थे। तो बदर एक्सपो में ज़ुहैर नसीर साहब ने इस आइडिया को फ्लोट किया, कहा कि क्यों नहीं हम इस क्रिकेट को हम स्ट्रक्चर्ड कर दें और आप हमें एक स्ट्रक्चर बना के दें जिसमें हम इसको बड़े मैदान में लेके जाएं, अंडर लाइट्स, लाइव टेलीकास्ट। तो ये सारी चीज़ें के पीछे जो है वो मैं फील करता हूँ कि बदर एक्सपो की जो टीम है अंडर ज़ुहैर नसीर, उनका बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने आज इसको ये सेकेंड एडिशन जो है वो होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा होगा। और जो मुझे उसमें और जो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स जो हमारे साथ मिले हैं, चाहे वो DHA दबंग हो या गुलशन गौहर हो, जौहर जवान्स हो, जितनी भी टीमें हैं, इन सब लोगों ने, जितने भी इनके ओनर्स हैं, इन्होंने जिस अंदाज में आके हमें ज्वाइन किया और हमारा तकरीबन 50% काम इन्होंने ले लिया, जो कि मैं समझता हूं कि टेप बॉल टेनिस के लिए और उन प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हमने उन टेस्ट क्रिकेटर्स को, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स थे हमारे साथ, उनको ज्वाइन इन किया कि ताकि उनके नामों के साथ हमने उनको मेंटोर्स बनाया। पहले साल वो कैप्टन थे, अब वही प्लेयर्स हसन रजा, मोहम्मद समी और इस तरह के और जितने हमारे फैसल अतर हैं, नवीद लतीफ़ हैं, इन्होंने हमें अब एज मेंटोर इन टीम के साथ लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम एफर्ट है, सब लोगों के इसमें बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने टेप बॉल टेनिस का वर्ल्ड कप करवाना है। तो 2024 में हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से हो जाए। तो इस टूर्नामेंट के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम कोई 4 नेशन या 5 नेशन टूर्नामेंट किसी बाहर के मुल्क में करें, ताकि वहाँ भी जो टेप बॉल टेनिस खेलते हैं उनको में इकट्ठा करने के बाद अगर हम वर्ल्ड कप करा देंगे तो आई थिंक टेप बॉल टेनिस प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने टेप बॉल से क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि आपका स्टार्ट इसी क्रिकेट से होता है, उसके बाद फिर आप कन्वेंशनल क्रिकेट में चले जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए हम ये फील करते हैं, और अब माशाल्लाह जैसे शाहिद ने ज्वाइन किया हमें और उसके साथ यूनस ने ज्वाइन किया, जावेद मियादाद हमारे साथ हैं, तो जब इतने बड़े नाम अगर मिल जाएं तो उसके बाद क्रिकेट ने तो बेहतर ही होना है और इंशाल्लाह आप इसको बेहतर होता देखते रहेंगे। आपका एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जिस तरह से प्लेटफॉर्म टेप बॉल का ये ट्रेंड चल रहा है। स्पेशली क्रेडिट जाता है KTPL बदर एक्सपो सोल्यूशन को, जो सीज़न 1 तो बहुत ज़बरदस्त करवाया और सीज़न 2 जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें लेजेंडरी नो डाउट दुनिया को पता है कि जावेद मियादाद साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं और उसके बाद तौसीफ अहमद साहब हैं, सारे लोग हैं माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो इंटायर टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि हमारे दौर में 90s में अगर आप देखें तो टेप बॉल का इतना रुझान नहीं था, मगर जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है, फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं ये आइकॉन प्लेयर्स हो गए और जितने भी तैमूर मुर्जा, ये बेसिकली हार्ड बॉल खेलते रहे, मगर हार्ड बॉल में इतना चांस नहीं मिला इनको, तो वापस रिवाइज हो गई इनकी लाइफ एज ए टेप बॉल में। और जहाँ पर अगर बात करूँ तो ज़ुहैर नज़ीर साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, फ्रेंचाइजें बनाई हैं, फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं वो साथ में होते हैं सारे लोग, अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें ये कि ये सक्सेस होगा इवेंट इंशाल्लाह सीज़न 2
और ड्राफ्टिंग आज होने जा रही है, तो उसमें लेट्स सी देखते हैं कि किस तरह के प्लेयर्स पिक होते हैं। और लास्ट टाइम तो बड़ी अच्छी टीम थी क्लिफ्टन गाजी, वो विन करी है इस टूर्नामेंट को। इस दफ़ा देखते हैं कि अच्छी ड्राफ्टिंग होगी तो अच्छे प्लेयर चूज़ होंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी लोगों को। कोशिश आज यही होगी कि अच्छे से प्लेयर्स जो हैं वो पिक करें, और गुलशन गौहर की टीम है उनको बेस्ट विशेस बोलूँगा। जो हमारे ऑनर्स हैं सारे वो बड़ी मिल के मेहनत भी कर रहे हैं, तो अच्छी पिकिंग होगी, अच्छी चॉइस होगी तो अच्छी टीम बनेगी। टेप बॉल जो हो रही है तो ज़ाहिर बात है कि इसमें एक अपना इनिशिएटिव होता है, लोग देखते हैं इसको, एंजॉय भी करते हैं क्रिकेट को। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो है इसके व्यूवर्स होंगे, इसके लोग होंगे, अच्छी जो है वो प्रोफाइल बनाएं अपने प्लेयर जो खेल रहे होंगे टेप बॉल में। और ये ड्राफ्टिंग होगी तो सीज़न 2 के लिए तैयारियाँ हैं, एंजॉय करें टेप बॉल को। अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का, और बहुत खुशी होती है कि सारे पुराने क्रिकेटर्स भी सब यहाँ पे हैं और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हैं। और मेरे पहली बार यहाँ पे आया है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, और आई थिंक जो जिस चीज़ के लिए हम ये पैसे जमा कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने एज अ कंपनी भी इसके लिए काफ़ी सारे एफ़र्ट्स किए हैं, और अच्छा है कि यहाँ पे और लोग आ रहे हैं और इस इवेंट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू पैसे रेज होंगे। तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन और थैंक यू फॉर पुटिंग द इवेंट टुगेदर। थैंक यू शाहिद भाई। बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात ये थी ये पौधा जो लगाया, मगर इससे लोगों ने एंजॉय किया, और इसीलिए आप देखें कि आज और पहले में कितना फ़र्क है। लोग बड़ा यानी इंटरेस्ट लोगों ने लिया, बच्चों ने लिया, सब ने क्रिकेट का मज़ा आया खेलने में भी, देखने में भी। तो अगर इस तरह की लाज़मी बात है कि एक तरीके से ये हेल्दी एक्टिविटीज़ है। लोगों हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है लोगों के पास इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है जैसे दुनिया में कितनी चीज़ें हैं। तो ये क्रिकेट खेलना 10 ओवर 20 ओवर्स की क्रिकेट और ये टेप बॉल, इसमें हर आदमी खेल सकता है, चाहे जो भी है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं है, डर नहीं है, आपको लगने का नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इंजॉयमेंट क्रिकेट। अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और आप जानते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र है ना, तो ऑर्गेनाइज एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना वो बड़ी एक आर्ट है। तो आप कोई भी इवेंट को करें तो वो आपको पता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो क्रिकेट के लिए वाई नॉट, उन्होंने देखा कि पैशन लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और फिर नाइट क्रिकेट और फिर ये टेप बॉल इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट, तो बड़ी इंजॉयबल है। और आप देखेगा कि ये बहुत जल्दी है ना पूरे पाकिस्तान में जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। मैं बदर एक्सपो को एक तो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, कोई 4-5 साल से मैं इसके साथ हूँ, इस ग्रुप के साथ, और इनकी बड़ी खिदमात हैं बहुत सारे मामलात में। सबसे पहले ये जो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग है, ये एक फाउंडेशन है उन बच्चों के लिए ग्रो करने के लिए जो कि क्रिकेट में हिडन टैलेंट है। अगर ये हिडन टैलेंट हम बाहर लेकर नहीं आएंगे तो ये किस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ज़ुहैर नसीर साहब और जो ये ग्रुप का हारून रशीद साहब हैं, इसके अंदर जावेद मिर्ज़ा साहब बड़े नाम हैं, इन लोगों का बहुत किरदार है इसके अंदर, जो कि इस ग्रोथ दे रहे हैं उन बच्चों को जिनका टैलेंट जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंडली ये जो लीग हो रही है, इससे हम ना सिर्फ एक अपने जो इर्द गिर्द माहौल है उसके अंदर एक खुशगवार क्रिकेट की सेरेमनीज़ कर सकते हैं और क्रिकेट को फ़रोग़ दे सकते हैं, बल्कि हम जो यूथ है हमारी कराची की, हमारे पाकिस्तान की, उस यूथ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर अ बेटरमेंट। ये जो टेप बॉल को इन्होंने जो ग्रोथ दी है, ये ग्रोथ मतलब इट्स वेरी गुड कि ये चीज़ इंटरनेशनली हाईलाइट की जा रही है कि टेप बॉल क्रिकेट भी हम जो है उसके अंदर भी अपना एक मेयार बना सकते हैं। तो आई थिंक वाकई ये ज़ुहैर साहब की कैपेबिलिटी है जो इस चीज़ को ऊपर लेकर आए।
पहला सीज़न अच्छा था, बहुत ही अच्छे हमने अच्छे प्लेयर्स देखे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि टेप बॉल में भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं। तो एक दो प्लेयर्स मुझे बड़े अच्छे नज़र आए, जिनमें फास्ट बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, और ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अब जिस तरह की क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर होती जा रही है, तो वी नीड प्लेयर्स लाइक हार्ड हिटर्स, और जो अच्छा बॉल को बैट के ऊपर लेते हैं, और फास्ट बॉलर्स, वी नीड फास्ट बॉलर एज वेल। सो मेरे ख्याल से जो पहला सीज़न था उसमें भी एक दो प्लेयर्स हमें मिले, और इंशाल्लाह जो आज देख रहे हैं आप जिस तरह का महफिल यहाँ जमा है, अच्छी ड्राफ्टिंग हो रही है, तो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्काउटिंग यही होती है कि आप डिग आउट करते हो अपने नए टैलेंट को, तो नया टैलेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है। स्ट्रीट क्रिकेट पे भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई अच्छा बैट्समैन नजर आता है, आप रुक के ज़रूर देखते हो कि यार बड़ा अच्छा खेलता है। तो इसी तरह अब क्रिकेट लाइव होगी, टीवी पे लोग देखेंगे, उसमें कमेंट्स करेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म लड़कों को मिल रहा है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर आएँ। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मैसेज यही है कि ऑलवेज़ वर्क हार्ड, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास अगर चांस जब मिलता है तो आपके पास ग्राउंड में परफॉर्म करने का एक मौका मिला है आपको, तो आप ये सोचें कि उस मौके से मैं फ़ायदा होता हूँ। आप थैंक यू बोलना चाहेंगे बदर एक्सपो के, उसने इतना अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, और जोहर साहब का जितना बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया बदर एक्सपो का, और क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है ये, और उसमें इतना टाइम निकालना और इस तरह इवेंट को मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इन्होंने सारे टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को गैदर किया है, लेकर आए, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जोहर साहब की बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है इसके अंदर। KDPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत भी है, और कराची वालों के लिए मैं एक स्पेशली पैगाम दूंगा कि इसके अंदर जितना अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहें वो करें, क्योंकि हमें बहुत 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 टाइम के बाद हमारे ग्राउंड दोबारा रौनक में नज़र आए हैं, और जितनी हमारी फ़िज़िकल फिटनेसेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, उनके हवाले से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना इनके लिए खुशाइन है। दूसरा ये कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि KDPL सीज़न 1 जब गया था माशाल्लाह से, तो लोगों ने इसको बहुत अच्छा अप्रोच किया, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, और सीज़न 2 जिस तरीके से अभी हम स्टार्टअप देख रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि 16 to 31 इस वक्त ग्राउंड फुल नज़र आने वाला है। तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कभी सोचा था कि टेप बॉल भी इस लेवल पे जाएगा कि वो टेलीवाइज्ड होगा और इंटरनेशनली टेलीवाइज्ड होगा? इसके लिए हम सबसे पहले थैंक्स करते हैं बदर कमर्शियल वालों को, जिन्होंने इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। दूसरा हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत माने जाने लेजेंड हैं हमारे जावेद मियां साहब, तो जिन्होंने इसको होम ग्राउंड आके इस पिच को ओन किया है, और हमारे स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो जितना अच्छा अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम इस वक्त कराची के लिए, कराची क्रिकेट के लिए, और स्पेशली एक स्पेशलिटी है कि पहली बार टेप बॉल एक इंटरनेशनल लेवल को टच करने के लिए जा रहा है, जिसमें आज आपने स्टार्टअप देखा है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ मर्ज हो रहे हैं, और हमारा आगे भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ब्रांड्स आपके साथ लगे रहेंगे। कराची और पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर कोई पहला नाम आता है और सबसे बड़ा क्रेज़ होता है, वो चाहे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो सब इस वक्त पहले क्रिकेट को अप्रोच करते हैं, और क्रिकेट के हमारे जितने भी माशाल्लाह से सुपर स्टार्स हैं, उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत वो है, बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला आगे जाके इंशाल्लाह ताला सबके लिए खुश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम रेहान लुत्फ़ी है और मैं वेस्टिंग हाउस LVMV प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लीड करता हूँ।
तो वेस्टिंग हाउस LVMB प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सॉल्यूशंस लेके पाकिस्तानी मार्केट में एंटर हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हमारा अपना हेड ऑफिस है कराची में, और उससे पहले से हम अपने पार्टनर्स के थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। हमारे प्रोडक्ट्स में मीडियम वोल्टेज प्रोडक्ट्स में RMUs, रिंगमैन यूनिट्स हो गए, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर हो गया, VCB, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स एंड लो वोल्टेज में एवरीथिंग विच इंक्लूड इन स्विच गियर, जिसमें आपके सर्किट ब्रेकर से लेके तमाम इवन अप टू द लोएस्ट पॉसिबल लाइटिंग इंडिकेशन, NCTs, एवरीथिंग इंक्लूड इन आवर सॉल्यूशन। सो हम ये कह सकते हैं कि यू नेम इट एंड वी हैव इट। तो ये तो हो गया बुनियादी तारुफ वेस्टिंग हाउस का। IEEE फेयर के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये एक यकीनन एक बहुत ही मुफीद प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है इंडस्ट्री को और इसके तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। जैसे कि क्योंकि देखें हर गुजरते दिन के साथ देयर चेंजिंग नीड्स चेंज हो रही हैं, और उसके साथ साथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मार्केट करने होते हैं, शोकेस करने होते हैं, जहाँ पे उसके पोटेंशियल बायर्स जिनको कि उसकी ज़रूरत होती है वो भी वहाँ होते हैं, उसके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं जो कि उसको टेक्निकली इवेलुएट करते हैं, और जो उसका प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, और IEEE फेयर की सूरत में ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तमाम स्टेक होल्डर्स के कि वो एक जगह इकट्ठे हों अंडर वन रूफ और वो अपना सोल्यूशन शोकेस करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस IEEE के साथ वो कैसा रहा है, देखें IEEE तकरीबन 11-12 साल से रेगुलर बेसिस पे एनुअली एक इवेंट करता है। 2 मेजर इवेंट्स होते हैं इसके, IEEE सिम्पोजियम और IEEE फेयर। ठीक है, मैं पिछले 6 साल से रेगुलरली इस इवेंट का वन वे और अनदर मैं इसका पार्ट रहा हूँ। मैं IEEE की टीम का खुद भी बड़ा फाल मेंबर हूँ। तो हम डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसके साथ। मैं जिस भी अपने असाइनमेंट्स था पिछले, उन सब में इसका हमें फ़ायदा हुआ है, और मैंने ये देखा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एवरी ईयर। हर गुजरते साल के साथ इस इदारे ने जिसमें बदर एक्सपो का बहरहाल एक मेजर शेयर रहा है क्योंकि वो दे आर द इवेंट मैनेजर्स, तो उन्होंने हर गुजरते साल के बाद अपनी इस इवेंट को रिव्यू किया है और कोशिश की है कि उसको अगले साल में कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये हमेशा डिस्कशन में आई है IEEE की टीम के साथ भी और बदर एक्सपो के साथ भी जॉइंट मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें हमने इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस जो रूम्स हमेशा होते हैं, तो वो पिछले 2-3 साल में तो खासकर बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। और मैं वो दिन प्रोबेबली दूर नहीं है कि ये इसी प्लेटफॉर्म से ये ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका हुआ है IEEE फेयर, तो ये मौके फराहम करेगा लोगों को और जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को पुल कर सकें पाकिस्तान में। जहाँ तक रही बात हमारा पार्टिसिपेशन की IEEE फेयर में, जो कि अगले 11-12 रोज़ में इंशाल्लाह ये इवेंट होने जा रहा है, डेफिनेटली वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये इवेंट 3 से 5 अक्टूबर को इंशाल्लाह होने जा रहा है कराची में। और हम उसकी प्रिपरेशन में कई दिनों से लगे हुए हैं। वी ऑल्सो वांट के हम कोई कसर ना छोड़ें अपने तौर पे, जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो यहाँ पे शेयर करें। जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, चाहे ऑल द प्लेयर्स जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो तमाम हजरात जो कि जिनका स्टेक होता है और जो मिल के इस इवेंट को कामयाब बनाते हैं, तो उनको हम ना सिर्फ इन्वाइट कर रहे हैं बल्कि देखें मैं चूँकि ख़ुद भी मैंने कहा कि मैं एक्टिव मेंबर हूँ, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम ही लोग हैं, जो चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, हम ये कंपनी है, ये सब अपना अपना हिस्सा डालती हैं तो इवेंट सक्सेसफुल बनता है। हम चाहते हैं कि हम इस इवेंट को कामयाब बनाएं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। थैंक यू।
मेरा नाम असद है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हुंडई नटॉनिक्स को। करंटली मेरी पोजीशन है एज अ बिजनेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एट जुबली कॉरपोरेशन। IEEP का एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन दिस इंडस्ट्री। ओवर अ डेकेड ये लोग एग्जीबिशंस कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं। IEEP फेयर एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड लोग अपने प्रोडक्ट्स आके एग्जिबिट कर सकते हैं। साथ में जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, स्टूडेंट्स है, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो आके एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। तो काफ़ी फोकस्ड इवेंट होता है। एडवांटेज इसमें यही होता है कि हस एज एग्जिबिटर्स हमें सीखने मिलता है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या है लोगों को, जिसके ऊपर हम फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने सोल्यूशंस एग्जिबिट कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल होते हैं लेकिन लोगों को फुल पोटेंशियल उसका नहीं पता होता। तो जब यहाँ पे आते हैं हम अपनी पूरी रेंज दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट होते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है ये मेरे ख्याल से हमेशा से बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और आगे चलते हुए भी आई फील कि इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ बढ़ती रहेगी। ये इसलिए क्योंकि अब चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जीज़ आ रही है, सोलर के ऊपर लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। तो एनर्जी की एफिशिएंसी के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एफिशिएंसी में आपके साथ में ऑटोमेशन का बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो इसके लिए आपको बड़े अच्छे ब्रांड्स की ज़रूरत भी होती है। प्रोडक्ट्स भी आपको ऐसी चाहिए जो एक्चुअल एफिशिएंसी दे सके, मॉनिटरिंग भी कर सकें, जिसमें फिर लोगों का फीडबैक इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट्स लगाए हैं जिसमें उनको इश्यूज़ फेस होते हैं तो या क्या वो मसला एक्चुअली प्रॉब्लम में है या ड्यूरिंग द लाइन मिसमैच हो रही है। तो उसके लिए हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट्स को फाइन ट्यून किया जा सकता है, उनकी ट्वीकिंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी लग सकते हैं। तो ये आगे चलते हुए जैसे जैसे नई चीज़ें और आएंगी ये चीज़ें भी डेवलप होंगी। पीछे ब्रांड्स भी अपनी R&D के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स इसीलिए ला रहे होते हैं। और इसमें अब सॉफ्टवेयर का भी एलिमेंट काफ़ी आ गया है जिसके ऊपर एक सोल्यूशन आप कंप्लीट प्रोवाइड कर सकते हैं विद दीज प्रोडक्ट्स। बदर एक्सपो ये मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर से IEEP को मैनेज करता है। इसके जो फेयर्स होते हैं इनका भी आई थिंक काफ़ी अहम रोल है क्योंकि एक इवेंट कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। उसकी वर्किंग मेरे ख्याल से जब एक फेयर ख़त्म होता है उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट इवेंट वर्किंग स्टार्ट होती है, फिर प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट ईयर किसे लाया जाएगा, लोगों को अरेंज कराना ताकि रेलेवेंट लोग भी आएँ और एग्जिबिटर्स को भी इंटरेस्ट उस एग्जिबिशन में रहे। तो लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी अच्छे एक आउटकम रखा था। बदर की मैनेजमेंट भी खुद आके हर एग्जिबिटर से मिल रही थी। उन्होंने अपने चीफ गेस्ट को भी मिलाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। साथ में जो भी मार्केट में लोग थे उनको भी एक अच्छा मौका मिला एंड इनकरेजिंग होता है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लोग भी इनकरेज होते हैं आने के लिए। तो आई थिंक एक इनका जो सपोर्ट शुरू से रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है इस एग्जीबिशन की सक्सेस के लिए एंड फ्यूचर में भी आई होप कि इसी तरह ये कंटिन्यू करते रहें। सो जुबली कॉरपोरेशन एज एन अम्ब्रेला एक गोल्ड स्पॉन्सर रहा है। इसके अंदर हम अटॉनिक्स एंड हुंडई को भी स्पॉन्सर करते हैं एज गोल्ड स्पॉन्सर्स। ये हमारा शुरू से रहा है क्योंकि ये इवेंट इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक है, तो हमारे लिए भी ये इवेंट काफ़ी अहमियत रखता है, जिसके लिए हमने शुरू से ही इस इवेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की है एंड हमने यही कोशिश की है कि हर साल हम इसमें पार्टिसिपेट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अपने एंड से भी जितना हम इसे मार्केट कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, इट्स नॉट कि इंडिविजुअल लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। सो अस एज गोल्ड स्पॉन्सर्स वी ट्राई कि हम जितना मैक्सिमाइज़ कर सकें इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं IMS इलेक्ट्रिक की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। IEEP का जो फेयर हो रहा है ये एक बहुत ही नादिर मौका है। इस पे हम लोग भरपूर शिरकत कर रहे हैं IMS की जानिब से। IMS के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर एक तरह से एक यूनिक कंपनी है जो कि पूरी पावर ट्रेन को फ्रॉम पावर जनरेशन टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है पावर की उसको हम कवर करते हैं। और वी आर ऑल्सो इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफार्मर्स। तो इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम
प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तानी कंपनी के तौर पर सामने आ रहा है। वक्त की ज़रूरत है कि हम दोबारा मेक इन पाकिस्तान की तरफ वापस जाएं। हमने बहुत वक्त गंवा दिया है और इस मौके पर IEEE की जानिब से जो ये फेयर हो रहा है और बदर एक्सपो वाले जो इसको अरेंज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हमारे जैसे हैं उनके लिए, और फिर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ यूज़र्स हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आएँ और देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कंपनियाँ क्या बना रही हैं और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद इन्हिसारी के ऊपर अज़्म के साथ आगे बढ़ते हुए अगर पाकिस्तानी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट्स में, तो ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मसनूआत हैं उनकी क्वालिटी और उनकी जिद्दत में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये फेयर जो है इसके अलावा हमें इस बात का भी मौका देता है कि हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को, उनके जो सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री के लिए, उसको देख सकें और एक ही जगह पे हम एक ही वक्त में इस तरह की नेटवर्किंग कर सकते हैं जिसमें इस तरह के मौके में मिलेंगे। इसके साथ साथ फिर जो लोग इन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे हैं, जो ब्रेन्स हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये मौका हमारे लिए, हम सब के लिए, ख़ुद मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा कि मैं उन लोगों के साथ रीच आउट कर सकूं। और मैं अगेन IEEE का ख़ास तौर पर और बदर एक्सपो का इस बार हवाले से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह के इवेंट को यहाँ पर मुनक़्क़द किया है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे यंग इंजीनियर्स की जानिब। हमारे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हर साल बहुत सारे यंग इंजीनियर्स पैदा करती हैं, बेहतरीन लोग हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़त्तों में इन्होंने अपनी हुनर को मनवाया है। उनके लिए भी ये मौका है कि वो आएँ और वो ये देख सकें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में कौन सी कंपनियाँ हैं जो उनको न सिर्फ माश के मौक़े फ़राहम करें बल्कि उनकी तरबियत भी कर सकें और इस तरह से उनके जौहरों को निखार सकें। तो मैं इख्तिताम पे IEEE का और बदर एक्सपो का बहुत मशकूर हूँ कि उसने IMS इलेक्ट्रिक को इस बात का मौका दिया है। 3, 4 और 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के कराची के जो एक्सपो सेंटर है उसमें मौजूद होंगे और बदर एक्सपो और IEEE हमें ये मौका फ़राहम कर रहा है कि हम इन 3 दिनों में वहाँ आकर इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल फेयर्स में से एक यूनिक फेयर है और हम खुद इसमें बहुत शिरकत करते रहते हैं और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत कुछ इसमें सीखने का मौका मिलता है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ और शरीक हों और मिलजुल के हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँ। मेक इन पाकिस्तान, लिव इन पाकिस्तान, दैट इज़ द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल बाबानी है और मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ फैक्टर LED लाइट्स का। और हम लोग जो है LED लाइट्स को हम प्रोवाइड करते हैं बाज़ार के एतबार से और हमारी मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई, फ्लड लाइट हो गई और ये शोबाजात में हम अपना काम कर रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को, यानी कि मैं अपनी कंपनी का भी मुतारुफ़ करवा दूँ कि हम बाबानी ग्रुप के अंडर में आते हैं और इसमें फैक्टर का काम है। इसके अलावा लोंगी कंपनी है, सोलर के एतबार से जो दुनिया की टॉप ऑफ द वन कंपनी है, वो कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इसके अलावा जिनको सोलर है उसके भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सनग्रो इन्वर्टर हैं, इसके भी हम इसके जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ऑलरेडी हम लोग LED लाइट्स में मौजूद हैं। पिछले 2018 से हम जो है ये काम में हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारे डीलर्स मौजूद हैं। हमारी सर्विस का मयार हम कोशिश करते हैं कि लोगों को मयारी चीज़ और अच्छी कीमत में फ़राहम करें। दूसरी बात ये है कि जो स्टॉल हम अभी एक्सपो सेंटर में IEEE के ज़रिए अभी हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे दोनों पार्टनर लोंगी सोलर और जो है सनग्रो सोलर, ये भी हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और फैक्टर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है। हम इसमें प्लाटीनियम स्पॉन्सर के तौर पे आपको इंशाल्लाह दावत देते हैं और मैं सब तमाम इदारों को दावत देता हूँ, ये जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी इदारे हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह के,
इंजीनियर हैं वो आके हमारे स्टॉल पे विज़िट करें। और ये 3, 4 और 5 अक्टूबर को इंशाअल्लाह हम वहाँ पे आपका इंतज़ार करेंगे। मुझे एक बात बताते हुए और खुशी महसूस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि एलईडी लाइट्स की कंपनी में हमारी तेज़ तरीन ग्रोथ है, जो हमारी बाज़ार के एतबार से भी और तमाम डीलर्स के एतबार से भी। ये सब अल्लाह ने करम किया, मदद फरमाई, आसानी फरमाई और तमाम लोगों की मेहनत है, जैसे मेरी स्टाफ टीम है, तमाम मेरे इंजीनियर्स हैं और जितने भी मेरे सेल्स के लोग हैं और जितने भी मेरे डीलर्स हैं। ये खाली फैक्टर कंपनी की मेहनत नहीं है, इन सब की मेहनत है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डीएमसीज़ में जाती हैं और तमाम शाहराएँ हमारी एलईडी स्ट्रीट लाइट से रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि CNW में और डीएमसीज़ वगैरह के ज़रिए पूरे पाकिस्तान की तमाम शाहराओं को रोशनी की तरफ गामज़न करें। और ये जो तवानाई का बहरान है, जो तलब और रसद में जो कमी है, वो हमारे ज़रिए, हमारी प्रोडक्ट के ज़रिए काबिल, यानी कि इस काबिल हो कि इसके जो डेफिशिएट है उसको हम कम कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानिश सईद है और मैं जनरल मैनेजर डेप्स इंटरनेशनल हूँ, दीवान एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस। हम लोग सोलर का बिज़नेस करते हैं, रिटेलिंग एंड EPC बोथ, एंड वी आर बेस्ड इन दुबई, कतर, पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान में भी 3 मेजर शहर हैं, जिसमें कराची है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन आवर ऑफिसेज इन क्वेटा एंड पेशावर। वी हैव ऑल्सो वेयर हाउसेज इन मुल्तान, सक्खर, रहीम यार खान एंड सियालकोट, ऑल्सो इन फैसलाबाद। तो हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं IEEE में, और इसके अलावा ये है कि हम वी सी इट एज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन मीट पीपल, बोथ द एंड यूज़र्स एंड द सेलर्स। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारे पास और अच्छी कौन सी प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं फॉर आवर बिजनेस, जो कि हमारे लिए फीजिबल हों। प्लस इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ पे और सारे जितने भी एंड यूज़र्स हैं एनर्जी के, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के, वो हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। विजिटर्स के लिए हम लोग अब पावर सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, जिसमें EPC और PPA बिजनेसेस हैं। वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान फॉर कार्बन क्रेडिट्स। इसके अलावा रिटेल बिजनेस भी है। वी कैन सेल अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स एज वेल, जिसके अंदर इसके साथ साथ वो भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल BOS भी है। और इसके अलावा हम पूरा एक 1 विंडो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं फॉर सोलर एंड यूज़र्स। बदर एक्सपो इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रहा है और इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है विद सक्सेस स्टोरीज़, और IEEE इन्हीं की तरफ से मैनेज किया जा रहा है फॉर मे बी मोर देन डिकेड नाउ। और दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्चुअली मेक एंड यूज़र्स एंड सेलर्स मीट एज वेल। और इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस इवेंट में आएंगे और वी विल बी देयर टू वेलकम यू एंड प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। इसके अलावा ये भी है कि हमारी जो वहाँ पे जो जितनी भी अपग्रेडेशंस हैं इनटू द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर स्पेसिफिकली, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। This is Harish Shahid, Director of Orange Electric, and we've been working in Pakistan since 2006. Alhamdulillah, we're working in 8 cities in Pakistan, including all the big channels of Pakistan: Islamabad, Lahore, Karachi, Multan. And we've been in Pakistan for the last 17 years, and we've been attached with IEEE for the last 9 years, since 2014. And it's been a successful journey with IEEE, and it's been a pleasant experience every time. Last year we participated in IEEE, and just like every other year, it was a very successful exhibition. And last year, I believe it was in around September, when we had 4 stalls at IEEE, and we had a massive exhibit stall over there, and we had a massive turnout as well. We had very relevant consultants coming to us, we had engineers, we had builders from the industry who knew us from the last 10 years, and there were some new clients also who visited us, and it was a very pleasant experience. So it's been a journey of 8 to 9 years, where at some times we've been sponsors of IEEE as well, and it's been very productive for us. Last year we were not sponsors, although we had 4 huge stalls, but this year again we're proud bronze sponsors, and we're hoping that this bronze sponsorship is going to bring us fruitful results like it does every time from IEEE channel. And we're going to highlight some new products this time, including automation materials for home and for hotels as well. And we're bringing a new switches series called Odessa series, which we're
already supplying to some hotel clients in Lahore and other places in Punjab. So we're going to highlight some new series this time and with European finish, so hopefully that's going to create an impact. So this exhibition is starting in the first week of October, as you all might know already. It's starting on 3rd October, and I would love for all of you to join us and be part of this healthy community where there's competition as well. And I would love for all of you to join us in the interactive and informative seminars and all the conferences that we'll be having during the 3 days. And it's going to be a very nice learning experience, and for new players as well and for old players, because there's always room for learning. And these seminars will provide some kind of new information that will come in handy for us in the future, inshallah. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद ज़मान है और मैं A2Z इंजीनियरिंग स्विचगियर प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। और मेरी ये फर्म साइन 1993 में क़ायम हुई थी और बहुत छोटी सी फर्म को लेकर मैं चला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूनिट 1 और यूनिट 2 है जिसे मैं रन कर रहा हूँ। और लो वोल्टेज स्विचगियर हमारी बेसिक प्रोजेक्ट है और लो वोल्टेज के साथ साथ हमने मीडियम वोल्टेज HT पैनल वगैरह भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हमारे क्लाइंट है जिसमें हम मीडियम वोल्टेज पैनल भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो बसवे की फैक्ट्री लगाने का है, जो यूनिट 2 पोर्ट कासिम पे हमारा नया यूनिट तैयार हो चुका है। तो हम इंशाल्लाह वो यूनिट भी अनकरीब लॉन्च कर देंगे। हम इस मरतबा भी स्टॉल पे HT पैनल यानी मीडियम वोल्टेज पैनल रख रहे हैं और मज़ीद चीज़ें रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इस मरतबा भी 3, 4, 5 तारीख को अक्टूबर को एक्सपो में आ रहे हैं। उसमें भी आप लोग आएँ और हमारे स्टॉल को देखें। हमने सिल्वर स्पॉन्सर किया है और इंशाल्लाह हम अच्छी प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। और दूसरे कि आप लोगों के भी कमेंट्स हम लेंगे कि हम कहाँ तक अपनी प्रोडक्ट को देने में कामयाब है या आपकी हम रिक्वायरमेंट मज़ीद और किस तरह से फुलफिल कर सकें। इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स के आइकन प्लेयर नवीद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम के आसिफ साहब। सो नवीद साहब ये बताएं कि किस तरह से कराची बदर एक्सपो, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, इस सारी एफर्ट को आप कैसे देखते? यार पिछले साल के सीज़न के बाद जो दिसंबर में सर्दियों में हुआ था, आप भी साथ थे। उसके बाद ये जो उनसा सेकंड एडिशन आ रहा है, इसका सेकंड सेशन कह लें और सेकंड सीज़न जो उनसा है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और इसमें प्लेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लास्ट जो एडिशन था, जो पहला एडिशन था बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का, आपकी टीम जो है वो अच्छा खेल के एकदम लड़खड़ा गई। ये अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ गेम है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। कुछ टीमें पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं भी खेलती तो लास्ट में फाइनल भी जीत जाती हैं। तो कुछ टीमें ऐसी थी जो पूरा टूर्नामेंट बहुत बुरा खेल रही थी लेकिन लास्ट में सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर गई। तो ये क्रिकेट है, गेम है। ऑब्वियसली एक टीम ने हारना है, एक टीम ने खेलना है। हमारी टीम को मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, हमारी टीम पिछले पूरा टूर्नामेंट सारा अच्छा खेलती आ रही थी। तो क्रिकेट का एक असूल भी है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा गिरना भी होता है। या जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्रिकेट का एक उसूल है कि कहीं गिरते हैं और फिर खड़े हो जाए। जी, तो इस दफ़ा ज़बरदस्त तैयारी के साथ नहीं, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ताला हमारे ऑनर्स भी चेंज हैं और M&P कंपनी के वो जो मुज़म्मिल अतर साहब हैं हमारे,
वो खुद भी क्रिकेटर हैं और जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है और उनकी तरफ से बड़ी करेज मिली है और बड़ी हमें सपोर्ट हासिल है। और इस दफ़ा मतलब क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की सारी अमूज़ को और चीज़ों को समझते हैं, तो लिहाजा उनको समझाने में, उनके साथ काम करने में और उसके साथ टीम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी है। और जिस तरह से पहला एडिशन हुआ, हमने देखा कि उसमें टीम्स भरपूर तैयारी करके आईं, स्पॉन्सर्स भी थे। इस दफ़ा स्पॉन्सर्स की तादाद भी बढ़ गई है। स्पॉन्सर्स के रोल को कैसे देखते हैं? पिछले एडिशन के हिसाब से अगर देखा जाए सारी चीज़ें ही बहुत बेहतर हुई हैं। क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है, लड़कों की तादाद बढ़ी है, बल्कि सब चीज़ें मतलब बदर एक्सपो का किरदार बहुत ज़्यादा हो गया है, टेलीकास्ट बहुत ज़्यादा हो गया। उसके साथ मैं एक बात भूल गया था और मैं वो दोबारा करना चाहूँगा, आप लोग का भी किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत अच्छा हो गया, खासकर आपका और आपके जो उस्ताद गुरु हैं नसीम राजपूत साहब, तो आप भी मुझे डिफरेंट शेप में नज़र आए हैं। आपकी बातें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका प्रोग्राम को होस्ट करना, तो लिहाजा जैसे जैसे बदर एक्सपो की क्रिकेट के हालात बदले हैं, तो आपका भी मैं इसका इनिशिएटिव, बल्कि आपको मतलब बड़े करीज है ये आपकी भी कि आपको कभी आप में भी इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत शुक्रिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और जाहिर है कि जिस तरह से ये आगे चलेगा मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त नसीम राजपूत जो हैं वो रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद। It's 2 a.m. स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है अब्बास ताज़ीम, जो कि डायरेक्टर हैं ASF फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा, ASF फाउंडेशन जो है वो किस तरह से चैरिटी का काम कर रही है? सर, बहुत सारे चैरिटी के काम ASF फाउंडेशन करती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ये एक ज़ीली अदारा है और ये हमने अपने शोहदा के नाम पे ये एक हाउसिंग फाउंडेशन भी बनाई है, हमारी सिक्योरिटी कंपनी भी है। तो हमारे जो DG हैं वो जनरल आबिद लतीफ़, वो हमारे MD भी होते हैं फाउंडेशन के। ज़ुहैर भाई से कहीं उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये टैप बॉल का बताया, तो फिर उनकी इंस्ट्रक्शन पे और हमारे डिप्टी DG हैं ब्रिगेडियर सलाउद्दीन, उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम और हमारे CO हैं कर्नल जमशेद हयात नियाज़ी, हम लोग आए ज़ुहैर भाई के पास। ज़ुहैर भाई को कौन नहीं जानता, IDA के हवाले से हम पहले से वाकिफ़ हैं और इससे बड़ा इवेंट शायद पाकिस्तान में कोई होता भी नहीं। लेकिन जब ये ज़ुहैर भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें नहीं कहा स्पॉन्सर के लिए, हमने रिक्वेस्ट की। ज़ुहैर भाई की डायनामिक पर्सनालिटी है और ये जो आइडिया लेके आए इससे हमें अंदाज़ा है, क्योंकि हम अपने लोअर पेड इनकम जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए, शोधा के बच्चों के लिए मुख्तलिफ चैरिटी प्रोग्राम करते हैं। और ये टैप बॉल का आइडिया जब उन्होंने बताया कि हम किस तरह गली मोहल्लों से लोगों को, बच्चों को लेके हम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और मैं ये अभी देख रहा था कि अमेरिका से भी लाइव लोग जो है वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं और बुला रहे हैं, और वहाँ पे भी देखा जाएगा। और जियो सुपर के लोग और सारी मीडिया टीम मैंने यहाँ देखी तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक हो गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जो देखी
कि जावेद मियांदाद भाई को कौन नहीं जानता, हारून रशीद भाई को कौन नहीं जानता, तौसीफ यहाँ पे अहमद। सादिक मोहम्मद साहब को कौन नहीं जानता, तौसीफ अहमद साहब को कौन नहीं जानता। और अभी मैं देख रहा था हनीफ गौर साहब का नाम तो कौन वाकिफ़ नहीं है। तो ये सारे लोग जब ज़ुहैर भाई के साथ जुड़े तो हमें भी फ़ख्र है कि हम भी ज़ुहैर भाई के साथ जुड़ गए और आइंदा भी हम ज़ुहैर भाई के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। उनके जो भी इवेंट होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, एएसएफ फाउंडेशन उनमें पार्टिसिपेट करेगी, हम स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं यकीनन ये एक अजीब सोच है और ये अलग सोच है और डायनामिक किस्म की जो है ना सोच है। बात सब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने स्टेप फॉरवर्ड किया और इस कॉज को आपने समझा और इसको सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, आप बाकी स्पॉन्सर्स को उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि वो काइंडली पार्टिसिपेट करें, ज़ुहैर भाई से मिलें। बदर एक्सपो जिस तरह से एग्ज़िबिशंस करती है और जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये ऐसा काम है कि जो बहुत आगे जाना है और हम सबको जो इस हैसियत में हैं या जो अदारे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम भी एक फोर्स हैं, लेकिन फोर्स होने के बावजूद जो है ना हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि और बाकी लोगों को, बिज़नेस कम्युनिटी को इसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ इस तरह के लेजेंड जुड़े हुए हैं कि किसी उसकी गुंजाइश ही नहीं रहती, ये सिर्फ उनको देखना ही काफ़ी है। जावेद भाई हैं, हारून भाई हैं, तौसीफ भाई हैं, वो उनके नाम ही काफ़ी हैं। और ज़ुहैर भाई खुद इतने डायनेमिक आदमी हैं और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो सबको इससे जुड़ना चाहिए। इससे क्योंकि सोसाइटी का मामला है, ये सोसाइटी के लोअर क्लास तबका है उसको ऊपर उठाने का मामला है। और मैं जैसे जैसे उसको समझता जा रहा हूँ, ये टैप बॉल का कॉन्सेप्ट, और जैसे जैसे उनकी कोशिशों को मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। और मैं इसको कम्युनिकेट करूँगा क्योंकि हमें भी इसके दो फ़ायदे होंगे। हम एक तो अपनी प्रमोशन कर सकेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे हम लोगों की मदद कर सकेंगे। और इससे हमारी स्पॉन्सरशिप से जो लोग बच्चे, गरीब बच्चे गलियों मोहल्लों से ये जमा करके लाएं, इतने लेजेंड खुद जमा करके लेके आएँ और ये ऊपर आएंगे, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल, और आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पर आप दाद के मुस्तहिक हैं, आपका जज्बा काबिल तहसीन है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद यूनुस खान, जो कि CEO हैं हर जगह .com, और इसके साथ साथ टीम ओनर हैं क्लिफ्टन गाजीज़ के, और आप जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, थैंक यू आसिफ, आप कैसे हैं? आपकी स्माइल बता रही है कि आप लोग इस दफ़ा अपने एजाज़ का दिफा भरपूर तरीके से करेंगे। बिल्कुल आसिफ, पहले तो जैसे कि हमेशा बोलता आया हूँ कि अवेयर नहीं था इस पूरे क्रिकेट सिस्टम से, बट एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो गली मोहल्ले की क्रिकेट थी, टेप बॉल, वो हम लोग, मुझे थोड़ा याद है कि बचपन में एक बार टेप बॉल खेलते थे, बॉल टेनिस बॉल ली, उसके ऊपर टेप चढ़ाई और खेल लिया। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और देखा, नोट खेली बल्कि देखा, तो वो हार्ड बॉल जब यूज़ कर रहे होते थे, तो हम अक्सर ये पूछा करते थे कि टेप बॉल का क्यों नहीं होता। तो वो सिर्फ गली मोहल्ले की क्रिकेट थी। लेकिन जो बदर एक्सपो का, जावेद मियांदाद भाई का, इन सब का जो एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके जैसी क्रिकेट हो रही है, वही बड़े बड़े ग्राउंड, वही लाइट्स और वही प्लेयर्स ऑन लाइव आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। रही बात, बिल्कुल जी, लास्ट टाइम के विनर हम ही थे और इस बारी भी इंशाल्लाह हम ही विनर होंगे। तो आप बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट नहीं था कि टेप बॉल क्रिकेट जो है वो इतना उरूज पाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि एक गली मोहल्ले की क्रिकेट जो एक अच्छा छुपा हुआ टैलेंट था, वो गली मोहल्लों की हद तक था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के, इस आइडिया के बाद वही प्लेयर्स जो कि अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे असद शाह हैं, जो मेरी टीम के कैप्टन भी हैं, अभी लास्ट एक कोई टूर्नामेंट भी हुआ तो वो पूरे पाकिस्तान से प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से असद ने प्ले किया, इतने कम बॉल्स पे पूरे मैच को कवर किया, तो देखें इस तरह के बहुत सारे, अभी और भी बहुत सारे छुपे हुए प्लेयर्स हैं जो इस तरह की लीग से उठकर आ रहे हैं।
और स्पेशली जब ज़ुहैर भाई ने बोला कि हम इसको वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट आइडिया। और हमारे स्पॉन्सर्स को भी इसमें मैं तो ये बोलता हूँ कि इनरोल होना चाहिए और आना चाहिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में हम लोग लेके जाएँ। पिछली दफ़ा जब टीम जीती थी तो प्लेयर्स के लिए कुछ स्पेशल इनामात का ऐलान किया था? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इनामात का ऐलान किया था, ना सिर्फ बदर एक्सपो ने किया था, इवन हम लोगों ने भी किया था, और सब प्लेयर्स को अलग से हम लोगों ने ट्रीट किया था। और स्पेशली मैं तो अभी आते हुए असद को यही बात कर रहा था कि असद, हमने ऑलरेडी एक टीम बना चुकी हुई है, बेस्ट 11-12 ले चुके हुए हैं, अब उन प्लेयर्स को लेकर आओ जो अभी ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। तो एक जो छुपा हुआ टैलेंट इन लिस्ट के अंदर भी जो इमर्जिंग प्लेयर्स की सूरत के अंदर पड़ा हुआ है, उनको भी हम लोग चांस दें। या ये मैं सभी को ये बोलूँगा कि हम ना सिर्फ उन प्लेयर्स को उठाएं जो इमर्जिंग प्लेयर्स वो हैं जो छुपे हुए हैं, अभी उनको हम मौका दें और अपनी टीम्स के अंदर खिलवाएं। बिल्कुल, आप मौका देंगे और गुड लक फॉर द कमिंग एडिशन। मेरे साथ स्टूडियोज में हैं DHA दबंग्स के ऑनर DK दानिश खान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और DHA दबंग्स जो है वो हमेशा से, जो पहला एडिशन हुआ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का, उसमें भी एक बड़ी दबंग आगाज़ किया आपने, दबंग एंट्री दी। इस दफ़ा क्या स्पेशल लेकर आ रहे हैं? ये सारी जो दबंग एंट्रियाँ चीज़ें हो रही हैं माशाल्लाह, ये बदर एक्सपो KPTL की एक एफर्ट अपनी जो एक चल रही है, उसके साथ एक हमारी थोड़ी सी कोशिश है जो कि हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी जैसे आपने देखा, हम मैचेस के अंदर काफ़ी पीछे रहे थे, बट एक कोशिश थी हमारी कि हम कुछ चीज़ों पे काम करें। वो इस दफ़ा कोशिश हमारी जारी और सारी है। टीम में इस टाइम सेलेक्ट कर रही है सारी चीज़ें, दैन इंशाल्लाह देखते हैं होता है क्या। और ये सारी गेम, क्रिकेट जो है ना, बेसिकली ये कौन जीते कौन हारे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और ये मिलके खेलेंगे सारे लोग तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगी, रिस्पॉन्स इसका अच्छा आएगा इंशाल्लाह। दानिश, इस दफ़ा जो आपने मेंटोर लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन यूनुस खान को, तो समझते हैं कि इस दफ़ा फिर उनके आने से एज अ मेंटोर आपकी टीम जो है अच्छा परफॉर्म करेगी? मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि पूरे KPTL के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, कि सबके लिए, मतलब एक सारी टीमों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि एक ऐसे मेंटोर जो कि दुनिया के अंदर एक नेशनल नाम उनका मौजूद है और माशाल्लाह अब तक फिट हैं वो। तो हमने उनको लेके इसीलिए लेके आए यहाँ पे। ज़ुहैर भाई से डिस्कस हुआ, चीज़ें हमारी हुई, हारून भाई से डिस्कस हुआ, सब लोगों से डिस्कस हुआ, जहाज भाई से डिस्कस हुआ कि इनके आने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि यूनुस भाई होंगे वहाँ पे और वो खेलेंगे। यूनुस भाई का वहाँ खड़ा होना ही, उनकी अपीयरेंस ही कितना बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। वो सबको, जो आने वाले यंगस्टर हैं, उनके अंदर एक जज्बा, एक चीज़ क्रिएट होगी और उसी, ये मकसद हमारा सिर्फ वही है, उसको फुलफिल करना, और इंशाल्लाह वो करने के